the PUBG Mobile World Invitational Trophy. سيداتي سادتي، كأس بطولة PUBG Mobile World Invitational مقدم لكم من الخطوط السعودية. حتى الآن هي مليون دولار، وزي ما احنا عارفين أيضا أنه نسبة كبيرة من الجوائز هذه توزعت في اليومين الماضية عن طريقة اللعبة اللي يلعبون فيها كل فريق، لكن بنفس الوقت الشامبيون ما راح يكون أكثر من فريق، الشامبيون راح يكون فريق واحد فقط هو اللي بيقدر يأخذ التروفي في نهاية اليوم. Yes, prepare for our teams to throw absolutely everything they've got into all of these matches today. Plenty of rewards have been claimed so far, but only one team can be crowned champion. So, let's find out who has what it takes and go over to the desk so they can break everything down and get the after-party showdown finals started. Finals started, Fancy. Finals. هل فريق فامباير اي سبورتس بيقدرون انهم يحافظون على مركزهم زي ما شفناهم بالامس؟ هل فريق الفا 7 بيقدر انه يكون في المقدمه بفارق جدا كبير عن باقي الفرق؟ اسئله كثيره ودنا نجاوبها اعزائنا المشاهدين، فخلونا على طول نروح للاستديو التحليلي في بدايه اليوم الاخير معنا في بطوله PUBG موبايل وورلد انفيتيشنال الافتر بارتي شو داون. Thank you so much, gentlemen, from the stage. We are going to be bringing you all the action in our final day of not only the PUBG Mobile World Invitational, but G8 as a whole. We've had 6 weeks of play. We've had 5 different titles, but we saved the best for last. That's why we have the best analysts on the desk. Joining me, I'm Jason Kaplan, joined by Maxman and Kalars there on the very end. No, that's not John Allen. That is indeed Kalars. Sorry. That's right, it's me. Oh, James. I didn't realize. That was a good callback. But gentlemen, I mean, this is the last day of play. We have a couple of different finals, though. We have 2 different ones, right? We have the duo event, which will be concluding with this next match coming up, the first match of the day. And of course, we have our after-party showdown event with the 12 teams all participating in 4v4. At the moment, Alpha 7 leading currently in that section. We had Star Wars Esports leading when it comes to the duos, though it didn't look great yesterday. I can't wait to see what's going to happen today. Yeah, I think there's a lot of changes we can still expect, especially in the main tournament, the main showdown matches that's going to be happening here. But no, especially when it comes to money, a lot of money has already been won by like sort of S2G and especially Alpha 7, right? These teams, I think that if they can get even more today, we might see a team take home 100k in prizes alone. And for me, as you mentioned here before, Jason, it was a bit of a stab in the heart yesterday. Stalwart didn't do too much. I want to see them rise back to the occasion because I think they got 0 points in duos yesterday. They came into yesterday with 30, and they're still at 30, but still leading. So yeah, I was going to say, but they're still in the lead technically, right? Yes, it's close though, It is $15,000 as well for the #1 team, but it will break down between first and fourth of our prize pool of this one. But yeah, Star Wars Esports not having a great time, but one team we can touch on who had a fantastic day yesterday was Vampire Esports, really performing extremely well like they did day 1 of that main event. Yeah, and it's very surprising. I was looking at their stats actually in the back room. Yeah. And when you look at all the teams and times they spent in the blue, like a lot of the teams are like 30 minutes, 1 hour, an hour and 30 minutes potentially. They spent 5 minutes total throughout these last 2 days in the blue zone. They're always in the circle. They're always in a really good spot. Like their macro yesterday was on point. They always get the best position. And of course, in this tournament, if you have a good spot, you get eliminations that come naturally. Yeah, they're good at playing edge and not allowing the blue to really catch up with them. They're able to wide rotate quite happily inside the circle, which actually is quite the skill, considering that most people will dip into that blue, knowing that it's less likely people are going to be able to shoot at them from distance, etc. But yeah, Vampire, very, very precise. Okay, well, if you guys are wondering at home, what are you guys talking about? We don't know. We just joined you for the first time. We saw the stream. We're like, hey, you know what? I'm going to go watch those handsome gentlemen. Let's take a look at the format of what's all been happening the last 2 days. And, of course, today we have 12 teams playing 18 matches and 6 matches per day. But as you do notice on the right-hand side, we're going to be having Vikendi, Karakin, and Livik as well here in the map pool. And those have been extremely exciting. I still want a normal Vikendi game. I haven't got it yet. That's true. It's been 2 coastal finishes. I can't mango right now. One normal Vikendi game will be happy, but we saw some interesting things. I think that it's still really hard to adapt to this amount of maps, right, in this amount of days, and especially seeing how hard the circles have been for the teams. But some teams like Vampire, we talked about it for yesterday specifically, have found a method to the madness, and I think that if you can still crack the code, there's a way to increase your ranking. I'm calling Vikendi right now. It's going to be a South Coast finish, South of Winery. Just no. None of the fields, none of the compounds, none of nothing. But yeah, so it's been cool watching these teams try to adapt to all of the scenarios that they're thrown into. I think that ultimately all of these
very wild circles that we've had so far has tested them even further, because it's enough that you have to play 6 different battlegrounds across 6 matches. Never mind the constant hard shifts, the difficulty that comes with that too. I mean, remember we talked to Sertani yesterday after the event, well, I guess after the final match, right? And he was asked by Barney and Fancy, like, have you guys been preparing for specifically these extra maps coming to the pool? And he said, no, we're just kind of, well, obviously we know Sandhawk, we know Erangel, we know Miramar, we're just focused mostly on those, and we're just kind of playing it as it comes when it comes to the other 3. If you have a good macro, right, in general, I think you can adapt to pretty much every situation that comes your way if you've just got a good game plan. The map doesn't really change too much, right, at the end of the day. If you know the good spots and you know where to go, depending on the circle, no issue. And as we talked already, like 5 minutes in the blue zone, it seems like they are very snappy. When they have a game plan in mind, instant execution, and it's worked out great for them yesterday. 3 chicken dinners out of those matches. Yeah, the best way to exemplify it is the Vikendi rotate that they made. You know, just snap of a finger, 4-man straight to the compound that they wanted, paid off in the end. Okay, well, speaking of paying off, let's take a look at the prize pool for you guys at home and see how the money does break down, because it's a little bit different than maybe what you're used to. Yes, there is $1 million on the line. However, a majority of that money does not come from placements. It is $180,000 in total for that alone. $60K for first place, $55K for second, and you can read the rest of it. But what really stands out is the match rewards. $414,000 you can technically max when, did you know this? $33,000. I couldn't do the math. Thank you very much. I do appreciate your help on that one, yeah. 33,000 per match can be one home. And actually very interesting, looking at the stats, Alpha 7, you know, they've got the potential of getting some money for like the first airdrop and also how many airdrops you get per game. They got 0. Yeah, they got none. They're going for a limbs. They're going for the win. So that's a good strat that so far has worked perfectly for Alpha 7. You put yourself in the theater of combat when it comes to trying to go for those airdrops, right? Yeah. Especially if there was already incentive to get them before anyway, because they're pretty good. Never mind more incentive monetarily to go and try and challenge them. So, yeah, scary. Yeah, we did see, was it S2G? I think it was Kelsey, was one of the last players left alive, and he's like, you know what, I'm just going to get airdrops. It was Vikendi on day 1. Yeah, I think it was day 1, maybe day 2. I think it was Sandhawk where he was swimming around taking them, and then came in on the beach and ruined, I think it was Alpha 7's plans. Yeah, actually, like 2 limbs, I believe, on Alpha 7, so it worked out good. Yeah, so obviously some teams have changed up their strategies depending on how things go, because they realize the money is where it's at. You can see here the best team presentation that happened on day 1. You guys go check that out over on the VODs to see who you thought was the best. But we have the best duo for 15K, fan favorite player for 10K. A lot of money being given out. The question is, there are none of these event awards for talent, which makes me a little bit sad. If there was a best John Allen impression, Colars, you would be in the money. I think I would. You're trying to bait it. You really want it to happen, but I'm saving it for later, you know? Saving it for later. To be fair, Maxman has been working on his blank impression. He has. Maybe we'll see that later on today. I have a great video of it recorded on my phone. Pretty good. On my Sony Xperia 1.4. Not to hype it up too much, but it was pretty good, guys. We'll see if I'll do it later. I'm not sure about that one. Blank is looking at me. I've got the death stare right now, so I don't know. He's smiling. Spooked. Okay. He's got that like smile that lets you know, like the glaring eyes, but he's got a smile. And it's the moment you know an anime protagonist is going to go crazy. It's like, So it's just, I'm in danger right now. Don't worry. You got Clarissa to protect you. You got me to run away. Let's take a look, though, at the points and how it works, though, for all these teams who are participating. Remember, this is going to stand with us not only in the duo event, but also in the team event. 10 points for chicken dinner. And to be fair, we've actually seen this affect teams quite heavily. That's right, especially when it comes to, I would say, in the duo portion, of course, there's less eliminations, and therefore the points gained from our overall standings matter a lot more because there's less eliminations to be able to garner from all of that. And then for teams in the squads tournament, you see, like, for example, Damwon Kia, obviously we know them to be very heavy placement, but realistically, that works better in the previous weekend of PMWI compared to now because there is a bit of a reduced point system. Yeah. And especially with the maps we're seeing, like your Livik, like your Vikendis, right? You've seen a lot of teams go for those full-on crashes 4v4. Yeah. So you've seen a lot more like shotguns. You've seen the DBS, you've seen yourself also the M101. The big shotgun. Like to call out. Yeah. And the big shotgun, yeah. The big shotgun. And like, it is very meta in this format of tournament. So great to see. And it seems like I would love to see if these shotguns are going to remain meta in the future. It would be fun. I actually love how on Livik we were like, oh yeah, we'll see the P90 everywhere. But then it really was the M1014 that has constantly trounced any opportunity to see any of that. I didn't understand. Which weapon? The P90. No. The other one? There's an M? The M1014. Oh, okay. You want me to do the He jingle? He just did the jingle. That's disappointing. I'm not going to do the jingle again. You are see, what you don't realize, Cloris, is you're our puppet. And if we ask you to do impressions, do the thing. That's not true. I am the gesture of jingles and also the best John Allen impression. I am John Allen.
All right? If you at home have a John Allen impression, feel free to post it to us. Please do. Please, I'm taking the desk up. Please do that. Send them all our way. That would be brilliant. We'll do that on social media. I can do that. We'll repost them. We'll give you prizes. I don't know what yet. No, we might not do that bit, but yeah. Be great. And just for John Allen to know, he's not a statue of John Allen. That does that John Allen speaks out of. He pushes a button and it speaks. He's like, I am John Allen. It's me, John Allen. All right, well, let's take a look at the overalls. If you guys have missed out the last 2 days when it comes to the team event, Alpha 7 have been running away with this at 137 points. But to be honest, Vampire Esports getting 3 chicken dinners yesterday alone gets himself within striking distance of taking away that first place prize. I'm a firm believer that we're going to see 100K being breached by Alpha 7 here today. If they just get themselves another win and a few good awards, I think they can make it happen. And if they still hold on to that spot, that's an extra 60K, 160K in this event. That'll be wild. It also feels like they really came in with a game plan, right? I mean, you look at the stats, you're saying that they're not paying attention to airdrops. They have a focused, honed down on plan when it comes to this tournament and how they were going to approach it. And I think it's really cool considering the kind of crazy stipulations that exist here in this tournament. You know, you make a really good point, actually, Cloris. A very good observation. Thank you. Astute observation, some might say. Of course. The fact is, Alpha 7 didn't get to play in the main event, right? They didn't do too well when it came to the regional finals, regional championships, if I can speak. We saw Vivo Keto obviously come through that one. Maybe they came to show Brazil, like, we're still the #1 team. Yeah, we didn't do well in the regionals, but we are the #1 team you have to watch out for. Yeah, you already have a team like every single player can be an extremely efficient fragger, right? And the addition of Mythic in particular was really, really great. So, I mean, I think out of the top 5 MVP contenders, 3 of those are from Alpha 7, and they'll go like almost 20 eliminations. Yeah, that's the problem. Insane. That's the problem for all the other teams, that when we show mid-game the most eliminations graphic, it may as well just be the Alpha 7 graphic. Because it's all those guys. There's nobody else doing anything here. Someone needs to catch up. Okay, well, let's take a look at our schedule really quickly, though, so you guys get an idea of what will be coming up today. Remember, the last 2 days, we did have a show match at the start and at the end of the day. However, we're only having one show match because it is the final one of the event. So at the end of this Sandhawk, we're going to be knowing who's going to be taking home that $15,000. You can see here they played out Sandhawk, they played out Live the last few days. You know, I want to say Stalwart, and to be honest, right, if you're Stalwart and you just kind of survive for some placements into the later stages of the game, you're probably securing yourself a win. Enigma Galaxy were actually pretty close. They didn't get a single win, Enigma Galaxy, but they got a lot of eliminations. Well, speaking of them not being the best way to close, stand Max, out. Yeah. we can actually see the overalls. Let's do it. We can talk about how close they actually are. If I'm not mistaken, I think they're like 2 points behind, 3 points behind. So I wasn't mistaken. Yeah, and that can be closed up in like one single game. So Stalwart, they can go the very passive approach, but as we already talked about, placement points, are they going to be enough? If you have a team fragging out, that could also be the difference maker. So it's anyone's game for the top. But how much of yesterday was an anomaly for Stalwart? It was, in our minds, I think, an extreme anomaly to see Stalwart get nothing off of yesterday. So I'm expecting a reinvigorated Stalwart coming into today, even if it is just for the duos, never mind the squads that's coming up. But they should get some points here and try and push themselves to the victory for it all. We're going on to Sandhawk again, though. So, Scout? You might want to check those bushes again. You're a fan of the foliage, I see. You want to double-check everything if you're Stalwart this time. But yeah, Top Light is still the top fragger of those duos. He's got, like, what, 11 eliminations out of the 14 of his team. So there's a big chance that they can still stand on top. But there's a chance that they might fall if this game doesn't go their way. Agreed.
Okay, well, we can see here everything has been set up perfectly. Quite a few teams which could take away that first place position on Stalwart. We are living in a world right now, in that timeline, where Alpha 7 technically could win the duos match and the team event as well. I mean, the cool thing about the duos tournament here for even the final game is that small sample size of games, and actually even teams with like 18 points or something like that right now, kind of languishing towards the bottom of the table, could still actually push up and take this if they have a decent game here, a game size for this one. So there's still a lot to play for the duos. Yeah, I think that though a lot of teams, talking with some of the coaches in general, like a lot of teams are not aiming for placement here. They're just trying to get as many match rewards. So, I mean, of course, one comes with the other, but if your goal is not to be in first place, then you might have a different approach to this final day. Okay, ladies and gentlemen, you can see the players are starting to load in onto Sandhawk, but I have to remind you about they're all playing with these fantastic devices. The Sony Xperia 1.4, which is created in collaboration with professional esports players, and Sony's Xperia is the official smartphone partner here of PUBG Mobile. Also need to give a big shout out here to Savvy Gaming Group again. 6 weeks of events, 5 different titles. Couldn't be done without these guys. And for you guys at home, we want to hear your thoughts. Give us fill out a survey here, which actually you can check out over on the Tencent social media. There's also links in chat. Let us know your feedback about the event, about the format, about the teams, maybe about who does the best John Allen impression. Well, I can tell you this. One man who I know does a fantastic John Allen impression is going to be none other than John Allen and Blank here to bring you the first match of the day. That's right. It's me, John Allen. I thought, yeah, that's crazy. I thought I was casting with Kalaris for a second there because you do such a good impression of Kalaris doing an impression of John Allen being John Allen. That's right. Yeah. It's a skill. It's quite meta, but yeah, we make it work. Exactly. Remember, send in your John Allen impressions from home. Let us know who can do the best John Allen impression. Yes, you might not be able to get as the deep of the tones as John Allen, but you can certainly try to imitate the Kalaris. No, there's definitely no way that they can really get that low. I don't think that range is accessible. All right, Kratos, that's enough of that. Boy. This is our final match of the duo show match, so whoever wins this will be going home with a grand prize of $8,000, $4,000 for second, $2,000 for third, and $1,000 for that fourth place. So there's a lot up for grabs here in this final show match of the After Party Showdown. So make sure you're paying attention. We have a couple of teams at the top there. Nigma Galaxy sat with 20, I think it was R8 with 27 points. Or Nigma Galaxy, I think Nigma Galaxy with 27 points. You have R8 with 26 and Stalwart sat right at the top with 30 points. Alpha 7 though, 23 points. Definitely have a shoe-in at the end of this show match showdown. And I think, you know, if they get that chicken dinner and Stalwart goes out early, who knows what could happen. You know what DBS stands for this time? The Big Showdown, because we've got all of these teams going for the top spot. As we drop north to south, now can the end of the plane path. Early drop for Damwon Kia on the north side, spreading out across the way. Looks like could be a little bit of argy-bargy in paradise. Absolutely. S2G, R8 have been fighting over this spot for a long time. It was R8 who came on top the first time. And obviously with R8, you see there, they're in third place with 26 points. They have a chance to overtake Stalwart, but first they have to contend with S2G. So see if they can get that first team elimination of the match. Let's see what they can do. SK-Ton and Prestige, see what they can get done here. Also a little bit of a hot drop in Painan. Falcons on the south coast. Deadeye's guys on the northeast side of the river. In Painan, at the moment, it's S2G getting the better end of the deal here. Silas able to get the flush on SK-Ton, leaving Prestige high and dry and alone. All on his lonesome. You know, this actually opens things up just a touch here. 7C sat in fifth place with 19 points. Yes, it's a little bit difficult to get further than 26 on R8, but if you get the right amount of eliminations, get a good placing in this match, and if Scout can bring out some of that Scout magic towards the game where he became the Snake, he was one with the Snake, perhaps he might just be able to get enough points for the team to sit themselves with a prize. So the highest scoring game so far that we've seen has been an 18-point game from both Stalwart and R8 in the second and fourth rounds, respectively. And so they're going to be looking at that as really a ceiling. At the moment, you were talking about 7C, they're sat 11 points behind Stalwart in 30 points in first place.
So it is achievable, right? But it is absolutely a lot to play for, and you need to be fragging out your mind. Yeah, it is crazy right now because, yes, we played 4 matches, but it's still very doable for some of these teams to overtake. And if you want to make sure that you find out exactly who wins that grand prize at the end of this show match, because there will be no more today, it's all going to be that after-party showdown, those match rewards, and who can take home the most money, as well as take home that first-place prize just in terms of points alone. Make sure you are watching together with us off the PMWI over in the in-game esports center with your friends to win yourself some PMWI special sets, which are still available. And if you want to look fresh while you're playing, of course, there are the gun skins and the outfits for the PMWI. PMWI packages are on sale for a limited time, and you can also win PMWI treasure crates if you play PUBG Mobile during PMWI. I know I've been playing some PUBG Mobile during PMWI as if 8 games a day was not enough. I go home and I'm dropping right in our angle as well. So I keep it going, and that's what it's all about. But here, right now, we are on Sandhawk, the jungle. Right now, a lot of these teams feeling the humidity as they start to sweat because there is a lot of points still up for grabs. You mentioned this before. 18-point total has been a game that's been achievable, which would sit like practically down towards down 1 game with 17 points above Stalwart should they go out early. So there are a lot of things that have to happen before teams towards the bottom can ladder up, but there's still a chance for these guys. Well, I mean, 18 points would see all the way down to 10th place get over Stalwart, right? Yeah. If they can get 18 more points than Stalwart in this game. Unfortunately for Rad and Bicatron, not so happy in their current scenario, but there's still time. Yeah. And there's still points in the lobby. Exactly, John. There's still a chance to set the record here. Ooh. Additional over the 8 eliminations. So 8 eliminations is already tough as it is. Remember, we are dropping into this match with only 24 players, and already one of them have gone down from R8. We're trying to stick this one out, and why wouldn't you if you're R8? Prestige sends down towards the southwest, past Paradise Resort, to a compound alongside the road just to the east side of Boot Camp. He wants to ensure his survival because you go lower than 4th place, John, you are taking home absolutely nil. So for R8, it's all about survival at this point in time. So we'll check back in with them should they end up going down or should they survive towards the end of the game. I'm liking the little picture-in-picture there of both of those perspectives as we swap away from the player from S2G. Keeping track of this fight, though. Bicatron close by, I think. Neither team really making the push into that compound, and in fact, you can see S2G moving kind of away from it in this scenario. Deadeye's guys and Team Falcons haven't jousted too much either. At the moment, no one going down, but that might be about to change as Yusuf spots the player up the top, Powerful, pushes in as well. Joker pops the nade, has the pin going. Powerful has one of his own, looks to put it over the eaves. Nicely placed, but a little too long. One sent back his way, and again, just too far. Yusuf and Powerful looking to heal. Dipping in and out at the moment as the pitter-patter of footsteps on the roof side just alerts Team Falcons to the presence of the enemy team. Falcons currently landed on the ground, whereas it looks like the Deadeye's guys are taking to those rooftops, though. On top did drop down, so did Joker. So now playing on even footing at the moment. Dabig shotgun in hand, as well as a UMP, highly accurate when it comes to that close range. So very, very nice here where you want to hit that jiggle peak, spam a couple of shots off and then straight back into cover again. On top's even got the M4 on board as well, so a very nice loadout for him. Powerful crawling around the sidelines here, looking for that off angle. GBZ in hand, but that's a bouncer. What a backboard dunk there coming from on top across the way. Yusuf goes down. Falcons crawling back, looking to get this res. Remember that off-angle reposition I was talking about? That's now going to leave Powerful high and dry, isolated. This guy paid attention to the basketball explainer yesterday. He knows exactly what he's doing with those lob shots. Now just one remaining, and Powerful tries to jump it around the side, staying as stealthy as possible here. UMP back into full ammo, as well as with the stims fully on board. Yusuf still not down yet, so there is a chance. Nice shots here, doesn't take a lick of damage. Now on top has to send away, try to isolate this 1v1. Causes the first aid to be stopped, to be slowed in for the challenge, and Falcons fall. Deadeye's guys eliminate them.
Falcons going out with 13 points there, so no money accrued for them in the duo show matches during the after-party showdown, but there is still a lot more action to go here, ladies and gentlemen. We still have to find out exactly who our victor is and who will be taking home that $8,000 to add to their prize pool at the end of all this. That's a volley and a half. A lot of noise being made by Stalwart. Action popping off the ka-chunk. And Prestige cowering in the corner. You know, he's going to have to pull out something special here. So close to the top team from the duos. I mean, top and action. These guys, you know, they go hand in hand. They are a pair, honestly. Two peas in a pod. They make some absolutely wonderful stuff happen during some of their matches. I think the synergy between these guys, you know, that's already hit plus 100 in game. You know that. Alpha 7 taking on Bigatron. In the meantime, on the hillside, already found one knock early. Clean sweep across the hillside. S2G didn't have a shout in that fight, but now they're across the way. They should have heard that go on. 2 elimination points for Alpha 7. Good news for their push to the top. Still sitting in 4th place, though. $1,000. But like you say, 2 eliminations, 2 points found. That sends them just a little bit closer to R8. Who currently, like you said, cowering in the corner. Not accruing any points so far. So Alpha 7 taking this one slow and steady. Like the Death said, it could really be Alpha 7 going home with it all in the after-party showdown. Not only in the main event, but also in the duo show matches. DBS and M4 with a suppressor on the back of Prestige. So potential to be a little sneaky snake. What? I'm not sure. Actions. Fight us! He's just shooting. He's just going. Oh, he wants to alert the enemies to them. He's even taking shots over towards his teammate there. You know, practicing his aim. Why not? They've got a fairly central position too. And they know that if they want to hold on to this top spot, you know, it's not a case of just playing slow and steady. Really good off angle from Revo there, and Carrillo set that initial fight up perfectly. Rad with position towards Stalwart. I mean, there's plenty of noise being made by Stalwart, our top duo currently in the lobby. So people looking their way, and you do need to be worried about your back. That's exactly what Muanir is doing. The only thing that does concern me about the death pop going on from Stalwart at the moment is the amount of ammo that they're actually expending. I wonder how much they still have left in the tank. Do you think Action's swapping to just weapons he's finding on the floor? I think so. It does seem that way. He did have a Thompson before, and now he's back to the M4 and UMP. Again, that's still 45 that he's burning through. A little bit spooky. Well, sorry, it was just a bit spooky. Next circle, just about to come through. Mainland pretty much decided on at this stage as we do wait for that one to tick through. There's the leaderboard on the left-hand side of your screens right now. You can see not too much shuffling going on, but that gap between Alpha 7 and R8 has closed by 2 points. Only 1 point in it now. That's a fairly hard shift and actually cuts out about 25% of the circle. Yeah, with the river actually moving through there, it's going to be a little bit tough. Look, there's no teams over on that Northwest Island. We cut that out a long, long time ago. It wasn't likely to head up there, so we ain't got no swimmers this match, which is the good thing. No one getting too wet during this one. And honestly, you wouldn't want to. I mean, you're not going to dry off for a little while. It's only going to make things worse for you. No, come on, guys. Don't go over the heel straight. I want to see some action. Ooh. Shots up the top of the hill. Looks like down one Kia have found their stride against Rad. And a clean sweep for the Korean squad. The duo, Forrest and Fabian, able to take 2. Nice stuff found there. 2 eliminations. We said this before. Down one gaming, you know, they're still not out of that prize pool bracket just yet. There's still opportunity for them. That takes them up to 19 points now. Tied with 7C. Oh, Sarang spots top. And they see each other. Barrels on the mark. It's top half HP. Popping the bandages. A lot of meds in the back. Smart to use the bandages now. Keep those 4 first aids for later. Absolutely. Just stim up a little bit. Make it happen. Sarang, though, tapping away over towards Stalwart. Those are the fingertips of giants here with the M4 slamming some bullets into you.
feels just a little bit more hefty than a tap. Scout watching behind himself. You know, he is the scout. He is the snake, so he's very aware that there could be more snakes in the circle. You know, he understands the importance of that. The serpent from the Yes. Indian region proved himself against Stalwart. That's right. Game number 1. Bared his fangs against them. They weren't ready for it. Plenty venomous. Hamodi into the circle. Lord a little bit lower. Further out as well. Not quite even across the river. The circles won't quite tick hard enough to take Lord down, I don't imagine. You can see they are going to have to keep going because that blue zone will not relent. Got 6 painkillers, 2 painkillers, 6 energy drinks, 16 first aids. You know exactly what's happening here. I don't think I have to spell it out for you guys at home. I'm sure you're smart enough. I wonder what Lord has on board. I wonder if Lord has a different set of meds going through or trying to loot up at the back. We'll have to wait and see. Stalwart still playing that Crossroads compound prestige, hiding this whole time. Yeah, with the DBS as well, so he's ready for anyone that tries to rock up on his shack. He'll defend it to his last breath. And there will be a fiery breath coming out the front of that DBS. S2G, though, their initial skirmish with R8, which they did win out, in fact, and it seems like they're getting better and better at that as the days go on. They took some humility, let's say, yesterday, as R8 just immediately squad wiped them. With Bigatron and Rod both going down, that's the bottom 2 spots decided. With everybody else still with a shout into this one. Next circle coming on through. Southside Enigma Galaxy have made it into the circle, so they will be playing a little bit more. It centers up towards Stalwart, so it is going to be a challenge. It is going to be on the teams looking to take that top spot to take the initiative here, Blank. Marshy down towards the southwest, so Enigma Galaxy not likely to make too many bold moves as of yet. And right in front of them, there is a ridgeline, so they're not going to be spotted by any of these teams off towards that north side just yet, and they can get some scouting done. Deadeye's guys, though, making a long wrap around boot camp on the coastal side. They want to stay out of any kind of action for as long as possible, but it might just mean that they end up spotting the guys from Enigma Galaxy. Hamodi under pressure now across the water, makes it to a tree. Can he get down? Just in time, but the buggy might not be so lucky. If it goes up, it might be able to take the damage needed to get that knock, but Hamodi evacuates the position, gets to the shoreline there, and should be able to heal here. He's got plenty of meds on board, so, you know, not likely he's going to be too unhappy about that, but he has dropped them all now down to Lord. Yeah, this guy has been typically doing the healing for the rest of the team. Most of the time when they play the squad matches, the Lord's going to be out there for a while. And honestly, I don't blame them. Enigma Galaxy, 27 points. I think it is a bit of a stale thing to do in duos, but you want to make sure you can try and secure those points towards the top, because you know that Stalwart makes a fumble and you get a second place there with those 6 points. That's going to send you above Stalwart. As we head our way into 9 teams remaining, and Stalwart still having a very, very strong position in the circle. I think it's unlikely that they're going to go down early. 7C right next to Hamodi, who did manage to get some of that ground cover. Stalwart can't quite see Hamodi's position, but I tell you, probably can if they do turn their attention that way, is Vampire Esports. You can see Fluketh up the top there, with potential oversight onto Hamodi's position, but the rock he's at right now should obscure that vision. There's a couple of trees as well with their foliage providing sanctuary. Yeah, this is probably one of the more fun endings here on Sandhawk, honestly, because there is so many compounds available, so many little bits of cover involving just hard cover as well in terms of the rocks and these wider trees as well, so you can play in this area. Still plenty of opportunity for a bit of snaking, but most teams would like to play more of this long-range gameplay with the M4 in hand, 6X, 3Xs, that type of thing. Lord, though, नहीं बोलूंगा मेरे को कंगन जी से मिलना है, कंगन जी से मिलना है। जब केतन बोलेगा कि आओ यार दिल्ली
कि आओ यार दिल्ली में हो, आओ मिलते हैं, कंगन जी को भी लेकर आऊंगा, तब जाएंगे ना यार, समझ रहे हो ना? ऐसे ही वर्क करता है ना। Heads up about where they crash into, then making that move. एस क्लास के लिए हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ तो पूरा ब्लॉग विद पूरा ऐड देखना, ऐड भी स्किप मत करना। Right up to the top here, 7C. They have a chance here in this game to jump up towards the money. Sarang also gone. But with Scout going down, it's only Sarang and low HP means that स्प्रे तो अच्छा दिया तोप, into the back but pocket. sad. That's another point for Stalwart. So now with 2 eliminations, 32 points now. It's getting a little bit harder to remove them from this game. And they're right on the edge. S2G currently hold a nice position. प्यार तो है, फॉर लव नो एक्सक्यूज। भाई एक सोते हुए इंसान को कंधा दिया है, With Lord healing out, ये हुआ है। taking the fight forwards, but will get knocked by the play zone. Will go down here. हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं थक गया, मैंने पूरा वो पार्ट नहीं रिकॉर्ड करा, जब वो तुम उस बंदे की तरफ तुम्हारा सर गिर रहा था तो वो धक्का देके तुम्हें इधर कर रहा था। भाई ये सारे लोग किधर जा रहे हैं? मेरी वॉचिंग एकदम से 700 कैसे गिर गई? किधर जा रहे हो भाई? हेलो किधर भाई? जाते ही चले जा रहे हो? अरे 1000 गिर गई। अरे 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 ऑब्वियसली मामा यार, थोड़ा चिल विल करने गए। Not quite. Smoke for top to get him a little bit further forwards in these compounds, but I don't think ये they क्या know that this बकचोदी player है is यार? here. अरे 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 1300 pressure from Dead Eyes guys. In come the push down the hill Mama for के the यहाँ से आया squad. वो, Nade अच्छा। could be good here for Prestige. Top Mama के seems लोगों to have से one आया cooking. वो। It's cooked out the window, but not going to get the damage necessary. Prestige wants the spray Vlog instead, but the देखना है। Nade finds it. एकदम से 8 चलेगा। eliminated. That's the third place team in Alpha 7. चलो Looking ठीक good है। to push up. Nice Up है, to ST 5 fast eliminations निकाल now, ली। 35 total. but बहुत it's बढ़िया, मारो Revo ST को, with हरामजादे। unbelievable spray मारो सालों को। transfer Nice there, RB2, which bro. will take Stalwart out of the game, and this might just be the chance for Alpha 7 now, looking for those 10 points. Down 1 gaming. बहुत बढ़िया Drop the shot there. Forrest stays alive. Down 1 Kia. Will भाई be Alpha 7 भाई carrying on for now. भाई 3 eliminations. 3 6 days long eliminations now for consistency Alpha run 7. भाई। 4 teams remain. Lord from Enigma Galaxy still alive as well, but with the elimination Trophy difference, unboxing हो रही है। that's कहाँ going to हो be रही real है? close cut. 4 points Gaming started House this game between Enigma Galaxy and Alpha 7. गेमिंग हाउस में हो तो रही है, पर कोई चैनल वैनल पे हो रही है क्या? Alpha 7 will be मामा ब्लॉग ahead. देखो, अभी नहीं देख सकती मैं guys। 6 eliminations as well there, taking them to 28. मतलब व्यूज मत उठाने देना मेरे को, है ना? मार दो मेरी A चैट। win and a couple more elimination points will see them set steady, and this is वही the तो कह difference रही हूँ, आप between them reviews and ले लो, Enigma उसके बाद Galaxy. They देखेंगे जब came views into this खत्म हो match जाए। not looking to secure a second. They अच्छा, wanted to ठीक है। take it हम all जाए home मतलब। with the first place, and now looking to deal with S2G. Nice Molotovs will prevent the pushback from S2G for the time being. Can Lord get a backstab off here? I don't think he has the time to pop these shots until the first aid supplies run low. Had plenty before, 11 still going. So, still has quite a bit of time here to outlast Damwon Kia, to try and outlast the other 2 teams with 2 players. Forrest, though, a lot of bullets in the back pocket there without needing a reload. So, अरे go for A7 an ये भी extended जीत जाएगी fight क्या all on अभी? his lonesome. 3 eliminations Normal for game them. में They can तो get to a kill second कर ही place now. रही They're है। going to be able to bump up their money somewhat. 10:35 मत करो, वो दिन करना जब मैं देखूंगी। S2G with their last shout मत देखना वो into वाला this part। lobby as well. क्यों? Not going to be अब तो able to jump देखूंगी। up too far, but ऐसा क्या है रे? potential end of the money. Things go well for them. Oh, behind the same rock, Silas unleashes a nade, but it doesn't quite get the damage they were looking for. Revo breaks out wide, Bro, straight yeah. down, Don't get across the sucked. gap. Nice No shot. trade-off yet, but in comes Forrest. He shots down Silas on the roof. That's stolen away by Carrillo on the point. Revo's still down though, and it's a 1v1v1 in the circle. Lord is still out there. Lord could still do something. This is rough, but he goes down. Doesn't even try to attempt it. नहीं लगा। Carrillo all by himself now. Against the DBS, Kelsey sends out wide, gets the flush, but the spray is good for Carrillo. Whop and swap, goes for the spray with the M4, but the shotgun is good. Kelsey takes Oh, the bhai. 7. Have they done enough? We'll have to wait and see. But Forrest is still there. Second place for Alpha 7, and I think they were just pipped to the post. The nade from Forrest, and down 1 Kia earn a bunch of points on the game Bhai, as kya well. pela hai, 14 to jump up the tables. Let's go. But is it enough, though? That's the real question. Did they make it into the top 4? We'll have to find out shortly, but what an attempt from Alpha 7. Just too little too late, with Kelsey hitting an insane DBS, headshot onto bro. Revo as he made the cross. Smart moves DBS overall lads. from Alpha 7, but they just weren't able to eke out at the end. Still, second 10:35, place, 10:35 चल रहा है $4,000 मेरे in the chat bag, पे, but it मामा। will be Stalwart with their deadly duo. With top and ऐसा क्या action. मत चलने दो। Home, the $8,000 here in our show match. Wow, wow, wow. And Alpha 7, to be fair,
will still खाली get 10:30 plenty पे of money देखने बोल on, रहे on, बस और on the कुछ नहीं game on this duo मत देखो performance. सब भड़काते हैं Power of the DBS around the side of the rock. Yeah. It shut down one of the देख लो, नहीं strongest नहीं देख players in सकते our हो। lobby. It was really rough there, but we're going to head over to the match rankings presented to you by अकेले में देख STC. लेना। अकेले में नहीं As मैं Jason natural reaction Kaplan. did। Stop. Wait, what? We're not even doing the match results. We're doing the overall results. All right.在西北部养精蓄锐的 TC 现在的 दो बैक टू बैक चिकन मार दिया फिर टीजेपी ने 是养精蓄锐的 TC 现在的 दो बैक टू बैक 投 चिकन 入 मार 方 दिया 面 फिर टीजेपी ने 是完完全全碾压掉了佟家宝，而且这场比赛对于 TC 来说实在是忍了很久很久。 DBS 可能在 नहीं 信号 होती 天 है ना 空 भाई 之外， वो तो मेरे से नहीं 一直 होती 在 तुम्हारी बातें क्यों कर रहे 等着一个进圈的机会，等着圈 मेरे 形 से भी 给 नहीं 到 होती 他们 भाई 一个切角。 DBS 没错 करें शॉट गन ही 佟家 करेंगे 宝 होती 是有 DBS 地 से 形 दूर 的 की 优 बात 势，但是 कोई 没 भी 有 शॉट 任 गन 何 मेरे से 投 करेंगे 掷物，只有一颗手雷和一颗火，这可能是面对 TC 近战的一些伏笔。但现在佟家宝的选手也不太敢 भाई 站起 गेम 来， सेंस 因为 कैसे 刚刚他 इम्प्रूव 看 करे 到了 बता 经 दो 典这里 एक्सपीरियंस से आता TC है 的 वो 选手两个人顶过来， गेम सेंस 而 गेम में 远点的释怀 एक्सपीरियंस 有一些危险，他 ज्यादा 紧紧地 खेलोगे 贴着篮白的 मतलब 圈 ज्यादा 边。 खेलोगे टाइम बता रहा 现在 नहीं 一人站一边 ऐसा 嘛，只要没有枪声，就已 ऐसा 经 बता रहा 说 हूँ 明了 भाई 现在是4 साल भर 2 साल 决 ऐसा 赛圈需要不断的移动，这对于 या 失败 दूसरे 来 ऐसे 讲，对于 टूर्नामेंट TC देख 来 देख 讲有 के 一些太 सीखने का 残酷了。 इम्प्लीमेंट करने का गेम में 这个 वहाँ 关 से 键的 गेम 过点 सेंस 是没有能够把它捕捉到呀。 गेम सेंस एक्सपीरियंस से आता है बट 墨竹好像哦，墨竹通知了676，4打3。 ऐसा टूर्नामेंट देखो इनके जो स्टैट्स है इनका जो प्ले स्टाइल है वो गेम में अपने इम्प्लीमेंट करो ऐसा भी गेम सेंस इम्प्रूव होता है तो होगे तो साथ में जाएंगे जनकपुरी विजिट किया है कभी यस ब्रदर क्या है ना TC 3打4佟家宝。 जहांगीरपुरा बोल रहे हो 阿 जनकपुरी 兰 कहाँ 的 से 一 पड़ 颗手雷 गया 是率先放到 अलग ही 676，那么这样一来，人数 जहांगीरपुरा ने 回到了一个3打3。 जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे वो था फ्लैग था जो हम लोगों ने गले में डाला हुआ था वो था फ्लैग था जो हम लोगों ने गले में डाला हुआ था तो ऑब्वियसली जितने दिल से हम लोगों ने वो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया था ऐसा नहीं था कि मर्सी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था उसके पैर के नीचे फ्लैग का छोटा सा पार्ट आ गया था क्लॉथ का मैंने प्राइवेट कर दिया है वो वाले पार्ट को हटाने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को तो ड्रामा बनाना है तो ड्रामा बनाएंगे वो तो जब वो प्रोसेस हो जाएगा तब मैं उसको फिर पब्लिक कर दूंगा ऑब्वियसली व्यूज़ में मेजर ड्रॉप डाउन होगा क्योंकि शुरुआत में रिकमेंड होता है और वो प्राइवेट होगा तो फिर पूरा फक होगा बट कांट डू मच मैं तो नहीं चाहूँगा कि मर्सी के ऊपर लोग 2 कौड़ी के इल्ज़ाम लगाएं व्यूज़ आए बाढ़ में आई कांट डू मच अबाउट इट बट मैं फर्जी का तो इल्ज़ाम मर्सी के ऊपर तो नहीं लूँगा इसलिए मैंने वो कर दिया है वो वाले पार्ट को कट कर दिया है और प्राइवेट कर दिया है अभी के लिए जब पूरा वो प्रोसेस हो जाएगा एडिटर के वो यूट्यूब एडिटर में तब फिर मैं उसको पब्लिक कर दूंगा कोई -50 नहीं करेगा चैट में सीरियस बात है इट्स नॉट फॉर द 10:35 11:35 जो भी था ये डिफरेंट चीज़ है इट वाज इन द स्टार्टिंग जब याद है हम लोग इंडिपेंडेंस डे का फ्लैग होस्टिंग के बाद अंदर आए थे एक्चुअली वही बात है Okay, let's see our champion stats here. वो वाला पार्ट वहीं रहेगा गाइस देख लेना कृतिका वाला बस मैंने एक पोर्शन है एक वो पोर्शन है जहाँ पे वो हो गया था तो इस वजह से मैंने वो हटा दिया है ऑब्वियसली आई डोंट वांट एनी हीट ऑन मैं मर्सी एफ के वो एक बार गर्म पानी लेके आती हूँ ठीक है ठीक है Of course, like that average is going to be extremely high. Yeah, a great day, then a dog water day, then an okay end. आई होप मैंने सही पार्ट को काटा है और ऐसा ना हो कि वही पार्ट के अलावा पूरा व्लॉग काट दूं मैं बस 10:35 वो वाला रहेगा गाइस बट इट इज़ अ सीरियस इशू मैंने चैट में देखा चैट में लोगों ने बोला मुझे कि उससे मेरे को ट्रबल हो सकता है एंड दैट थैंक यू वो दैट वाज अ जेन्युइन कंसर्न तुम लोगों ने दिखाया बट मेरे को पता नहीं मैंने इंस्टेंट वो मार दिया प्राइवेट मार दिया मैं कमेंट सेक्शन भी देख नहीं पा रहा अभी कि कमेंट सेक्शन क्या था कृतिका कैसे देख पाते हैं प्राइवेट वीडियो पे आई डोंट नो मैंने कभी नहीं देखा चैनल पे तो मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बढ़िया
सब बताओ। सब बढ़िया ब्रो। उसी के बारे में था मामा कमेंट भी। तुमने देखा था क्या? हाँ हाँ जस्ट अभी देख ही रही थी। गंदा गंदा था क्या? ये चैट ने भर क्यों दिया मेरे को? क्यों क्या हो गया? माम्बा कॉलिंग, माम्बा कॉलिंग, माम्बा कॉलिंग। अरे पापा ने बहुत याद किया अभी। याद कर रहे थे मामा भाई, ये यकीन तो नहीं हो रहा भाई प्राइवेट क्यों मारा? प्राइवेट इसलिए मारा यार क्योंकि जब हम YouTube के एडिटर से कुछ एडिट करते हैं ना वीडियो, तो वो प्रोसेस होने में बहुत टाइम लेता है, 2-3 घंटा। एंड उस 2-3 घंटे में तो समझ रहे हो ना कितनी तेज व्यूज जनरेट होते हैं व्लॉग पे। तो 2 लाख व्यूज तो करीब करीब मेरे जनरेट हो जाते हैं, उतने में तो मर्सी को फोड़ दिया जाता है, इसलिए मैंने वो कर दिया प्राइवेट। अच्छा किया मामा, नाइस। Vampire Esports, as we saw in the main event last week, day 1 fantastic. अननोन भी हो गया था वो, अबे जानबूझ के नहीं किया। Day 2 non-existent. क्या बोल रहे I'm हैं? worried that because they had क्या हो गया? कुछ उल्टा सीधा हो गया क्या? अबे ऐसा हुआ था कि व्लॉग में एक पार्ट में जो है, जब हम लोग फ्लैग होइस्टिंग करके आए थे ना, तो सब लोग बैठे हुए थे टीवी के सामने वाले उसमें सोफा पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने अपने सब लोगों ने मैंने तो लौटा दिया था रंजीत भाई को कि इसको तय करके जो है घड़ी करके इन सबको रख दो, फ्लैग्स को जो हम लोगों ने गले पे पहने हुए थे। और एक रह गया था, एक दो उनमें से एक पे जो है मर्सी बैठा हुआ था सोफे पे, मर्सी का पैर का एक पोर्शन उस फ्लैग के एक पोर्शन पे टच हो रहा था। तो उस वो व्लॉग में था, उस पे मर्सी को शायद तोड़ दिया होगा लोगों ने, तो इसलिए मेरे को प्राइवेट करना पड़ा व्लॉग अभी। आपने उसी समय ट्रिम क्यों नहीं कर दिया? हो जाएगा ना ट्रिम तुरंत। 10 कहाँ मिनट के पे? वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में कुछ ट्रिम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लगता है रे काशवी, जब 15-20 प्रोसेस मिनट होता है लगते ना। हैं। नहीं नहीं, प्रोसेस जब होता है ना तब हाँ। मतलब मेरे कुछ कुछ व्लॉग्स 15-15 मिनट के मैंने कोई एक पोर्शन जो है ट्रिम किया है, तो उसको प्रोसेसिंग में कभी 2 घंटा भी लगा है, कभी कभी तो 8-8 घंटे भी लग गए यूट्यूब में प्रोसेस होने में। हाँ, कभी-कभी 8 घंटे स्ट्रीम के टाइम 8 स्ट्रीम ना ना, व्लॉग का बता रहा हूँ मैं। ओह वाओ। हाँ, व्लॉग भी मेरे 8-8 घंटे कभी कभी प्रोसेस होने में लग गए हैं, क्योंकि अगर 8 घंटे लगे तो रीच की तो हाँ MC बीजे हो जाती है पूरी। अरे लेकिन फर्क नहीं पड़ता अरे बे। कोई नहीं, देख लेंगे लोग यार, एक स्टोरी डाल देना बस। 10:35 कंसर्न नहीं है गाइस, 10:35 कट नहीं होगा। But उसका 10:35 will be called another time now. 10:35 अब 10:32 हो जाएगा, 10:31 कुछ हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले का 3-4 सेकंड काट दिए मैंने। मैं बता दिया, अब मत पूछना यार, क्योंकि जो बात मैं चाहता नहीं हूँ फैले वो फैल जाएगी ऐसा करके। चलो नेक्स्ट गेम अबाउट अस। लेट्स गो। ये क्या कर रहे हैं? फीफी कम ऑन, वेलकम टू द ऑरेंज आर्मी। कौन आया ऑरेंज आर्मी में? समझ ही नहीं आता मैं। ओए हाय ओमेगा। हेलो भाई। Oh, it's perfect. It's perfect. We're ready for this one. It's a wrangle to start things off strong and सोमराज को क्यों हेट दे रहे हो? हाउ रैंडम यार, प्लीज यार कुछ कर लो लाइफ में। हाँ ले जाओ भाई कृष्णा, ये रैंडम था, कुछ हुआ था इसलिए। ये भी खाता हूँ भाई ऑब्वियसली। ओह काफी लोग दे रहे हैं। अब रैंडम नहीं होगा। Sorry यार, controversy. And then it got sorted also, तो बोल दो कि chill है। I think. Nothing really too tricky for a lot of teams. Yeah, this is like a very nice playing path for a lot of different भाई आज तो मारो। towards the eastern side, let's say Milta Power, Lipovka, slightly more difficult. है भाई? There's plenty of roads here where you can हाँ। make some of the भाई beautiful ऐसे मत forms, रहो यार अभी। especially even Georgia Pole, you know, if you head up Random, to sorry the यार, I have no idea. That's how. अरे वो मैं ब्लॉक कर रहा था, उल्टा सीधा स्टोरीज में टैग कर रहे थे, अरे कोई उल्टा नहीं सीधा है। बोलते हुए। I had no idea. I don't Most elimination sweeps there with 19 eliminations. पूरा व्लॉग देखा बट ऐड see नहीं what आया। others. I didn't see Goldie Boy's live, so I don't know. कब री अपलोड करोगे? once it gets दोनों सेंसिटिविटी बेस्ट processed। होती है भाई, यूज करने आनी चाहिए, हाई हो चाहे लो। चलो अभी प्रोसेस हो रहा है, जब हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है? Let's go. Next match. क्या सर्कल कट है। Stoned on 4 as well, bumping it up to 6 in this game series.
Revo. There is so much work. I mean, Seven these guys are the top three for eliminations as well as knockouts. It's really good. ड्रॉप फ्लैश हो रहा है ना हाँ सर्कल अच्छा है इनके पास ये ले सकते हैं अगर इन्होंने फाइट निकाल ली तो बहुत अच्छा जाएगा मोमेंटम भी और सर्कल भी I think Mafioso as well as Revo, they're both very very good players. You can see प्लेन पाथ के हिसाब से knockouts, but I think every single player on Alpha 7 does play their own particular मोस्टली हर टीम के 2 ड्रॉप होते हैं प्लेन पाथ को लेके moments. And I really do like the addition of Mythic. I think he's provided this amazing defense for the team. He's not always well, but when it comes to preventing teams from wiping them, अब ये जक्सी फटाक से इस घर की छत पे चढ़ जाएगा और इसकी सारंग को क्रॉसिंग के टाइम पे पेलेगा आज तो 7 सीज को सिर्फ और सिर्फ उसके लिए खेलना चाहिए पैसे के लिए मैं तो साफ बोल रहा हूं spooky for them up in Severny, but it's a nice place to start. He's especially with the circle. He didn't quite catch it and just joins now. He did hit towards that northern side of the map. I would say fairly central over both the सारंग को जल्दी से चला जाना चाहिए भाई वहां पे वरना स्कैम होगा so provides some pretty decent rotational pass वो चढ़ गया छत पे मतलब ऐसा होता है जब इंसान वो उसके लिए खेलता है ना किल विल के लिए खेलता है और अगर ओए जक्सी पीछे से बंदे आगे मत चढ़ ओए मत चढ़ ओए मत चढ़ ओए गिर गया काली जबान लगा दी गाइस मत चढ़ कुछ नहीं दिखेगा जक्सी कुछ नहीं दिखेगा वहां से भाई कुछ नहीं दिखेगा friends to win yourself some PMWI special sets. You can look fresh as anything doing it as well if you're grabbing those gun skins. ये भी उल्टा पेल सकते हैं 7 सीज वाले इनको स्मोक बॉल बना के इन 2 बंदों पे घुस जाना चाहिए और एक बंदे को इधर छोड़ देना चाहिए वो इनकी क्रॉसिंग देख लेगा mobile during अगर इन्होंने टाइम दिया तो स्ट्रेटजीज या बताते हुए हमें it's the key part. Make sure you're playing during the PMWI because we are coming to a close now. We're in our first of the main event. There's no show match at the end of the day. We already victor for that in Stalwart Esports. No second runner-up for them this time. They've taken it all. That's happy days. यार दिल तो मैं तुम्हें बताऊं माँ कसम मेरा रोज होता है है ना next 6 games जब कोई चीज I'm going to say नहीं 6 games right तब उसकी वैल्यू रियलाइज होती है समझ आती क्या है मतलब ये तो पूरा यार वैसे भी तो डेली खेल लेते हैं इसलिए तो मन can start a challenge Alpha 7 बट ये वाली थोड़ी फिलॉसफी वाली बात बोल दी है भाई बहुत लेकिन मैं सच बताऊं तो जब मैं एक चीज मैंने नहीं कितना सहेंगे ऐसा कुछ all right that's going to be very obviously नहीं गेम के लिए था ब्लॉग प्राइवेट क्यों हो गया गाइस सो दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग देयर वाज अ थिंग जिसको मैंने एडिट आउट किया obviously समझदार लोग गेम की तरफ लेते हैं देयर वाज अ थिंग जो मैंने एडिट आउट किया है उसमें अभी और वो जब प्रोसेस हो जाएगा तो वो मैं फिर उसके बाद पब्लिक कर दूंगा तो मतलब YouTube में एडिटर होता है अगर आप जो है कुछ अपलोड कर देते हो और कुछ ट्रिम या आपको ब्लर करना होता है तो अभी मैंने उस पार्ट को ट्रिम किया है एंड जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो मैं वापस पब्लिक कर दूंगा इसलिए अभी प्राइवेट किया हुआ है क्योंकि जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाता है तो आपको तो वही वर्जन दिखता रहता है कैसे बताऊं मैं से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ 10 मिनट का व्लॉग है उसमें 3 सेकंड के लिए कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं दिखानी है तो जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा वीडियो वो वही पुराना वर्जन दिखेगा अनएडिटेड वाला पहले वाला तो जब वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा मैं पब्लिक कर दूंगा तब तक शांति रखो ठीक है आउटरो एडिट नहीं आउटरो कुछ नहीं देयर वाज अ थिंग जो है ना मजे मस्ती वाली चीज वो है उसके अंदर तो तब तक के लिए वेट करो ठीक है but they have a lot of cash on the cards, and that's kind of the really उधर से वो घुस जाएंगे इधर से ये स्मोक बॉल बना के घुस जाएंगे yeah they love sandbox उधर से वो घुस जाएंगे इधर से ये स्मोक बॉल बना के घुस जाएंगे yeah they love sandbox shots for Scout, not just yet. Maybe spotting Flukas on the ridge line, but peeks back in. They should be visible from Vampire Esports' position. Look to finish it. And this is good news for Bigatron, right? A team that seemingly dodged the money so far in the previous 2 days' games. They pick up that 2,000 for that first elimination, and they're looking to try and take out the rest of 7C. Not so good if you're a fan from the Indian region, though, as Scout and Spray God look to defend. Missouri.
fair bit of damage there, but Zuxi will knock another, and Spray God now just scout all on his lone. Has to pull something magical to make this one happen. It's very unlikely, and Zuxi, an absolute machine with the M249, and Luxi lobbing that one over the top. It's simple pickings for BTR, $7,000 earned. First match of the day. And the first special elimination as well. 9K. An extra 2. 9K on one fight. Incredible result for Bigatron. I think they started on what, like 11, 17, something around that sort of mark in the teens. So nearly doubling their earnings in one fight. What a calculated finish that was. We'll get the first elim, we'll push up, then we'll drop the nade over the top to finish the last, and we'll get all those prizes in one. That is a $7,000 nade. Yeah. That one elim, the final elim on our team, the first special elim. Beautiful. You gotta love it. They're also currently heading up most team eliminations right now. I don't know for how long, but it would be funny if they do finish it like this. We do see the nade now as it pops over the top. Luxi, cool guys, don't look at explosion, just runs away. I know I've done this. This fight's already over. Absolutely. You just hear the katana resheath. Shing! I knew you'd make the noise. I knew you'd do that. I knew it. Oh, you know, I've been practicing for this very moment. I can tell. Yeah. Like, in that eventuality, I will bring out the best katana sheath that anyone's ever heard. Getting straight back to the game, though, Circle does head up a little bit further towards the north, so still very indecisive at the moment. It's at the counter, can't pick between the Peppermint and the Spearmint garments at the moment. I just don't know where this Circle's going to head. I think, you know, these teams are also going to be in the same boat, trying to figure out where is the best position to hold. I do like Team Falcon's spot at the moment, though. Diz does actually give you a another 7, bringing us up to 17K. Bringing us up to 17K. $21K. Unfortunately, though, the first airdrop was not collected by them, which means the maximum could be 20K on the game. With the 10K chicken dinner, make that 32. Yeah, that would be some big earnings. VP, let's see, man. अगर VP ये भी जीत जाता है ना भाई, right now, तो VP God level team made it happen. वैसे भी God level ही है, तो champion बने. 3 of the awards going but ये वाला भी जीत जाते तो भाई फिर तो looking down towards Alpha 7. कितना पैसा कमा देंगे. Remain strong in this match and continue to push their lead ahead of. सर मैं आपका भी जैसे अभी स्ट्रीम करो ड्रीम करो लोगों पे देखा, बहुत ही अच्छा लगा. आप स्ट्रगल 110. आपने स्ट्रगल कभी छोड़ा नहीं भाई. शुक्रिया भैया. Just working in tandem. 23 oh, each. Man. ऊपर का zone. That circle is brutal. मेरे को लगा ब्रिज के पास ही जाएगा. Start to get a little bit of work done over on that East Yaz bridge. Unfortunately, खुशी महात्रे big shot खुशी जी. So do they consider moving to the western side? Just giving this hope for better positioning within the circles. Lots of tree lineup here as well, John. So many. PL लगा उसने PL इसके बाद. With fewer teams as well. I mean, this is phase 2, right? A lot of these teams are going to be able to make that. Personally, if I was playing this game, I would rather now than later to decide the side of the river. Everybody knows they need to commit north, and that's the move they're going to make. The Galaxy under pressure from Stalwart, but that rotation will carry on as planned. आपका documentary देख रहा हूँ, देख के बहुत अच्छा लगा. शुक्रिया. Love your documentary, bro. Immense respect to your hard work. Really motivated me a lot. Deadshot, thank you so much, brother. Taking their time with it. Means a lot for your kind words. शुक्रिया, appreciate it, man. From Nova Epnoia, they're just underneath Rozak at the moment, closer to school. Dead-Eyes guys. आओ कभी अहमदाबाद हमारे घर तुम्हारा स्वागत है. मकर संक्रांति पर आ भी जाओ भाई. जरूर भाई मकर संक्रांति आपड़े अहमदाबाद में मनाओ. तमें बुलाओ. बस तमें 1 किलो आधा किलो लोचो रेडी रख जो. बटर लोचो. Dead-Eyes guys trying to move their way across that east island bridge. But RA currently with a lineup on the bank side, looking to prevent any of these rotations coming through. But he will have to deal with both Nick Galaxy as well as Dead-Eyes guys.
They're coming back, in fact. Okay, let's swag around. What is NT? NT means nice try. Spray. Fortunately, you can get through that tree. Maybe let's go to the Max Man. Stop driving. Slam kar diye re. But it won't be impeded on this roll around Sunken City. There, guys. Keep them on D pe push kar denge. I don't know if that was a new airdrop or the one that they looted before. So I think there's a few reasonings behind it that you can go for. Perhaps you spot R8 on the bank side. You don't want to take your rotation just yet. You wait for the next circle and then head in late. Time changes. Song lagao strike by Ashbhai. On the other hand, Enigma Galaxy have taken a really long grab, but it's BTR once again. Zoxy absolutely killing it this match. Okay, they want more. They are looking for that 32 max earning right now. If they can pick up the most air crates. BTR to gusse mein bhai. Could earn it up there. Nades pouring in over the top. Rad. They are literally in a shooting range right now. Yeah. Zoxy's just outside with the gun with 150 bullets in it. Yes, bhai. Big shot to you. Yes, bhai. Gemforce baiting some shots out. That'll give Zoxy some time to figure out where these players are hiding at. Luxy moves around the side. And they are just surrounding them. Gemforce with the M16 has a little range to play with there. Luxy drawing that fire. Kato not quite able to land the shots you're looking for. Full aggressive here, na? On that fence line does help them out. And Luxy finally goes down to Murnir on the off angle. आज सब aggressive नहीं behind a rock though, so ऐसा लग रहा नहीं तुमको? Can't really get out of this situation. Last day मतलब full एकदम full YOLO जा रहे सब. To try and push this. मामू तेलुगु लो मार्टा रेम चप्पा रनिश भाई. एक करूँचिया नानू. हैदराबाद लो. Kaito out, but has to be very wary of this grenade. It comes through onto Luxy's position. Yes. Doesn't hit him for too much. He's just biding his time. Tries to peek up. Just a little bit of damage. Misery starts to come round. Truly an inspiration for Jim ka scene macha. Thank you, brother. Here. But the more thank you, macha. Thank you. In this awkward scenario, on the north side of the circle, really no teams around here other than Alpha 7 off in the distance. But you can see in shooting range, this is kind of an enclosed area. Take some shots from the Silence M16. What is OG original gangster? There. I was like, hang on a minute, has he got? No, he's got the M16. Score. I certainly wouldn't get that one on a this or that. It was a suppressed M16. I think I'd be fooled. You think so? I think so. The VSS is a little bit faster, you know. Chai piyo guys. Well, it depends how fast you're shooting it. A bit more whistly. That's about the best way I can describe it, really. Bhai, VP center में VP जीत रही है क्या tournament? I like this from PT. I think they realize that, you know, क्या लगता है VP जीतेगी क्या? These fences is almost like putting Rad in maximum security, with BTR being the wardens at the moment. Alpha 7 though dangerously close to this spot. I'll tell you what we were looking at, right? In terms of the leaderboard, is Vampire Esports trying to close that gap. Right now, Vampire slap bang middle circle. Heads-up rotation, as always, as the Falcons try and hamper these wild rides coming through from the Deadeyes guys. Yusuf is getting rolled up on. Plenty of players and a DBS to handle. I don't know if Yusuf can bear the brunt here. And it's just into the firing line. So hard to handle. 3 players jumping out in your face. Not much to do. It's a fair attempt, though. You take the nade out, but Deadeyes guys are on top of it. Alpha 7 have lost a play here. It's S2G taking shots from below. They're holding around a compound just on the eastern side. That's Mafioso knocked out. Alpha 7 still have 1 player on knee, though. A7 जीतेगा पक्का. मेरे को भी लग रहा है A7 जीत जाएगा. Take some shots onto Forest, and there's Zoxy BTR के बहुत supporters हैं वे. In the kill feed. है ना? तुम चिल्ला रहे. Megatron Red Aliens 6 eliminations now. With that flush coming through. Potentially another one as well to add on to the tally. 7. They are really gunning for this top spot. They're gunning for the money. They've already earned themselves 9K on this game. And they want more. 7 elims, certainly the top in this current standing. Zoxy feeling... PTR making it entertaining, yeah man. They are going YOLO, they are going aggressive. You know, not always in the main roster anymore either, so it's nice to see him coming in and doing some formidable work. Fabian, oh my lord, that is some fancy driving. Fancy driving has to put it in reverse, spun out with the tyre, nicely finding the rock there, so somehow finding Sanctuary. A hard south shift means there's more distance to go as BTR, hang on a minute, Genforce did get knocked there. Desha at the back, out in the zone there. For Bigatron, of course, would be good, but if Alpha 7 are on the case, that's going to be all the harder. Down 1 here, eliminated by Enigma Galaxy.
Yeah, Revo causing some serious problems for BTR at the moment. Zuxi's also knocked. I believe it is just one player remaining, and Desha wants some serious revenge on BTR. is not going YOLO. Might be able to make this happen. Luxy getting flushed out. I don't know, brother. BTR on 3 with 1 knock. They can go YOLO, man. Nade from Desha over the Spray top. God सारा बहुत मस्त खेलते हैं. First Scout by coming through. Gen momentum में थे. 1v2 खतरनाक किया था. Carrillo YOLO खेलते मजा not letting it go. Aggressive एकदम. Not quite getting that knock, but Zuxi. बस एकदम full खतरनाक शॉट. The run looks to be stopping. Somehow, Desha is still alive. It looks like Alpha 7 haven't taken that fight. There's a squad elimination, so they are up to 2. बोलते BTR मर गए भाई. Bigatron, their run is cut down. Still, fair amount of points in that game, just with eliminations BTR alone, up to 9 on that match. Will avert themselves a fair phone क्यों नहीं उठाते आप मेरा? युवराज भाई यही बाकी रहे. Silas spots action. Should have been a freebie, but he's able to leap up on his feet. He's been doing his burpees this morning. Get always behind on the tree D&D. afterwards. किसी का phone नहीं उठाता भाई. Work those quads. I have a private number for my family. That's it. Try and pump it up. Stalwart getting rolled up on it. Looks like the Deadeyes guys. But it's not going to work when Top's on the case. This red hair is on fire. Aniket Sharma, thank you, brother. Starts to get it rolling. Documentary कहाँ देखे लोगों पे? Again, you know, we're just in duos action. Ace India Clan Big Shorty. Following it on from the last match, we have action मतलब पहले का still remaining for Stalwart. Now S2G, they've been harrying Alpha 7 for a long time. Sharma की so याद आ रही है, far. अच्छा याद आ It's रही a है. nice shot from Ravenclaw, though, off in the Bye, distance. It VP, takes down Revo. Putting more nades down the range as well. Way to watch documentary on YouTube. Local result if they're able to land them a little bit short, a little bit right on that push. But that one's good. भाई VP पे चांस है पूरा लीड कम करने का भाई. This is excellent news. एक ही बचा भाई A7 का. 7 go down here. Carrillo. They played spoiler. Golden chance for VP guys. Golden chance for Vampire Esports. क्या लगता है Vampire जीतेगी? Last player for Alpha 7. Carrillo needs to heal. Shut down by action. Raze doesn't get the off angle, and Carrillo goes down outside the play zone. Vampire Esports still have to move down into the circle here, but S2G, they've got a good shout into this one. Vampire Esports, 0 eliminations on this game, and if they want to catch up to Alpha 7, currently at the top with 137, probably more after this game as well, they do need to get cracking Your favorite on with PUBG some of team? those eliminations, PUBG team? because the team's starting to dwindle. Only 8 teams left to alive here, with 5 teams still with 8 gun at that chicken dinner. At the moment, Alpha 7 at the end of that game, 143 points. Vampire Esports yet to score, which puts them 33 points behind. A blinder of the game necessary. It won't be achievable in this current lobby, I don't imagine. YOLO means full in an engagement with Enigma Galaxy, SK Todd. All in बोलना, but all not out, all taken in down बोलते just बोलो. yet, not out of the mix. बोले एकदम अंधा खेलने का Not अंधा so aggressive lucky. खेलने का. Take YOLO it man, down, going all in. low. All right, Going all taking in this means fight YOLO. and doing well मतलब so तुम अपना far. पूरा दे दे रहे हो. Amodi, nade over the top, wants to put ID down for now. As Ralph getting rezzed, Freak as well needs to be picked back VP up. मार रही है Galaxy to have power here. VP chicken मार देगी लगता है. Flushes out one player from Enigma Galaxy, and R8 are just sending in the explosives. It's almost as if you've got a plane dropping over the top with the bombs on side, but it's S2G laid low. What do you feel about the growth of CODM in India? No idea, brother. coming मेरे को through बिल्कुल idea from नहीं है. Sorry. Vampire Esports. Vampire ले ली भाई. मेरे को लगता है Vampire अब A7 के close आ जाएगी. भाई कौन जीत रहा है Vampire या exerted by Vampire Esports. They laid in wait. YOLO means you live only once. अरे वो पता है मतलब गेम में बता रहा हूँ यार. गेम में YOLO का मतलब ऐसा. हाँ तुम्हारा last match है all in जाओ वैसा. Last player for Enigma Galaxy, but he's got an M249. Not going to be able to leverage that ammo as R8 गेम में समझा win रहा था the बाकी ऐसा तो engagement YOLO means you against live only once. Enigma Galaxy. Bringing type में themselves खेलेगा. up to a Last match pretty ऐसा high बोलो. point tally. At the moment, though, I think Dude में RRQ in global tournament yes might man. still have RRQ highest eliminations. G2. Maybe, John. Stalwart does G9, go sorry, down G9 as था, Vampire G2 Esports start to rack up these points. G9 को miss करता हूँ, to finish B11 the को day miss करता yesterday हूँ. with 2 chicken dinners. Now, Crazy players, they're man. looking for that coveted turkey here. 30k in 3 Who matches, is your favorite John, player would be in the insane. PMWI? Favorite player in PMWI is Stoned, man.
Looks for the back shot. Now they can sweep down this hillside in a line. They have every elevation covered. Prestige finds out all about it. Shots raining down towards Ravenclaw, but there's pressure from the side, and this is coordinated pushing coming through from Vampire Esports. They are on the money with these angles. SK trying to sneak it around the side, but Ravenclaw far too heads up, out in the open, gets traded, and it's all Vampire Esports, I think they're gonna win this tournament, man. 3 chicken dinners, one after another. How do they do it? Here in the after party showdown, Ravenclaw swings down the side and hits a beautiful flank. They call him Ravenclaw because he swipes. भाई चैट अलग ही है भाई, इधर की चैट अलग डेंजर है भाई, कितना लड़ते कितना टॉक्सिक। PL लाइफ 切角圈比较多一些。来看一下佟家宝在季后赛的排名是第12位，总决赛到目前为止排名第2位。上场比赛刚刚凭借2连击是已经反超了杭州 LGD。说实话，比赛截止到目前为止，我在他们的身上看到了春季赛 4M 的影子。其实他们现在这个状态跟当年的 4M 是一样的，是在整个常规赛里面表现并不是很亮眼，但是到了总决赛之后突然就爆发了。是。来看一下这边，我们前面已经提到过 ，SG 需要回到自己的老家，在看到这个圈形之后呢，感觉回老家已经是有点来不及了。从武器上来看 ，SG 基本上没有做过多的搜索，而天霸战队呢，好像已经是被 SG 给发现，并且限制在了很小的一块范围。就从目前的这个局势上来看的话，应该是这条马路附近刷的车不多，那2支队伍8个人。RSG 先抢到了载具，是。那对于天霸来说，只能先暂时的避其锋芒。主要是 RSG 也并不知道天霸这边的虚实，不知道他们的武器配置是什么样的。面对对方已经下水的这个情况之下，虽然只有余生1人断后，但 RSG 还是不敢轻举妄动，有点违背常理了。余生没有下水，队友下水了，因为咸鱼也有梦想嘛，在此时此刻就要帮助老大哥去扛好自己的备份，而且你们先撤，对。让我来断后，而且对于余生来讲，他真的是一个人承受了太多。以前大家提到伤害队友，都说天霸，现在只说余生一个人了。但现在这个位置对 RSG 来说，明显是已经发现了天霸的动向了，还是要关注余生的发挥。如果余生能够以一个买点的身份啊，打掉对方1到2人，那么但是后点的余生出枪之后，果然反而是跟水里的领域做了一波配合，放到这里，在船上上船，然后打倒了这边 RSG 选手。但是余生马上就要遭伤了。因为你作为一个买点，第一次你打倒了1个人之后呢，对方陆地上的人在天霸水里的人没有办法。पॉइंट ऐसा है 143-129 अभी भी बहुत लीड है भाई, ऑलमोस्ट 1 गेम का लीड है। 如果说你发现陆地 143-129 的话，可以 14 पॉइंट का लीड है गाइस, क्या लगता है? वैम्पायर या A7 जल्दी बताओ चैट में। 上面一个鱼 वैम्पायर या A7 गाइस, फटाफट चैट में आ जाना चाहिए बा। 领域这个位置能不能跟队友再来一波配合呢？反正 RSG 目前载具是弃掉了，他没子弹了，领域。他应该是换成功了吗？换成功，然后再利用这个鲨鱼去做一些动作。是的。观众朋友们，为什么 RSG 不把那台载具给打掉呢？为什么呢？因为他刚刚落地啊，没有子弹啊，就那么多的物资，你打完载具之后，你还有多少子弹打人呢？况且余生虽然说只开过1发物资，但是呢，你能够保证余生他手上就是没有步枪的吗？肯定有可能。对，对于他们的信息里面是不知道的。TC 这边几辆载具都没有火力位，阿兰想要去截停一下，自然菜先落位的，自然菜能不能补掉阿兰呢？没有补掉，同样也是利用载具切到宝宝位上。A7 VP मेरे को लग रहा है VP जैसा मेन इवेंट में कमबैक दिया था फाइनल डे वैसा दे देगा। 是的， मेरे को भी लग रहा है VP निकालता है, बट फीलिंग है कि A7 लेके जाएगा। 虎狼的感觉 Game for Peace का मूवमेंट न्यू स्टेट जैसा है। Yup。而且自己还被打掉一个，比较可惜。领域应该是一波配合，你看吧，很明显是队内的一个。बोर्ड पे बैठ के मार दिया क्या? 先出枪吸引弟弟，然后领域瞬间上传。हाँ भाई बोर्ड में अरे रे 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 खत्म बाय बाय। 落地的时候，弟弟是बेचारा 而且领域太 इतना खराब लगा इसके लिए। 不是没有船的皮肤。他有，他第一时间不变。他बोल रहा है यार। 打完以后呢，再变一个红色的鲨鱼，告诉对方我就在这儿。虾人，诛心，मेरे बारे में बोल रहे हैं 洪家宝
如此圈形之下，确实啊，在圈的1/3、2/3处等待一下是一个更好的选择。毕竟前面我们已经讲过了，中心位置麦田没有太多的好点位可以给到他们。而且中心位置的一些防区、野区肯定会被一些快节奏的队伍已经提前给拿掉了。是的。那对于他们从北部来的话，只能说接一个顺位，或者说期待一个北切。他们现在最怕的是什么呢？最怕的就是同心圆啊。更怕的是什么？你知道吗？我绕过来，哎，把它夹在中间，身后 K1这不就上赶着来了吗？但是 K1的物资应该是不是特别丰富。भाई आपको सैल्यूट है, आप बहुत असल किए हो, आप रेस्पेक्ट थैंक यू ब्रदर। गेमिंग पे ग्रोथ कैसे करूं मतलब खुद से करो और क्या। क्लोज इन का कैसे मास्टर करो, मैंने वीडियो डाली है भाई, इसके ऊपर देख सकते हैं आप। फन फैक्ट ओनली 5 टीम्स हैव चिकन डिनर, डैम। गुजराती आवड़े छे भाई। 4M किधर, 4M को आएगी। अभी क्या हो रहा है? 5:30 PM हो रहा है अभी। ता गंदा जोक ईश पे 4M क्वालिफाई नहीं हुई ब्रो। 5:30 PM हो रहा है, 4M क्यों आएगी? कितने मैच हुए और 7 सीज ने किया क्या? नहीं लास्ट मैच से कुछ भी नहीं किया। DJP का बंदा ना बोलो। Excuse me guys, sorry। एक क्लोज रेंज पढ़ लिया युवराज भाई, आपका मैसेज मैंने बोला था मेरे वीडियो देखो ब्रदर, आपको पता चल जाएगा। पारा भाई है क्या ब्रो? यस है ना, वो देखो ना एमवी पारा बॉय ऑर्डर जिमी किंग खेल रहे ना भाई। टीडी वाले भी खतरनाक खेलते हैं। 花池先被爱笑给打倒，这个位置还直接补掉了，而且对于 RSG 来说是完全没有物资的，这一波完全没有反打的能力。4M क्वालिफाई नहीं है, पता है मैं। Started what the fuck इतना जल्दी? कहाँ started यार, तुम पागल बनाते हो यार। 那另一边圈中心 Pyro 这个位置想要去抢一手点位，被居米驱赶之后状态很差。但是一个 AK 扫射爆载具， गाड़ी फोड़ता है, बंदे को मारने का ही नहीं। गाड़ी फोड़ने का मां की जिमी मैन इज अ जिमी और मेरा डेली बात होता है। 2把枪线的जिमी 备弹好像都不满百。जिमी 居米来说就见怪不怪了，够了，已经够了。没事，旁边还有 King 呢，确实不够了找他拿。 那现在来看的话，上海卫队什么战队等于说减缓了一波东北方向的压力。再看看这边，也是直接争冠的竞争对手 LGD， 他们的落位好像更加大胆一些。一个3方的分彩，那这样一个分彩其实压力还是蛮大的。毕竟刚刚的圈形是给到了西南切，西南切这也相当于东北部可能会是一个强侧。是，但是结合地形来看的话，因为लोगों पे ही है ब्रदर, आप होम पेज पे जाओगे लोगों पे देयर इज अ बिग बैनर 闯过来的队伍 उस पे टैप मारो 就目前来看的话，首先就是北部会少很多支队伍。对，本来应该是强侧的。पैराबॉय फेवरेट नहीं है क्या? क्यों नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? पैराबॉय ऑल टाइम फेवरेट मैन। ये कौन सी एसटी है? ये चाइना की एसटी है। ST 果然像酷酷说的一样，完成了。 आर्म रेसलिंग टीम्स आदित्य भाई पर्सनली मिलो कभी, ऐसा टिप्स दूंगा ना। आर्म रेसलिंग मिलो, कभी जिंदगी में हारोगे नहीं। 拿信息嘛。Thank you 啊。现在在南部来讲，上帝视角给到他们的一个规划，其实主要来自于 J Team 的压力会比较大。花花也是遭到了 这里看来，佟家堡是并不想直进。 Jimmy and you used to study in the same school, right? Fox भाई 没有多少战队敢于冒这个风险，把麦田使到 LG 的脸上。他们最开始一圈的一个阵型是在废墟的5房，墨竹是一个单挂的点位，但结果被打掉之后，这一次派出了花花作为单挂。ज़ेर बस ज़्यादा मारता है, पैराबॉय भी ज़्यादा मारता है। क्या है तुम लोग का? तो मैं जिमी को बताता था, बोलता था कि यार हम ऐसे ही यार हम मारते रहते हैं। 但是好在前期有一些分数的入账。 ज़्यादा डिस्कशन में रिवील नहीं कर सकता, हम लोग के पर्सनल डिस्कशन से। 能拿到一个前期分，慢慢的打自己。 मेरा जिमी का ऐसे ही है, मैं अभी कुछ बोल दूंगा स्ट्रीम पे, वो नेक्स्ट टाइम से मेरे से बात करना बंद कर देगा। हम लोग ऐसा डील हुआ था कि ऑन स्ट्रीम हम लोग अपनी फ्रेंडशिप नहीं बताएंगे। 是由爱笑画屏的。 是的，应该是刚刚在农场附近收掉了 RSG 的。 जिमी भी उधर सना ना 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 बोलता है, पता है? उनकी भाषा में। 那看来 उसको थोड़े डायलॉग सिखाए मेरे, डैमेज जोन अंदर हो बोलता है, उधर बोलता है। 但这样的一个圈形出现之后，对于 LGD 来说啊，想要去追分就不能再踩了，风险真的会越来越大。特别是悲伤炮楼那一侧啊，来自于北部，很有可能会压力比较大。
K1这里是从圈边选择了扎点，而给他扎成功了。但这个位置你想要停车的话，你要方向是非常多的，所以说他们选择去到了下面大仓吗？ भाई ये जगह देख के मैं गॉब्लिन की आदत याद है गॉब्लिन वर्सेस किसका हुआ था एक बंदा बचा था कौन सी टीम थी यार वो वीपी 跟昨天的 वीपी का ही बंदा बचा था यही सेम स्पॉट पे 阶段 गॉब्लिन था 3了啊，那也是笃定了西南边是一个大弱边， संक्रांति पे सूरत 没有想到有一个六子。来看这边 K1战队落位以后呢，紧接着而来的是更多战队也想要对这个点位进行。天霸这里是4男1车吗？发现上面有人，只能往下走。下面的话是 NV 腾讯视频战队的一个满边，这边拔了一颗接车雷，天霸呢也没有选择第一时间贴防区，绕了一圈，发现近点好像没有火力，要停了。那这里的话也要招呼自己的队友过来。 其实这一波没必要打，可以撤，因为这个防区是一个复合型的防区，可以容纳多队的。既然对方都已经安全下车了，没有造成一个提前的接车接人，那就没必要打。关键是对于上海卫腾讯视频来讲，他们也担心这波如果打起来，北部会不会有战队来劝架呢？是的。如果说这个时候欧的能用这样的一个3称优势啊，卡点，卡一个视角，能放倒对方，或许是可以去 尝试一下的是，对于天霸来讲，他们现在啊也不会犯那么低级的失误啊。来到一个地方，天霸你想吧，对啊，人生地不熟，前期遭遇了这么多的意外，有惊无险保存了一个满边，而且在这个圈形刷新之后还能扎到一个不错的点位，这个时候对天霸来说能活着就够了，4个字心满意足了，不会再有其他的想法了，就做一波4个人的买点，就等你来进攻。ये कब हुआ बे? भाई वैम्पायर तो सीधा इनसे ऊपर निकल गया बे। ये पता नहीं था मेरे को। वैम्पायर ने भी बहुत पैसा कमाया बे। अच्छा कल 3 चिकन मारे ना। $30 तो वहीं हो गए। वैम्पायर अभी सबसे पैसे वाला है रे। 但是波波啊，这个位置埋的是非常的灵性。 但对于 LGD 来说，有一个非常重要的消息，就是刚刚的狂哥哥打倒7杀之后，信息 LGD 是能听到的，他也知道 Pyro 是一个吊人的队伍。波波感觉到这个位置再待下去的话，很有可能会被 LGD 利用反斜坡发现的。封了一颗烟，而狂哥哥这边的脚步是早已经暴露。 对 LGD 来讲，同样也是人生地不熟的一块区域啊，没有必要用自己的肉身去吸引对方的枪线。还是在反斜坡，毕竟自己身后有人架枪圈形继续刷新。那么 LGD 现在要不要收缩呢？我觉得可以暂时的先收缩一下，毕竟后点的话只放2个人布防还是有压力的。但近点那边欧到一颗雷，放到天宇要进攻了，应该是要。本来的话，那边我看居民是准备已经绕了，但是没有想到这边欧的打开了一个破点，瞬间的完成集结。 而且下太多，这个时间点都没有人来劝架的话，也就说明 NV 可以放心大胆的打这一波，最多就是人给抽一抽。先利用投掷物看一看，先排火。这个位置的话，队友慢慢的贴到自己的身后了，还能忙里偷闲舔个包。YTD 那边应该是脚步已经暴露，熬着的下一颗手雷应该就要排这个他的房间了。余生的手里是一把 DBS， 很危险。 余生暴露枪位，而下面的枪位是有2个，这一点对于上海卫腾讯视频来说也知道了。你被外围的枪尖放倒，余生也是被 King 给放倒，余生这边天霸只剩领域1个了。领域在烟雾当中，那显然1楼的这个枪位啊，对于上海卫腾讯视频战队来讲，还是没有发现对方到底是转移了还是在原地。当然了，对于 TT 来讲，虽然说刚才是可以去原地出法的，但是已经尝到了一波甜头。难道做事这波团价是完完全全由上海卫腾讯视频战队给收分吗？应该不会，他们已经来到了近点。 而且刚刚欧的发现了领域在厕所了，是的，而且小赛的2波出枪也是让他们知道了。उनको पता है थर्ड पार्टी होगा बाहर जाएगा तो शैक के अंदर जाके मारेगा उतना कमिट करेगा तो बाहर से मर जाएगा 决定先回到自己的防区之内，蓝白之间等待一会儿，因为那边 Beautiful 的车声已经响起。बहुत खतरनाक है 而且 Beautiful 手上是一把 AUG， डेंजर खेलते हुए लोग बहुत कुछ सीखने मिलता है लोगों को देख के। अगर वही मैं यहाँ रहता मैं कमिट करके शैक में मारने का पूरा ट्राई करता और मैं बाहर से नॉक फिनिश हो जाता। यही है बे बहुत डिफरेंस है। 内控这把枪没有扩容， बहुत शाने है भाई बहुत दिमाग लगा के खेलते हैं बहुत गेम सेंस लगा 可能是有点难受的。 King 这里在烟雾弹当中被打倒了，有没有补的机会？领域已经是一个死血了 ，King 最终还是死里逃生。TT 这边刚刚走，发现 King 已经倒地了，又有想法，又回来了。 但是很明显，对于 TT 来说，他是有优先权拿住白圈内部的点位的。是的，没必要贴到外围跟你打架。其实这一波对于 TT 来讲，我觉得也是认为自己在北部是唯一的原住民。就算这一波他劝完了、抽完了，耽误了自己的时间，但是往南进的顺位上，不会有北边的其他战队超越自己，甚至是。आते भाई आपके पास वापस आते हैं थोड़ी देर पॉज कर दीजिए प्लीज
आप pause कर दीजिए. Thank you, bye bye. But we do know they can play this map extremely well, and that is the main thing to be watching out for. You can see the points there. Look at that. Vampire Esports close on the heels of Alpha 7. So they're going to need to start drinking some water, washing off the tiredness as they come into these final games and speed up, because they are heading towards that finish line, and you know the Vampire Esports, they're hungry for a second win. Well, this is a very fast map, right? It is small, it's compact, it's designed for teams. With 12 teams on, we're looking at how close in आपके communication skills जितने अच्छे हैं, आपको YouTube channel बनाना चाहिए. Everyone is going to land down. आपके जितने typing skills अच्छे हैं ना, उस हिसाब से आपको यार जिंदगी में कुछ करना चाहिए. Water there? Oh, they're in Fisker House. On that typing बहुत अच्छी है भाई. बैठे आप बहुत कुछ लिख देते हो. इस हिसाब से आपको भी कुछ करना चाहिए यार. Operated by STE right now. Just a suggestion, man. Highest damage totals Revo with an insane. And especially आपको अपना पहले 10th pass करना चाहिए. Stone still typing holding skills on to that 10th pass कर लो. He's seen those players off in the distance. Very old joke, man. Very funny guy. He's a very funny guy, man. Really good shots coming out from Stone so far. Been a cool very good anchor point for the rest of the team to really rally around. This very cool guy. Not only the after party showdown, but as well as the PMWI. And we can't forget Damar on the end right now with the best smile in the biz. He does look good. और एक बंदा cool बनने की कोशिश Like the circle is the whole map. That's right. There's really nowhere that we're confirmed. By the way, already on job. Thank you, brother. Thank you. Sangwan bhai. They can kind of chill out, loot what they need to, and then get moving when that next circle does pop. You can see our official smartphone partner as well there. I'm going to call him out just because I can, and I have one. I was just kidding, man. Just आप मेरा मजाक कर रहे थे. At the moment. आप भी मजाक कर रहे थे, मैं भी मजाक कर रहा था. Being extremely beautiful. आपने मजाक किया मतलब आप मजाक सहन भी कर सकते हो. इसके लिए आपने मजाक किया. Am I right? You can watch together with us for the 2022 PMWI together. You can watch PMWI together with us in game over at that esports center with your friends. Win those PMWI special sets, and hopefully Carrillo doesn't fall like this. Trade it off though. Revo gets the frag onto Falcons. Powerful. Not going to be exhibiting that power for this round. $2,000 ले गया भाई. 2K over towards Alpha 7. ऐसा अंधा पैसा दे रहे हैं. अंधा पैसा दे रहे हैं भाई. To grab 1,60,000 रुपए किल मार के लेके गया भाई. ऐसा रहना भाई माँ कसम. And you can also पूरे टूर्नामेंट के MVP को 1,00,000 मिलता है. उधर एक किल को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है. 1,60,000 रुपए एक किल को. माँ कसम कितना पैसा भाई. अंधा पैसा भाई. अंधा पैसा. बहुत पैसा दे रहे हैं. Bumping up their cash count. I think that they might have just actually tied with Vampire Esports. Forward is easy link. After party event में IGL नहीं करता भाई. Now it's 72 only main event. So really is neck and neck between both these teams. Why you are not playing? ठीक है भाई. There's the M1014. Zone prediction करो. इसमें क्या zone prediction करना है? बे लिविक में कौन zone predict करता है? Close range, mythic. ये कोई map है predict करने के लिए? If he's not careful. इसमें कोई zone लेता है? More focused on Yusuf right now. Spots the map है किधर भी जाओ zone मिल जाएगा. Positions. That's right on the stairwell. Not quite gonna bobble down it though. And Yusuf stays in the mix of it for now, but Revo has the off-back and maybe over the top. Gets a little bit of damage in. Spray. Yusuf is angry, man. Yusuf out. Low HP now. Has to fall back. Maybe looking for a heal, the Molotov, but it's not going to slow Revo down. It might do just that. First aid kit being popped, and Damar can now answer into this fight. Alpha 7 in a tricky spot now. Revo pops that heal, but so does Yusuf. Mythic leads the charge, breaks the door. Yusuf with the M1014 as well, around the side, needs to come up big, around the ventilator, looks for the shots, looks for the spray, but can't find what he's looking for. Carrillo is down on the off angle, and Damar wants to find the ground floor push. Will be able to get this flush onto Carrillo, bring Alpha 7 down to 3, but the rest of the team not so lucky. Yusuf down, but not out just yet, as there's spray coming through still. Quick flush over towards Yusuf. Never did actually go very low in that situation. Gaming के लिए पूछ रहे तो यार 1.5 लाख में 13 Pro Max आ जाता है भाई. Of their own on Mythic, so iPhone के ऊपर कोई नहीं भाई. Down, never alone, but A7. कोई नहीं भाई. iPhone के ऊपर कोई नहीं so critical at times when they're needed most. iPhone के ऊपर कोई नहीं. iPhone is daddy of phones. Will have fed back that information before he did fall in this match.
न्यू और जॉइन लीग्स कब तक स्नैक्स भाई गेम तो आ जाए यार पहले गेम क्या पता ही नहीं है तब तक तो कुछ नहीं मैं भी सूरत में सचिन में रहता हूं actually approaching Freak spots never alone. Ooh, Lord with the crossfire as well, not quite able to hit the shots, never alone hit the deck first. Has that tree trunk as cover. And will look to get the heal off. I think he's laid out in the open though. Nice cover there for Freak. Maybe he's just not spotting it. Has to reload on the dinner plate. आप कौन सी डिवाइस पर खेलते हो 13 Pro Max? We definitely saw him. Hey guys, 14 कब लॉन्च है? Those moments of 14 लॉन्च कब है? They did. That's Revo in fact. मार दिया भाई फाल करके और एक बंदे DP of his own coming in from the side swipe. Does not want to give up this first team elimination. Now just Damar left. They're looking to pick up that $5,000. You know, the 2K into the 5K, it's worth it in a match like this, even if you do go out early. So that's probably the main objective for Alpha 7. Mythic brings home the 5K. $7,000 कमाया इस मैंने as you say. $7,000 No limbs just yet, so no special Olymp. 5,000 ये और first elimination का 2,000. Still potentially. A7 भाई कितना पैसा कमाएगा भाई? Of course, Alpha 7 losing a player brings them into a 16 सितंबर को एक 7 सितंबर बोल रहा है 16 सितंबर बोल रहा है किसी का बजट है स्नाइपर आईफोन 13 लिया 16 का लॉन्च का वेट करो अभी तो गेम है नहीं तो 14 का लॉन्च वेट कर लो यार गेम है नहीं तो इतना अर्जेंट नहीं आपको फोन खरीदना गेम आएगा पहले on the next fight and it's the Lord कब आएगा वो पता नहीं He's sends him through the window and another dear me, he's on target. The arc is good. Lord, 2 for 2. Lord wants to push up over the wall now. Mafioso in the same situation as Damar. P90 and DP. That's bad for your health. Stepping up towards the window, but does fade away. Flush is coming through. Another nade from Lord. Is this one good as well? Lord, man! Only 1v3 with nades. He's Lord. Nader limbs. Those. He's a nade Lord, man. He's a nade Lord. Triple. Coming off the back मेरे से grenade करता है बे fight in a firework Lord man no one anticipated at the beginning of this game with the circle being so favorable to everyone. A three-way fight there and the fight is over in an instant as soon as Lord packs a punch into that one. Not only that, Alpha 7 go down early. Vampire Esports, where you at? This is now a real good opportunity for them. इसके पहले लूट लिया था racking up those points. Yes, they might be just a little bit behind, but if they can find another chicken dinner, which no longer seems so unlikely to get a fourth in a row here, we might just be setting records here at the after party showdown. यार वो fans है, family है वो, random कैसे बुला रहे हैं उनको? Trying to get away. थोड़ी सी शर्म करो भाई. Squeaking They're it like through. a family to me, man. Just about surviving there. I'm replying to my brothers and sisters. That's it. They're family, man. They're family. Snacks army. Doesn't want to. They're not random. Bear the brunt of that explosion. Pops it up. VP को पूरा advantage है इस match में. Let's see. Someone kill it. A7 का मैच खत्म हो गया. VP अगर lead cover कर लेता है तो GGWP for A7. Don't like to make too much happen towards Lord the will get the beginning. special Like kill reward. Compound. Wait for दिल्ली में meet up करेंगे क्या भाई कभी जरूर करेंगे. You know, nice joke, Lord. That's not a joke. Seems like they get themselves like a little compound buff. अगर आपको joke लग रहा है तो आप GGWP. Here's that nade. It's just so perfectly done. 21 साल का. And Lord was just absolutely loving it. VP को chicken मिल जाएगा फिर full मजे. Hit the second one. तो full intense हो जाएगा. He's got that adrenaline pumping through. He's like, I'm going for the third, boys. अगर VP को chicken मिल जाता है, it's an intense game. I think it was 3 for 3 on Lord's nade. और मजा आएगा engagement. That is absolutely incredible. I mean, normally you throw maybe maybe BGMI three, update you get Bhagwan knock, you get one knock, right? But those were perfect. He read them like a book. He's not seeing numbers anymore. No, absolutely not. I think Lord at this point needs to grab himself a couple of goals because he was इधर कितना 60 रुपए में मिलता है कितना मिल रहा है आजकल एप्पल का रेट क्या है भाई एक एप्पल आता होगा 30 40 50 रुपए 60 रुपए कितना गिव अवे करना है बताओ too much एक डजन कर दूंगा भाई off the back of that game. You know, some very, very decent stuff that they're able to achieve there. And it's going to give them most of the Northwest side most entertaining Indian creator for you. Right, with plenty of fans in our audience, of course. The home team. यार ऐसा confusing है बहुत लोग हैं Picture in picture. Nice stuff. Gaming industry में बोल रहे हो अपने gaming में बोल रहे हो तो number 1 T-Bone फिर T-Bone के बाद all the better. Fatu Binks players is down right now. Shift. Mamba 5th किसको बोलूं? Stalwart. Looking strong there. They are in a slight valley though, so a little bit difficult. Kalaric will be glad to know that Crabgrass is slowly receding away from this game. Still just a little bit in at the moment. Oh! Does take a knee. Rod on the warpath as well. Towards Hamodi, who isn't down just yet, but
There's a real quick timer burning away, certainly in Freak's mind. Needs to pop that smoke, needs to reposition. Deadeye's guys are pretty close. Hamodi, I think Ralph's going for it in the vehicle. Looking to pop that res, drops out. Are they going to save him? I think he's on the res. Hopefully looking to try and stick that one. Keeps them all going for Nick McGalaxy. All right, we'll finish out. One player down one Kia. थोड़ी इज्जत रख लेना मेरी 1 point total. थोड़ी सी इज्जत रखो Just underneath Nick तुम लोग बताओ तुम्हारे लिए McGalaxy top with 5 4 creators कौन है eliminations. The teams that still are in the top game. 5 creators for you guys 5 के 5 नाम लिख के चैट में बताओ. Give them the 3-pointer. एक मत लिखना 5 के 5 एक साथ एक मैसेज में लिखो. Vampire Esports start making their way up the ladder. Obviously, they won't know that Alpha 7's out of the game as of yet, and I imagine they're going to continue to play this one Age out doesn't matter, very, भाई very शादी. slowly. विराज भाई चलो कर दो स्पॉन्सर कर दो waiting शादी. to strike पूरा towards खर्चा the बुढ़ा end लो from कर the लेंगे. shadows. Ooh, not quite landing the spray onto R8 there. Although R8 are suffering, Sung has gone down in this engagement already. At the start of this game, Blank, the point difference between Vampire Esports and Alpha 7, 13. That will have stretched out to 16 with the 3 limbs that Alpha 7 have earned themselves so far. But from this point on, it's all Hotel Goldie, bye, snacks, Mavi Scout, okay, thank you. Scout snacks, model seat, Goldie, bhai, kya baat hai? East Port. Oh my God. T-Bone Raka, snacks, Goldie, bhai, and Fatu. Thank you, guys. Thank you. That's right. Yeah, always trying to call it East Model snacks, Binks. I think that's fair. We're an esports tournament, so it's okay. All right. Snacks, Jonathan Raka, kya baat It's about to get all their players back to their feet, but they are taking damage. The blue so close to them, and trying to get across this open ground's going to be hard. Scout all of Ra jumping out the vehicle. This could be a really good moment for him, but it looks like there's more eyes on this fight than just him. Scout doesn't have time to stand and deliver on the spray there. The blue zone pushing them in. 7C very, very close by. A nice cheeky little bobble nade, not quite making the distance there. Scout still thinking too hard, and Spray God's up the top to try and put some suppression onto Ra's position. You can see one of them already down. Can Scout get out of this position? It'll be tough from underneath the bridge. Invest himself. Man. Quick first aid, but Spray God is good on the nade. Looking for another one. Spray God, man, he's an angry guy. Scout gets across behind that smoke. Sarang drops down all the way to the wall there. Desha low, and maybe looking to try and finish this one off. A nade from Spray God, maybe looking to pop itself into that smoke. Spots Munir, but has the shotgun out first. Needs to swap, and it's not quite quick enough. Kaito has a nade cooking, potentially popping it right out that door, right onto Sarang, but another nade turned over the top. Nice! Takes a knee. Beautiful. It looks like all of these teams are trying to... Sarang Sarang finds the final frag. Rod. Jord be, aisa khelo be, aisa khelo, Jord be. Usko aisa maro, man. Oh Lord. Spray God Sarang, man, deadly assaulters, man. यही तो देखना था इन दोनों की तरफ से यार. Side of the engagement, Nick McGalaxy. अच्छा गन पावर है, मार की गिरी यूज करो ना भाई. At it. अदा घुस के मारो, मार कर just south of Cronus on that crossroads. दो नेड डाले, दो नेड से नॉक करे. भाई ने एक गेम से दोनों को ले लिया. इसको बोलते यार गेम प्ले. ऐसा बताओ यार जरा मजा आएगा. Bobble it around the side. Can it get the damage? अच्छा गन पावर ले गया. घर को जाओगे क्या भाई? मारो मार की गिरी. Lord did start. इसे मारो guys. 7 up in the chat. Couple of nades of his own. फटाफट 7 up in the chat. Everyone's taking a absolute leaf out of the book that Lord wrote on the bandolier of grenades here. Not too sure how 7C went down there, but they do go down nonetheless. 2 auto shotguns around the side. As he hops around the side, but Hamoni's on the swivel. The drop shot's good. And Deadeye's guys eliminated. Nick McGalaxy take the dub. अच्छा मोमेंटम बना था मां की गिर मर भी गए पता ही नहीं चला. This is the beginning of the fight. It is so hectic. The M1014, everyone's loving using this weapon in the game. It sounds so good. It feels so satisfying. Why wouldn't you use it? Now, Vampire Esports need to start making their way into the circle. This is stalwart, a very, very good team. Will be in their way. BTR, unfortunately, will take the worst end of things, though. All right, on the back right of Vampire Esports' route of ingress. Third party हो गई, gatekeep हुआ, zone के लिए gatekeep हुआ. Nades flying, not really too much found. This could be good. मैं भी गाना बजाने वाला था, 7 समुंदर पार. Absolutely perfect onto ID77. देखा जब तक तो भाई zone के बाहर ही मर गए. That's gonna slow R8 down. अच्छा निकाला रे fight S2G going at it with Stalwart right now. It's going every which way, but S2G bearing ऐसा फाड़ damage right now. After party में जब से पहला मैच से देख रहा हूँ, फाड़. सबके अंदर शॉटगन चला रहे. कोई DPS चलाता है, कोई S12 के चलाता है,
that's going to be a real quick revive, but Damwon don't want to give them that space. Huge amount of casualties there for SUG in a very short amount of time. Top action, Pika don't take any kind of damage in that fight. Scry was the only one standing in front of the team like a meat shield, but with this circle centering right up towards the middle, everybody has to push in. So it's anybody's game, but Vampire Esports still in this one. 4 teams alive, still remaining, and 12 in the lobby. Vampire Esports have the freedom of already being outside. They have this high ground position over these two compounds. Looking quite good. Could it be the back-to-back, back-to-back? Back-to-back. Yeah, man. See, John, it will be one hell of a moment to make it happen. Enigma Galaxy, you can see them off in the distance just with their 2. Damwon Kia extremely close to Stalwart, but there are shots been taken down towards Pika. Smoke trains sent out, but now they've got to go against the Korean shotgun meta, which seems to have been adapted by... Choo chews them up on the crossing. Damwon Kia shuts down Stalwart Esports to start things off, but they have got the numbers advantage. They leverage it and they turn things around. Enigma Galaxy had the off angle with 2, but in the meantime, Vampire Esports swarm the hill. Looking to close it out for Enigma Galaxy. With 2 players still on a split here, looking down towards Stalwart. There's nades coming through. Pika's taken down. Ralph's looking to finish off top. This is looking so good for Vampire Esports now. Just Spy pushing out for Vampire is winning the tournament. Vampire Esports position. Hamodi finds the sidelines. Ravenclaw, a pivotal player for Vampire Esports on those off angles, is curtailed. 3 players on the hillside, and they have to move towards Enigma Galaxy. They have the information, but like you say, the northwest shift up towards Enigma Galaxy, anything can still happen, but they're really lacking of cover, and should they need to move in just a little bit further, it might be tough, but still, Stalwart with 2 players, getting one back up on their feet, another nade gets sent through. I think that's through the window, John. Oh, is it going to go? Not quite. Not quite getting the damage. Stalwart back up to 2 players, alive and kicking. Fragging as well, if they can help it. Action. Around the side, Scry still alive as well. He's dangerous, man. The nade potentially there, but Ralph wants to slow down Stalwart's push as well. Close, right up and in their grill. Ralph wants to pop that nade. Hamodi wants to take the fight with Vampire Esports. Scry spotted by Schweppes. Vampire Esports sweep down towards Stalwart. Ralph now on the rock. They'll see his position, and Enigma Galaxy are split up. Hamodi takes the shots over the top of the hill, but 3 players strong for Vampire Esports. They swing it out wide. Ralph tries to pop the nade in, and not quite finding the knocks, not quite getting it done. There's one from Hamodi. Looks to shut down the push from Vampire Esports. Around the side of the rock, M1014 in hand, but a sliver of HP to play with. Stops, pushes around the side. There's the spray, and it is back-to-back, back-to-back. 4 in a row. The Vampires dominating here. Dracula riding strong, but we've got to change that right around because it is back-to-back. Call this team out. भाई ये लोग जीत गए बे टूर्नामेंट. अबे ये लोग जीत गए बे. इसके पहले इनका लीड 14 पॉइंट का था. ये चिकन मार दिया भाई. ऐसी लीड खत्म हो गया. भाई डेंजर है वे. अबे वैम्पायर भाई कुछ खतरनाक खेल रहे हैं. तुमको याद है जब मेन इवेंट हुआ था? मेन इवेंट अगर अभी तो याद ही रहेगा. इतनी भी किसी भी याददाश्त इतनी बेकार नहीं है भाई कि अभी 2 दिन पहले का इवेंट भूल जाए. इन्होंने लास्ट डे पे कैसा खेला था देखा था? 2 चिकन मारे थे, 2 मैच में सेकंड आए थे. ये लोग जीत गए थे भाई. मेन इवेंट भी मेन इवेंट पे भी इन्होंने लास्ट डे खतरनाक कमबैक दिया था. लड़की कहाँ है यार? लड़की का स्टर दिया कहाँ है यार? 4 लड़के ठहरा दिया. थोड़ी सी अक्ल है यार. 对于他们来说，在决赛圈不好打，是个人的一个枪法的鞋。虽然说雷仔那边左侧已经爆烟了，但是好像 K1 并不上当。多情月球当中的沈腾，看着自己的地球一点点爆炸，看着自己的队友一点点被团灭，他无可奈何。载具已经开不了了，这个位置只能趴在合金龙骨的后方，先锋科烟，但是位置已经被锁定了呀。齐继航。 配合新城的加强是步步紧逼 ，TT 也没有能够想到如此大的一个优势局，如此完美呈现，怎么就被 K1 给原地爆破了呢？但不好说。TT 还剩谁？雷仔啊，雷仔。虽然说高光制造机并不是他，但是他们有高光制造机的血脉。1打2还是有空间的。
我们刚才说 मैट्रिक चिकन याद आ गया बीजेएमआई लॉन्च पड़ेगा हमने 4 चिकन निकाले बैक टू बैक 不过呢 back to back 4 chicken dinner in row 如此精彩的一个比赛也是观众朋友们乐得见到的。基本上对于 K1 来说，雷仔的位置已经被锁定了。两个人打一波协同的话，其实雷仔的操作空间并不多。PL कितने दिन का आई थिंक लास्ट डे कल लास्ट डे ना PL का 在和平精英界也是有 PL का कल लास्ट डे 有 ना 的人觉得会偏向于左右打协同，有的人觉得是打补枪，两个人从一个方向进攻会比较好，那就看地形了。मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे यार मेहनत करेंगे इसके लिए गेम आ जाए पहले 掩体比较多，我的建议是抱团打。当然了，现在 K1 给出的答案是卡住两边的反斜。虽然说雷仔那边左侧已经爆烟了，但是好像 K1 并不上当，金航这里是严密的防守住了自己的左手位。明显这一波对于 K1 来说，他们的选择就是等梅花桩。एनवी जीत जाएगा रे मेरे को लग रहा है टीजेपी का जंप देखो बे भाई टीजेपी सीधा सेकंड आ गया भाई क्या जंप मारा है टीजेपी ने 2 चिकन मारने क्या जंप मारा है देख रहे हो 上房顶如果能够打一个出击，还是有机会的。星辰一颗手雷，雷仔也同时拔出了自己的手雷，星辰是将自己的手雷收了回去。很有可能会顺暴雷带走一颗手雷，出手，齐齐航躲避吗？没有躲避，但是这颗雷的时间没有能够拿捏好，还在原地吗？齐齐航还是不动。这有点太过头铁了吧！1打1了，这个位置雷仔在楼顶。星辰想要夫人，这个过点可能不太好过呀。这可不行服啊！一定要相信自己，相信自己的1打1。星辰这边压一颗顺爆雷，看看能不能拿捏到这边的雷仔。雷仔被打成了一个半血，星辰也不想和对方对枪。2个闪出手，3个闪，这要打药吗？直接被白了一个满白，往前走，星辰还没有缓过来，星辰最终被雷仔给反杀掉了。光制造机属于广州 TT， 恭喜广州 TT 拿下本局胜利。这场比赛的过程真的是跌宕起伏啊！本来以为占据天时地利的广州 TT 要错失一击了。结果मस्त किया स्टन करके मारा अभी देख रहे हो यूटिलिटी सीसेस देख रहे हो खतरनाक बे मैनेजमेंट कब मैन बिल्कुल सही अरे दमजीत गिर रहा है ओएस भी गिर रहा है दोबारा सेंट्रेस का इस्तेमाल वो करेंगे जरूर बट काफी मुश्किल आर्यमान अभी भी तैयार थे ऑपरेटर के साथ वन डाउन सुकी इज देयर ऑपरेटर से मच वो चाहेंगे जरूर एक और प्ले को टेक डाउन एक और प्लेयर ओ भाई क्लच कर दिया भाई द क्लच मास्टर वंस अगेन डज इट फॉर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फ्लैश था वो एंड एक बात बताओ स्टन और फ्लैश में कुछ फर्क है मैंने बोला था उसने स्टन किया स्टन करके मारा है तो स्टन से इंसान क्या होता है जब स्टन तुम फेंकते हो सामने वाला क्या होता है अंधा होता है सुखमित गिल भाई फ्लैश था वो मतलब क्या हुआ दोनों का मतलब सेम ही है ना भाई अलग अलग थोड़ी है यार स्टार्ट हो गया मैच नहीं भाई S2G स्पोर्ट में $60,000 जीते मां कसम मेरे को स्पाइक कौन दिया डरो मत चलो अरे कॉम्स भी सुनाई दे रहे हैं सब रोटेट कर चुके ऑलरेडी ये कॉम्स भी सुनाई दे रहे हैं इनका दूसरी जगह डाल तो गाली वाली दे देगा तो या कमिट करना है या कमिट करना है है लोग है चेक कर लिया मैंने बहुत लोग है रेस्ट करता हूं नहीं रुक जा बॉलिंग कर रहा है रे बैक चेक करो ओके थैंक्स डेडली डुओ ओके मैं गैराज पे हूँ ठीक है तो क्या वाचिंग गैराज ओके कॉल वॉल चल रहा है रे इनका अरे मैं हूँ आया गैराज पे सीढ़ी भाग रहा कुत्ता फेंकता हूँ नाइस रे पार्थ हमारे साथ घुस वी एंट्री और स्टन और फ्लैश में फर्क है भाई होगा भाई मेरे को इतना पता है इंसान अंधा होता है तुम स्टन फेंकोगे तुम फ्लैश फेंको इंसान अंधा होता है उससे ज्यादा मेरे को नहीं पता
and they're already $500,000. भाई अगर तुम in depth जाओगे तो भाई 600,000 in 2 weeks. Flash FLAS अच्छा होता है, stun STUN होता है stun. तो भाई ऐसा फर्क तो मालूम पड़ेगा ना भाई. I mean, what a hype game coming through from Vampire Esports. Excellent performance. This is the team that really shone for us last week. We're दोनों से अंधे तो होते हैं भाई. Looking forward to more on the rest of the day, but Alpha 7, they are really good. We just haven't seen it in these first 2 games. GGWP क्या होता है? GGWP means GGWP good game. I think Alpha Well 7 played. still GG have मतलब it in good them. game. WP मतलब well played. Sports, you know, we praised them so much in the PMWI main tournament. Here in the after party showdown, looks like they haven't slowed down whatsoever. And honestly, after that last game, I was shaking. माफ करो यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी स्टन और फ्लैश में फर्क पूछ के यार. इतना मत ज्ञान दो यार प्लीज. माफ करो भाई, माफ करो. इतना ज्ञान नहीं चाहिए भाई, नींद आ जाएगा. माँ कसम इतना मत दो यार ज्ञान. माफ करो गाइस, माफ करो. तुमको पता है बहुत अच्छी बात है. मेरे को भी शुक्रिया शुक्रिया. चलो मैच एंजॉय करें. वीकेंड ही है, बर्फ के गोले मारेंगे एक दूसरे को. आ जाओ. Let's go. Certainly not. I mean, I think this is the first time we've seen 4 in a row on games. Will we see 5 in a row? Ooh, maybe. That's the question. I think 4 in a row was done a while back. I think it was in one of the PMPL CIS regions. However, now we're heading into here. I mean, 5 would be an incredible landmark. And I don't think we've seen many times where, you know, you finish a day with 2 chicken dinners, and then you have that mental reset, right? You have that mental reset. Personal favorite agent in Valorant. Not often. Reina यार, Reina जैसी real life में मिलने मजा आ जाएगा यार. The final game on the last day into the Reina next is all-time day. favorite, man. Reina क्या दिखती है वे game में. Schweppes now starting to catch up with Revo, who so far for Alpha 7 has been absolutely a linchpin for the Reina team to क्या actually be दिखती है able वे to, Valorant. you know, make everything happen for them. He is very, very good. Drops coming through for these teams. Coal mine down to Milner. Reina जैसी real life में मिल जाए ना भाई. जिंदगी से. Everyone finding their spot. Potential for an Abbey conflict on the south side of proceedings, between, I believe, Damwon Kia and R8. Could be even going out towards Volnova. Sim for Reina, yeah man, sim for Reina any day. Mavatra currently 7 Cs and Falcons going at it. कभी देखना Reina को. चूसेगी तेरा. Vikendi Circle. Vikendi Circle. However, Vampire Esports once again, as well as Alpha 7, yesterday's ऐसा तो जेट सीधा चाकू मारेगी भाई सीधा अंदर. Extremely good for both these teams. जेट को बोलूंगा तो जेट तो सीधा 5 चाकू मारेगी सीधा अंदर. इससे तो खून चूसना सही है भाई. Not so heavy on the coastal side though, so there's not really all that opportunity to control the roads if it does start to shift downwards. But Cosmodrome currently controlled by Alpha 7 with Vampire Esports over towards Sabava. इंडिया कप जीतेगा PMWI 2050 में क्या बैगन के बाल तू अगले साल खेल ले तू जिता दे. 2050 के तो 2023 में जिता दे भाई. तू कहाँ है तू क्या कर रहा है? You're missing out. You're missing out big stars. देख रहे हो भाई के डायलॉग देख रहे हो 2050 में क्या कहते हैं. अरे पहले तू खेल ले आजा. तेरे को खिला दे तेरे को भेजेंगे आजा. देखेंगे 2023 में जिता दे तू कहीं को 2050 तक हमारे को वेट करा रहा. अगले साल ही जिता दे भाई तू. हमारे को इतना मत तड़पा भाई 20-25 साल. जा भाई अगले साल तू खुद खेल ले जिता दे यार. बैगन का बाल. 2050 क्या कहते हैं? कूल बनना है कूल. But right now, the esports competition also. कूल बनना है इन लोगों को आजकल के बम चास. चलो भाई 7 सीज वर्सेस फाल्कन गाइस. अरे नहीं यार. Trying to look good, powerful. Shuts down this push with 1, with 2. Beautiful sprays coming through. Falcons with plenty of off angles. They tried to play this last round. It didn't go so well in their engagement that they had. They went down pretty early, but this time around it's working. Oh! स्प्रे गार्ड के नेट अच्छे हो गए बे, खतरनाक दे रहा. लास्ट में तो मस्त पड़ा दो. Charlotte next door. चल Aladdin. I've got pretty wild for him too. Aladdin looking up towards Never Alone at the moment. 2 players down for them. Yusuf also on bended knee. Taking a nap in the snow at the moment. Can't be too comfortable for him, but they have to wake him up sooner or later. They do manage to get 1 player up from 7 Seas. In the meantime, R8, they do take a knock. Let's see if Damwon Kia can secure themselves the first elimination of the map. It's going back and forth, it seems. Oh! Spray God, man! From Spray God, getting that. The crazy guy won 1,60,000. Pushing on forwards. More eliminations, special eliminations coming through for 7C, earning that money. Can they put that final nail in the Falcons' coffin?
$4,000 accumulated just there, right there. $4,000 God, who's been incredibly good. 3,60,000. Chal sprayga, chal. Yaar. 1v4 hai kya bhai ka? In the body. 1v4 है इसका. Yet again, it's Damar against. अरे ऐसा क्यों? Take it down with a swift little headshot क्यों from यार? KM and forces back Aladdin as well. Low HP from a lot of these players, and Aladdin, the last player in a 1v1, 7C will fall, and the Falcons will fly, staying alive with the first team elimination. $5,000 for the home team. You'll take that one. Damar blows away the 7C team. यार ऐसा ओपन में क्यों चला गया यार? DBS में यार एक-एक करके क्यों गए यार? Couldn't handle the ball. अबे अच्छा ट्राई था रे NT में से. Unfortunately washed. अबे यार ऐसा नहीं जाना था यार. इधर देखो ना. The last Aladdin as well. Swift little headshot from the A. And it's Damar. यार इधर ऐसा. भाई साथ में जाना था यार. कहाँ DBS लेके अकेले चले गए यार? अरे नहीं यार भाई अरे यार. Against 7C, Spray God gets taken down with a swift little headshot. HP from a lot of these players. And Aladdin, the last player in a 1v1. 7C will fall, and the Falcons will fly. The terrains are playing with so many high ground. So much high ground available to you. You get on all tops of these rooftops. I've seen players do this before. It's good fun. You can see Forrest already in a cheeky position. But I think the player is hiding. NT in the chat. Players can be anywhere. Seemingly, they can do anything. Trying to get out onto the roof side. All right, want those high ground positions as well. Forrest, nice spot on that little window there, right by the door. I think he knows. The nade in hand. Forrest trying to thread the needle. Not quite getting it in just yet. I'm getting cuteness overload juxtaposed by the fight going on between Damwon and Kia with the R8 fans. It's really, really nice to see the turnout here at the PMWI. 1v4 था बेस पे रिकॉर्ड का आराम से लेता 1v4 कर देता साथ में जाता अलादीन के तो. So many people come to support their teams. What a bobble though. Bounces off several different objects. You know, the trigonometry was not good from Forrest there. Not quite able to get those angles right. Prestige very close to Onba. As we get a little replay. SK Ton getting knocked and a nade over the top. Fabian traded off maybe? Not entirely sure what happened here for Damwon. DBS. Back up, and they did get that red. As we tune back in with the fight live. Damwon Kia still trying to get something done. Unfortunately, R8 take that knock in response. Onba won out that DBS trade. IGL India के अलग लेवल खेल रहे हैं. A bunch of shells right to the back there. Watch PL flying forwards. Match PM का हो तो 4M कैसे खेलेंगे? देखो तुम मेरा जोक मेरे पे मत मार. Moving up. 1v4 करने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया. A lot of teams still in that south साथ side. में जाना था रे 1v4 तो कर ही देता बट साथ में जाना था वो DBS लेके ओपन में चला गया. Made fast. The thing about the Kendi Blank अच्छा मारा बट स्प्रे गॉड ने दो नेड से DBS से. There's quite a lot of closely packed compounds, so a lot favorite of सब्जी कौन सी है? सब्जी favorite in these circles. But what that also means is that rotations आज तक मैं ढूंढ नहीं पाया कौन सी मेरी फेवरेट. कभी कुछ पसंद आता है कभी कुछ पसंद आता है. Your way with less teams. Maybe a little bit easier. PEL नहीं भाई इधर इंटेंस चल रहा है VP वर्सेस फाल्कन A7 का वो देखेंगे यार कौन जीतेगा देखेंगे A7 वर्सेस VP. I might have spoken too soon though. If there's a hard north shift, okay, sure, but I think this would be classed as a Vikendi circle. Honestly, those coastal difference कितना है पता है? 1 पॉइंट का डिफरेंस है और तुम बोल रहे हो PL लगाओ. भाई तुमको पता है दोनों टीम में 1 पॉइंट का डिफरेंस है 1 पॉइंट का. कितना इंटेंस हो रहा है टूर्नामेंट देख रहे हो? भाई A7 और VP में 1 पॉइंट का डिफरेंस है. 1 पॉइंट की कीमत तुम क्या जानो? PL वालों मतलब भाई साहब PL वालों मतलब वो PL वालों ने जो चैट में लिख रहे PL देखो PL देखो. तुमको ये बोल रहा हूँ 1 पॉइंट की कीमत तुम क्या जानो भाई. इंटेंस जा सकता है. और कितने मैचेस हैं? 4 मैचेस 3 मैचेस. फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मैं फुटबॉल फॉलो ही नहीं करता. I know nothing about football. कुछ नहीं पता. गोल मारना आता है बस. Highly effective. And similarly, और वो भी कोई भी गोलकीपर नहीं रहेगा तब गोल मार दूंगा मैं. पहले बता दे रहा हूँ फिर बोलना मत. अरे पचको PBS man वाइप सीधा वाइप S2G man. Yeah, S2G were having none of that crash from Raul. अगर तुम बोलोगे फुटबॉल कैसा था स्नैक बैक तो मेरे को गोल मारना था बट विदाउट गोलकीपर. जा
every single player getting taken down in the first couple of moments, or at least a couple of knocks. It just makes the 0 point difference. so नहीं रे 1 point का difference Galaxy down 1 and still at it down towards the south side of Volnova. 149, 146 by Vampire Esports on the top. Here on Vikendi, playing a completely different game at TDM at the moment. The blue zone, zone 2, is manageable. Zone 3, it'll start to get inconvenient. Zone 4, you got to get out of there. That is unbearable at that point in time. Oh, BMPS2 trophy आगे दिख रहा है. Modi, good camp, क्या बात. honestly, has had a really here in the after party showdown. A lot of eliminations, very skilled player. Came into the scene and made a good splash, but यार मेरे को DBS सीखना है. Sound of that will send him packing. भाई मेरे को DBS चलाना सीखना है. Pitch को. Real big splash right there. पिचकारी gun, man. DBS. It's in the meta. It's gonna be seen so much more. यार DBS चलाना सीखना पड़ेगा. Especially in this urban compound. Jason got 1 kill already in this match. अच्छा ये match का गिन के बोल रहे हो क्या? ओह तो बराबर. Damn one Kia as well as R8 to it. नहीं मैं fan award मिलेगा ना stage पे बुला के वो तो idea नहीं यार मेरे को भी. Ralph already left. Heads up towards Podvosto, just underneath Mount Krejnik at the moment. The rest of the teams, Alpha 7, Dead Eyes guys, S2G, Stalwart, Vampires, BTR, they're all still within the circle though. BTR just about making their way in from Trevno, so they're right on the edge side. Might be a little bit difficult to move through Cosmodrome, especially with A7 watching out for a lot of these things. feeling आ रहा है ये zone VP पे जाएगा. As well provides a big left side problem because you're stuck in there if you do have to. हाँ gut feeling के zone coal mine shift होगा. Vampire said gut feeling है तुम्हारा भाई IGL है coal mine and they take the western shore in coal mine. That's pretty good. I think coal mine नहीं shift है left side shift है. You can congratulate. Left side going on. Left side. Left side. Circle just about to shift in. Bro, I'm a fucking god. Shift towards the Vampires. I did not know what's happening with Vampire Esports. जो लोग मेरे को but someone on that team. Watch party जब पहले दिन से करा था वो लोग जो लोग आज तक देख रहे हैं उनको पता है तुम्हारा भाई कैसा IGL करता है. मतलब ऐसा prediction मतलब ऐसा रहता है ना. Someone is God level prediction. 5 minutes in the future. Figure out what's God level prediction. And then को straight back into it. But they're God level even prediction. in this circle. अब बोल रहा हूँ ना मेरा और जिमी का बात होते रहता है. Opportunity for them to actually get back into the circle, even if it shifts. बोल रहा हूँ ना. Oh no. भाई लोग माइलेज चेक कर रहे थे बाइक का. वो सब छोड़ो. तुमको क्या बोल रहा हूँ? बोला था ना मेरा और जिमी का बात होते रहता है. मैं और जिमी डेली रात को वीडियो कॉल करते हैं. जोन्स हम लोग बातें करते हैं. वो PL के जोन बताता है मैं इधर इंडिया के जोन बताता हूँ. PMWI के जोन्स बताता हूँ. हम लोग का डिस्कशन होते रहता है. So that's why I'm a very good IGL man. Thank you guys. Thank you my teammates. Thank you. Now all these teams trying to make their way over because शुक्रिया. Thank you. तब प्यार देने के लिए IGL को thank you. Moment peeking out maybe now and again, but this area शुक्रिया. really does make it difficult for a lot of these engagements long distance to happen just because of all these. Oh bye. शिफू भाई बोलते हैं सीधा 1,60,000 अकाउंट में. Enigma Galaxy though, this works. Childhood favorite cartoon. Childhood अभी तक favorite है भाई Shinchan man. Shinchan all time favorite. Lord, just looking out, they still have Freak as well off in the back. जहाँ भी ये जाए. देखो कैसी शरारतें करता वो Enigma Galaxy with 3, making their way in on the south side. S2G taking a little bit of an engagement there against the Vampire Esports team. First time thank you. Seen action properly so far. Zone God, thank you भाई. Can they bear the brunt of it? पर आपके तो कोई टीममेट्स ही नहीं है. आप लोग हो ना यार, मैं आप लोगों को टीममेट मान रहा था यार. आप लोग बोल रहे हो टीममेट ही नहीं है. आप लोगों को टीममेट्स बना रहा था. You might be able to get some shots across, but really all you're looking to do is best Paraboy or Order. दोनों legend है यार. दोनों खतरनाक player है. Order and make it just that Order अलग level player है, Paraboy अलग level player है. Because it's very unlikely that you get दोनों में से एक select करो any day Paraboy. Towards your position to get those level 3s on board, you're kind of good with what you've got and you have to stick around until someone crashes into you and you have to win that engagement and pick up their supplies after. Alpha Stefan's still alive for now. I don't want to jinx them too much. But they have got 4 players still in this. They crossed from Cosmodrome. They're across that river now. They're by the roadside on the northeastern edge. Zone just about to come in. Looks like Omba did manage to get back up 4 down 1 Kia. You could see them
just passing. वापस कोल माइन जाएगा, थोड़ा और लेफ्ट पीछे आ सकता है, थोड़ा सा, या तो कोल माइन जाएगा तो वापस लेफ्ट नीचे आएगा, लेफ्ट नीचे आ सकता है तो कोल माइन पे बनेगा पूरा, Vampire Esports very central at the moment. कोल माइन पे बना पूरा कोल माइन जोन right now. S2G Alpha 7 कोल BTR was such lead, yeah man. Ryzen Microbio Luxus XC crazy lineup, crazy to make their way down from Zabava. खतरनाक चिंदिया मोमबत्तियां lineup, खत्म. Freak by some freaky scouting man. I'm sure Freak by बोलते निकल गए Freak by. Bigatron with shots over towards Nick Galaxy Lord. The nade man, the bombardier of the squad. Dangerous supporter, just a little bit. Deadeye's guys, potential for a third party here. Freak might want to regroup. Genfos has the angle though, has the oversight, and there's more spray coming through from Luxy with the G36. Freak not quite able to get an answer just yet. Still impressive that Nick Galaxy were able to get up here. Saying hello to the Alpha 7 fans. वो लड़की मेरे को आई बोल रही थी, पता है तुमको? Of the audience, giving us a good wave there. वो मेरी watch party देख रही है फोन पे. Supporting them through these tremulous times, to be honest with you. 147 points apiece though for Alpha 7. Omber not able to make it in with Ralph with the oversight, and that's Dan1 Kia out. Eliminated. 2 players were left, but they managed to pick that one up. Lord still in the sight lines of Genfos with that M16, pops the 4X. And lands what he's looking for. 2 players now for Nick Galaxy as they need yet another res. They've had a tough time of it on the southeastern side. They'll need to get a little bit closer to this circle. Coal mine. We Deadeye's guys coming up from that area. Just trying to pull out the pickaxe. Dig away at any kind of movement they can make up towards the northern side. See if they can strike gold, but it's looking a little bit unlikely as they will have to pass over some treacherous terrain. Over the lip, all 3 in a vehicle. Dangerous at the best of times, but when there's so many compounds occupied close by, Nick Galaxy trying to get inside the building, get to cover. Freak. Thank you. Might feel a little bit salty about that as Lord takes a couple. The fuck? Good timing to get out of that vehicle as well. I think they knew exactly what was coming their way. Where is Ryzen from BTR? And they're right down towards Ryzen abhi break pe brother. Next circle coming very shortly our way. East side supports Alpha 7. West supports Vampire Esports, who currently have both Stalwart and Falcons on their back, but it's Stalwart in fact who gets the circle here. SUG still in, and now Vampire Esports might need to make a quick getaway here, but it will be between them and 2 4-man teams, and Falcons can always backstab from behind. 2 players for Falcons, Damar and Powerful, but they look to skirt around, potentially running straight into Stalwart if they make this move too early. Instead, they drop out of the vehicle. Vampire will know that there's players out this area now. With those vehicle noises coming through, they will have scouted this. You can see they are on the swivel for this direction. They're closer to the circle, and Falcons will need to move first. Vampire Esports close to the ridge edge, though. Like you said, definitely will have heard Falcons, so can try and get rid of them. Luckily for the Falcons, though, luckily for Vampire Esports, sorry, with the Falcons so much out in the open, they might even get taken down by an enemy team, but with Vampire Esports being up the hill and Falcons even further, this is a case where they do have oversights on the retreat from Vampire Esports into the circle itself. Damar looking for that opening. The circle pushing them now. Damar will have to leave. The nade's not really in range to get too much done. Shout out please Naveen by Big Shorty. Alpha 7 taking the fight on the north side with Bigatron as well. This is across the way on the northeast side of conflict. Last match तक watch party करेंगे. DMPS a little bit spicy. पागल है क्या यार? तुम कुछ भी बोलते हो यार. क्या लगता है भाई? A7 कहाँ है? At the moment, immediately Vampire Esports. A7 पे अच्छा zone है भाई. A7 lead बना सकता है. Spot where they may not know that they're here. A7 अच्छा lead बना सकता है. Not where at least that first grenade did take a bit of damage, and Vampire Esports looking to just move now. A7 can Stalwart though in front of them. Have that some will lead. Be the big obstacle. If they can keep themselves covered from Alpha 7's angle, the Deadeye's guys can be handled at their back. Spray over towards Chari, who's staying alive behind a rock,
Turulov has a brilliant lineup here if he can land this spray. Look at that position. Step up, get that spray. That's what you're looking for. But teams are starting to fall like flies. Enigma Galaxy going down to just one. Two still alive. Vampire Esports getting punished from the top rope. And now Charlie, last player alive. Vampire Esports still have 4 going if they can get those reses. But they need to push. They are out of the zone. And they do not have a lot to play with here. Lord may get a taste of his own. DBS around the side. Swatch to the G36. But Lord's on the floor. Will put him down. DBS सीखना पड़ेगा यार चलाना. S2G still going strong here. Stalwart now Vampire has moving one as slightly of out now. towards Let's see, Vampire man. Esports position. VP or They still A7 have prediction 4 do. I alive, think though. VP. That is the main thing. VP will win. They move up top side. A7 को zone जाने के लिए BTR को मारना पड़ेगा and BTR are weekend kings. Alpha 7 looking to deal with them, but a nade flies backwards into their face. It's nade Revo though with a good one. Another one coming down from the top rope from Bigatron though. Genfos needs to get res. They don't have a lot of time. Beautiful day from Revo. 1v3 कर दिया भाई नेड से. Players from Bigatron. भाई नेड से 1v3 कर दिया last बचा. So 1v4 for Revo भाई. Vampires and Stalwart on the far side. Bigatron suffering. They cannot stand the might of Alpha 7. Brazil reigning on the north side. Revo just भाई almost 1v4 था इसका BTR का. Getting the last elimination there. Revo. Bye. He has not been a fantastic member. Alpha 7, man. Just underneath though. This is dangerous for Vampire Esports. How do they make that? Oh! Stone stays alive. Zone ले लिए भाई. Getting sprayed down on the corner. Stops falling. भाई zone ले लिए बे. Sprayed down as well. Top Steve मारेगा this angle. Need करेगा मारेगा. Stops. मुश्किल है. There's Stone getting taken down on the off. Rotation अच्छा डाला था but already will this reign of terror be brought short by Stalwart on the south side? Ravenclaw still there, but Schweppes is burning. Stakes flying back and forth all the way and finding time and time again the hearts of the vampires. So getting flushed. S2G want a part of this pie, but I don't think this is something that you want to be chowing down on. Stops, naded out on the backline as Top leads the charge, coming in for Stalwart with the micro Uzi, and somehow the reses are coming through. Vampire Esports revive themselves. 2 players on the inside. Scry, action, Top, circling around now. 3 alive for Stalwart. The fire comes in, the brunt of the sun trying to take down the vampires, and S2G coming at a crucial moment. Carrillo finds way into this one, and then Ravenclaw will go down. The Molotovs are too strong. And now A7 looking to pick up the pieces. At this crucial juncture, with it so close at the top, Alpha 7 stay alive. 4 players, they have the outside angle. Damar down the bottom might be able to pick off 1 or 2, but what can Stalwart do from inside this compound? Stalwart looking to regain a little bit of composure here, but Revo has just not stopped this entire after-party showdown. He's looking to show the entire world what he's made of here on an international stage. They know where Damar is, seemingly. You can see Revo scoping in on location. Stalwart back to 4. Pitched battle between 2 Titans. Smart from Falcons, surprisingly still in. क्या लगता है किसका चिकन है guys? One goes down, unfortunately. 4v1. क्या लगता है किसका चिकन है? जल्दी चैट में prediction, जल्दी. किसका prediction लग रहा है guys? 1 player still remaining now. Revo on the roof. Pika spotted. Repositions. Stays alive. Scry not taking damage there as well. Discipline. Oi! Diga! Revo is just so quick with it. And the circle moves away from them. So both teams माफ करो तो मैं जरा left right हो जाता हूँ. Does not really favor anyone. Nades are being held by the entirety of Alpha 7. Damar gets taken down. 44. What time बाद? Leaves no rock unturned. Finally एक 44 देखने मिल रहा है. Intense 44. दोनों खतरनाक टीम. STB खतरनाक है. A7 का भी गन पावर खतरनाक है. क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे को फीलिंग आ रहा है A7 निकाल लेगा. फीलिंग आ रहा है. क्या ये फीलिंग सही होगी? Utility pouring on in towards the backline. Pika looks for the spray. Mafioso caught short. Pika opens up with 1 over towards Mafioso. Cuts him down out in the open. Carrillo steps out wide and is forced back by the sprays pouring on in from Stalwart. Stalwart just need to hold strong at the moment with the nades. But it's coming thick and fast from Alpha 7. Revo still holds on to his high ground position, John. Brazil 15 सेकंड में जोन आ रहा है. Stay strong at the top. दोनों टीम को जोन जाना है. They didn't like being second fiddle. And this time around they will have their retribution. Vampire having already fallen. 15 सेकंड में जोन आ रहा है. 3 सेकंड में जोन आ रहा है. Alpha 7 जोन जाना है दोनों टीम को.
But that chicken dinner is worth $10,000 with a nade over towards action. Brings them 3v3. Evening things out, but Riva will have to leave his knife down, and Pika steps just shy of the Molotov. Will move back out again. That nade goes off the side, does a little bit of damage, it's not quite enough. The smokes are absolutely everywhere. This kind of warfare is just blind shooting. Oh, Revo caught on the drop there. A beautiful spray from top around the side. Not going to get the flush. Not just yet. Mythic is there for the res if it's there. A Grillo sprays through the window. Oh, top me! Find more, but finally he's taken down. It's just Mythic. 1 versus 2 for Alpha 7 to take home the chicken dinner in this Vikendi match. But the spray from the back is just too much. It is top by top ne fight जीता है. Unable to take home that 10k, but by top ne fight जीता दिया भाई. We'll see them very steady looking top at fight that 60k in first top place. in the chat. Now fairly ahead of Vampire Esports. Again, even on the back of 4 wins in a row, Alpha 7 still make up the difference. And it's getting very, very difficult. 3 more matches to go now, John, for Vampire Esports to try and get a lead, but I don't know where they're going to find it. It's going to be so close. Those 2 games with Alpha 7 not performing in the first 2 games of the day. अच्छा बैठता भाई, full intense चल रहा है भाई A7 और VP के against. आपस में बहुत intense है。毕竟还是要谨慎一点，好不容易给到一局天命圈嘛。Suki 拉出来，想要操作。 想来可以，想走可就有点困难了。想走就不行了。那这场比赛拿下1分排名分。已经被枪神发现了，位置被锁定了，那居民应该也是走不掉了。要看枪神的丢雷技术，突然也开始丢雷。阿加，运用的还是很理想的。是的，2个手雷排掉了。那么这场比赛居民是拿下了2分的排名。 那目前那个积分形势上来看的话，杭州 LGD 129分，离第1名的恩威腾讯新民战队差了40分，压力还是很大的。而在西侧，SM和天霸之间的2-2对阵马上就要开始了。这边是余生，站于阵下。मंगोलिया रीजन के शहजादे साउथ एशिया रीजन की सबसे बेहतरीन स्क्वाड भी मानी जाती है। दे आर फाइनली बैक इन द एक्शन और 7 किल्स कर आसानी इस मैच का चिकन डिनर, आसानी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस मैच के अंदर कमाल चिकन डिनर जरूर स्कोर करते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल था उन दोनों ही स्क्वाड्स को एलिमिनेट करना। अल्फा 7 से भी काफ़ी प्रोलॉन्ग फाइट होती है एंड सेम फॉर वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट भी ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन अभी के लिए गाइस विल बी गोइंग टू शॉर्ट ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। عايز تترجم راب؟ تعالى لي. ملوك الصين دي انا ملخصه في سطور، بس مين يقرا؟ فاهم؟ كلام الشارع ده انا هرشه كل المجال حبايبي بروز. وانا كاكازوكو مصدع ايه القي نظره لو على الحلاوه عندي كاستر والاسم عفرت يا عفرت، هتفضل معفرتها ولا ايه يا برو؟ انت مين يا هو ازاي ده دخل هنا يا جدعان؟ نكسر الدنيا الاول وبعدين نتكلم، نعيد من الاول. لا 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 مش مساعد. سبوتيفاي عمل لك بلاي ليست الاقوى راب مصري، اسمع ملوك الصين ببلاش.
अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, हम लोग वापस आ चुके हैं और खुशामदीद कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को। आखिरी 3 मैचेस बकाया रह चुके हैं और पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल 2022 अपने अख्ताम को पहुँच जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं खुशामदीद कहूँगा अलादीन को। अलादीन वेलकम बैक वंस अगेन। पिछला मैच बहुत खूबसूरती के साथ अख्ताम पर लाया गया टीम स्टारवर्ड स्पोर्ट्स की तरफ से। दोनों ही स्क्वाड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से एलिमिनेट कर पाती है स्टारवर्ड स्पोर्ट्स, जो फिलहाल डोमिनेट कर रहे हैं PMWI को। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आदि फिर से बुलाने के लिए यहाँ पर। लेकिन लास्ट मैच की थोड़ी सी बात करेंगे। एसटी ने जिस तरह से डोमिनेट किया, एसटी आज का दिन काफ़ी अच्छे से खेल रही है। हमने उनको 2 मैचेस में 10-10 पॉइंट्स निकालते हुए देखा है इससे पहले भी। सो इस लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद आप देखें कि 3 मैचेस के अंदर ही उनकी तरफ से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक जो है वो बटोरे गए हैं। सो ये चीज़ बहुत शानदार है। ज़रूर वहीं पर बात करते हैं सेकंड स्पॉट पर अल्फा 7 नजर आई। एक कमबैक मैच उन्होंने भी खेला क्योंकि वैम्पायर स्पोर्ट्स उनको बहुत अच्छे से कंटेस्ट कर रही थी। एक बार फिर से वैम्पायर स्पोर्ट्स से अपना पहला पायदान जो वो छीनती हुई लास्ट मैच में अल्फा 7 नजर आई हमें। लेकिन बात करेंगे S2G की, एक और कंसिस्टेंट टीम बनकर हमारे सामने जा रही है। लास्ट कुछ मैचेस में उन्होंने 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा नहीं खेला, बट अभी एक रिकवरी मैच खेला विद 14 पॉइंट्स। फाल्कन्स का भी अच्छा मैच रहा जरूर है, बट फाल्कन्स की डोमिनेशन को एक फुल स्टॉप लगा हुआ नजर आ रहा है। और अभी थोड़ा बहुत उन्होंने स्ट्रगल करके अच्छा खेल लिया है, बट एक बहुत वाव परफॉर्मेंस अभी भी उनकी तरफ से नहीं दिखाई गई आती। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट्स टीम अल्फा 7 इतने लेकर जा चुकी इस मैच में कि फर्स्ट जो स्पॉट है, जो पहला स्पॉट है, पायदान है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा अलादीन। सो वही लूप दोबारा से चलता हुआ, जहां पर फर्स्ट स्पॉट पे कोई और टीम आती है, फिर दोबारा से वो फर्स्ट स्पॉट गवा दिया जाता है। सो देखते हैं क्या बनता है। आई थिंक सो, आई बिलीव कि आखिरी मैच तक ये कहानी चलती रहेगी और आखिरी मैच तक वाजे नहीं होने वाला कि वैम्पायर स्पोर्ट्स PMWI की सेकंड ट्रॉफी लेकर जाने वाली है या टीम अल्फा 7, जो कि अभी जिन्होंने ज्वाइन किया आफ्टर पार्टी शोडाउन में और बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज भी किया, क्या वो ये ट्रॉफी लेकर जाएंगे। आई रियली वांट कि अल्फा 7 लेकर जाए अलादीन, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया इस सारे मंजर को। हालांकि पहले दिन जब हमने आगाज़ किया था PMWI का, तो काफ़ी टीम्स ने स्ट्रगल किया, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी इस सारे एटमॉस्फेयर को। लेकिन अल्फा 7 ने आते साथ पहले दिन से, पहले मैच से जो धूम मचाई है, वो भी डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। बिल्कुल डिजर्विंग सारी ही टीम्स हैं जो टॉप पे मौजूद हैं। अगर आप देखें थे कि पहले दिन का बहुत बुरा गेम खेला था, 50 पॉइंट्स तक लीड बना चुकी थी अल्फा 7 टीम। अगर हम बात करें वैम्पायर स्पोर्ट्स की, उन्होंने बहुत बुरा गेम खेला था, लेकिन अभी वैम्पायर स्पोर्ट्स का जो रिकवरी मैचेस का सिलसिला चला है, जो उन्होंने कमबैक दिखाया है, वो बहुत शानदार है। तो इसकी मद में अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भाई वैम्पायर स्पोर्ट्स भी इक्वली डिजर्विंग है। इससे पहले वो पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल के मेन इवेंट को जीत चुकी है। आफ्टर पार्टी शोडाउन में भी उन्होंने अपना जो है वो उसी तरह से लोहा मनवा लिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ, जीते कोई भी, मैं चाहता हूँ कि एंड कंपटीशन तक हमें जो है वो पता ना चले जीत कौन रहा है। वो जो एक पॉइंट का जो सिलसिला होता है, एक पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, वो यहाँ बना रहे, ताकि कंपटीशन मजीद इंटरेस्टिंग हो। आखिरी मोमेंट तक पता ना चले और आखिरी मोमेंट के आखिरी मैच के आखिरी लम्हात में जाके जब डिसाइड होता है कि वो कौन सी टीम है जो सेकंड डिनर लेकर या फिर ज़्यादा किल्स लेकर जो वो जीत कर गई है इस कंपटीशन को, तो वो देखकर ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई वांट कि उस मोमेंट तक, उस लम्हे तक ये मैच जाए जहाँ पर हमें पता ना चल रहा हो कि कौन जीत रहा है, कौन लेकर जा रहा है इस टूर्नामेंट को, क्योंकि वहाँ फिर ऑब्वियसली वो ज़्यादा एंटरटेनिंग रहता है आपके लिए, बजाय इसके कि आपको पहले से ही पता लग जाए, लास्ट 2 मैचेस से या लास्ट मैच से पहले ही पता लग जाए कि यार ये टीम जीत रही है, तो फिर वो मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो मज़ा किरकिरा हो, चाहे कोई भी जीत जाए। लेकिन वहीं पर अगर आप थर्ड स्पॉट को देखें, टीम जो थर्ड स्पॉट पे मौजूद थी वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब बाकी तमाम टीम्स, मैं कहूँगा इस पूरी लॉबी में 10 टीम सेकंड थर्ड ऑनवर्ड स्पॉट के लिए कंटेस्ट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही टीम्स हैं जो पहले और दूसरे पायदान के लिए लड़ रही हैं। बिल्कुल अलादीन, और कहीं ना कहीं वो जो सारा कंपटीशन है, सारे इवेंट का जिसकी आप बात करें, मज़ा कहीं ख़राब ना हो जाए, किरकिरा ना हो जाए, वो नहीं होने वाला, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं अब इस मैच में भी कम्प्लीटली A7 स्पोर्ट्स अपने हाथ में इस मैच को नहीं लेकर जा पाई। हाउएवर उन्होंने 10 पॉइंट स्कोर किए हैं और वो वही 1 स्पॉट वंस अगेन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स को अब आने वाले मैचेस के अंदर, जो कि मुश्किल मैचेस हैं। मुश्किल मैचेस अब आ चुके हैं, जहाँ पर कराकिन खेला जाएगा, जहाँ पर सैनहॉक खेला जाएगा। सो कहीं ना कहीं मामलात ख़राब भी हो सकते हैं, और जो फर्स्ट स्पॉट टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स ने अपने लिए हासिल किया था, अब उसको दोबारा से हासिल करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि स्टारवर्ड स्पोर्ट्स इज बैक इन एक्शन, और स्टारवर्ड स्पोर्ट्स का वो जो लॉस्ट मोमेंटम था वो उनको मिल चुका है। तो अब आने वाले मैचेस के अंदर इम्कानात ज़्यादा हैं कि स्टारवर्ड स्पोर्ट्स ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाए। सो वैम्पायर स्पोर्ट्स और अल्फा 7 के लिए अब वो स्पॉट होल्ड करना
मुश्किल है और दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा एक दूसरे को नीचे उतारना। ये जो आपने पॉइंट रेस किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने कि अल्फा 7 ने जिस तरह से अब अपनी लीड को वापस से गेन कर लिया है एक राइट टाइम के ऊपर, वो अब वो उस तरह से अपनी लीड को गेन करते हैं वैम्पायर नजर नहीं आएगी, बिकॉज अब एसटी एक्शन में आ चुकी है। अब क्योंकि टॉप स्पॉट्स के ऊपर हमें एसटी भी नजर आएगी, अब चूंकि हमें टॉप स्पॉट के टॉप पॉइंट्स अब एसटी लेकर जाती हुई नजर आएगी, तो प्रॉब्ली बाकी टीम्स को मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा पॉइंट्स लेने का। लेकिन वहीं पर हमारे सामने जो रिवॉर्ड्स रैंकिंग्स आ रही हैं बिना विनर चिकन डिनर रैंकिंग्स में आप देखें तो इस वक्त के लिए आफ्टर पार्टी शोडाउन के डे 3 के जो यहाँ पर जो हमारे सामने रिवॉर्ड्स की रैंकिंग्स आ रही हैं, अभी तक आज के दिन में ही $30,000 लेकर जा चुके हैं पर स्पोर्ट्स बाय गेटिंग 2 सेकंड डिनर्स और मैच अर्निंग उनकी $10,000 है। अब विकेट रॉन्डर टेलियन ने $14,000 निकाले हैं, थर्ड पर निगमा गैलेक्सी विद $9,000, उसके बाद अल्फा 7 विद $7,000। अल्फा 7 के लिए आज का दिन बहुत वाव नहीं रहा प्राइस पूल की मद में। अल्फा 7 ने आज के दिन कुछ किल्स उठाए हैं, कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन प्राइस पूल आज उस तरह से नहीं लिया। 2 दिन में इस टीम ने $70,000 लिया था और तीसरे दिन के आधे मैचेस के बाद इनफैक्ट आधे से ज्यादा मैचेस उसके अरे वो थोड़ा सा मॉडल भाई के उससे चला जाएगा वापस आ अरे लॉल अरे लॉल कट गया बे। जी आपकी इतनी बड़ी दुकान है और आप कह रहे हो आपके पास चेंज नहीं है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आप चेंज ला के दो कहीं से भी। अरे 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 डिमांडिंग कर और 2000 का वेरी डिमांडिंग डॉबी। भैया ये मेरी हेडेक नहीं है, ये आपकी हेडेक है, आपकी दुकान है कि मेरी है, आप ला के दो, पीनी आप ला के दो। कहां से ला के दूं मैम? बस सब अचानक से कोइंसिडेंस में एक दूसरे के सामने होते क्या लोग? इसका सिनेमैटिक क्यों बन गया ये, या फिर मुझे नहीं रही है। हाँ ना वो समझ नहीं आया सिनेमैटिक की क्या जरूरत है चेंज नहीं। अरे अबे उसके बाद वॉलेट भी कुछ ही गए क्या? नहीं नॉर्मल वॉलेट है कोई बात नहीं मैं पे कर देता हूँ। आप क्यों पे मैच शुरू किया? आप क्यों पे करोगे? वापस दे देना। Do I know you? अरे मैं बल्ब क्या? बलबीर मैं आपके साथ आपकी कोचिंग में पढ़ता हूँ। प्लीज आई हैंडल दिस। भैया आप लाके दो, मैं नहीं जानती। नहीं है मैम। भैया मैं नहीं डॉबी जानती, की आप लाके कोचिंग दो में ना। बंदा बता डॉबी जानती भी नहीं उसे। अरे अरे तेरा डॉबी कितनी डिमांडिंग है, मेरे को चाहिए, मेरे को कोल्ड भी नहीं है, चाहिए मेरे को। हाँ नो 10-11 मेरे को भाई अपने वाला सीन है भाई, घर पे जाके जीपे मत कर रहे हैं तो अभी कर भाई देख यार वो ये कितना प्यार से हेल्प करने आया था, मुंह देख इसका उतर गया भाई पूरा। मैगी भी नहीं खाई। तेरा क्या है डॉबी यार, ऐसा क्यों करा? अरे डॉबी अच्छी पे अभी देख अभी वापस सफेद मांगी यार। डॉबी ऐसा क्यों करा डॉबी? अबे लेज और कोक। अरे भाई इतना बड़ा कोक। तभी ऐसी हो रही हूँ मैं। डॉबी आधा खाया हो? I mean अबे तो खाते खाते आए रहेगी ना क्या यार? अबे पीछे लड़ाई हो रहा है।
मेरा नाम बलवीर। सोमनाथ पीछे नोटिस कर रहा है, देख पीछे। चिप्स चिप्स थैंक्स। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले एक पार्टी में देखा था। Yeah, that was my friend's party, but I have to leave earlier. पढ़ाई करनी होगी ना? No, कोई पढ़ाई नहीं करनी थी यार, वहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी, तो मुझे यहाँ पे बहाना मारना था ना, इसलिए। Anyways, तुम भी डीयू में हो? इसने क्या पूछ लिया? अगर इसे बता दिया कि मैं अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो सारी इज्जत का बाजी पड़ जाएगा। अच्छा, ये इधर नहीं पढ़ता क्या? नहीं, दिल्ली में डीयू एंड ऑल का बहुत ज्यादा वो है। नहीं, मैं भी डीयू में हूँ, फर्स्ट ईयर। क्या है, दूसरे कॉलेज से आया वो इधर। अरे अरे ये वाला खाली छोड़ दिया बे। धक्का मारा है बे टॉपी ने, सीधा धक्का मारा उसको, धक्का मार के साइड कर। देख देख देख। अरे मैच शुरू हो गया, चलो मैच। अरे मैच बंद शुरू। मैच को टाइम है, लूटने तो दो भाई। क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे हो? अरे नंबर लिखो। ये देखो। अरे तो मैं ऐड कर दूंगी। ये कौन सा पैरेलल यूनिवर्स में होता है बे? वही ना भाई, ये कौन सा यूनिवर्स है भाई? स्टंट या स्टन भाई? मैच स्टार्ट है, मैच देखते देखते अबे कितना 4 मिनट बाकी है। स्टंट का यूज या स्टन का यूज? इतना जल्दी नंबर सेव भी कर दिया और ऐड भी कर दिया भाई। इस यूनिवर्स में तो ऐसा लड़का स्माइल देता है भाई, या लड़की दे रही है? हाँ ना, वापस आया देख प्रमोशन। अभी देख रहा है, इधर डॉबी दिखेगी, इधर डॉबी दिखेगी। अभी इसको इधर उधर भी डॉबी दिखेगी, देख व्हाट्सएप टेक्स्ट करेगा। कट गया क्या? ठीक है भाई, स्टन से सब कुछ क्लियर दिखता है। अरे स्टन भाई, हाँ मेरी क्रश भाई बोलती है। फुटस्टेप वगैरह भी ये करता है, अगर प्रॉपर लगे ना मैं बोल रहा है फुटस्टेप वगैरह भी ये करता बात तो है। करी नहीं होगी। आज आज मुझूंगा बेटा तेरे बेड पे, वैसे भी आज टंकी फुल है तेरे यार दी। मैच शुरू हो गया, प्लेन बात आ गया, मैच शुरू हो गया। अरे मैच शुरू हो तो 4 मिनट तो बाकी है। मैच में टाइम है। अरे तुम लोगों को मैं देख रहा हूँ। अबे बताने क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तो सोच। बोल। गिल जैसा है ये लड़का, गिल जैसा है। ये डिट्टो गिल जैसा है भाई, सच में गिल। हर चीज जानने की क्यूरियोसिटी। जोकर बता ना। जोकर बोल, जोकर। बट तू ऐसा काम करा क्या कोई जो मैं तुझसे पूछा था? Sorry, I couldn't reply earlier. Was studying. Oh my God. Anyway, I'll share this number. Good time. नहीं भेज दे। ना दो किसी ने मुझे भेज दे। ज्यादा नहीं हो जाएगा। अरे मैच ये तो अरे जोकर और करता तो भाई है। मैच कोई बात नहीं, कल क्लास में होते हैं। बट इसने हिंदी में लिखा। ओहो, गुच्छी पहने है लेकिन अबे किसी की फाइट हो रही है। थैंक यू चल भाई। तो गाइस डाउनलोड चल भाई लगा ले। ओह, राड और फाल्कन की फाइट हो गई। अबे मेरा कैसे लग गया है? अबे मैंने तो ये लग गया। बस और कोई नहीं। अगर आप पुश और नॉट दिशा कवर देने के लिए आ चुके हैं, ही इज ऑन दैट भाई एसटी का स्प्लिट लिया कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। हाइट पे मौजूद है, कंपाउंड की छत पे रूफटॉप पे मौजूद है, लेकिन असादत इंतजार कर रहे हैं इस वक्त के लिए, वेट कर रहे हैं कि जैसे उनके सामने को प्लेयर ओपन में आता है वो यहाँ पर एक नॉक निकालेंगे जरूर। बट जो कनन के हाथ में मौजूद है मेरे ख्याल से वो यहाँ पर कुछ ज्यादा खासा डैमेज नहीं देने वाली, लेकिन दमार विद दैट टॉमी ग्लोबल स्टेज में मौजूद, वेक्टर सामने प्लेयर के पास मौजूद है कि 1v1 बनता पावरफुल का इसके लिए पावरफुल आगे बढ़ने की। इसके बाद फ्लैश भाई का आखिरी वाला वीडियो निकालते हैं पावरफुल की तरफ से टाइम दोनों साइड पे होंगे, लेकिन नॉक नहीं निकलेगा। हेलो भाई, काफी ज्यादा 7 बजे वैसे भी मैं जा रहा हूँ। बट दे आर वेटिंग, वो गलती नहीं करना चाहते, वो नॉक नहीं देना चाहते, दोनों ही साइड से गलती का इंतजार किया जा रहा है। आई बिलीव फाल्कन्स को कुछ खड़ा करना चाहिए, वो यहां पर चारों तरफ से खेल जरूर है। पहला नॉक निकलता पावरफुल की तरफ से बहुत खूबसूरती के साथ, वेक्टर की सारी बुलेट्स आकर नजर आएंगे। रात के कई तो आगे आते हैं बट वो भी अपनी पोजीशन रिवील करा चाहेंगे। फाल्कन्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रही है।
बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट एलिमिनेशन भाई डी को तो बराबर मिलता है, बट डी बराबर हर मैच में 1 या 2000 डॉलर। फाल्कन के पावरफुल मौजूद है, उनके सामने उनके प्लेयर भी नॉक होते हुए घुटनों पर आ जाएंगे। दमार को रिवाइवल देना काफी ज्यादा रिस्की रहेगा, लेकिन डी के प्लेयर्स 7C भी आ गई। डी के प्लेयर्स, रात के प्लेयर्स अभी तक इंतजार भाई अब तो चल भाई चाहिए भाई 7C 8 किल चल। टीम 7Cs भी आती हुई इस फाइट के तरफ हिस्सा डालने के लिए, लेकिन डी के 4 ही सर घुटनों पर आ जाते हैं। सारंग ने एक भर दिया, कोशिश कर रहे हैं टीम 7Cs के सारंग। अरे 2 किल मिल गया, 3 किल मिल गया अपने को। पूरी तरह से यहाँ पर पिंच डाउन होती हुई 3 से 4 टीम्स के दरमियान, लेकिन अरे सारंग मार दिया। घुटनों पर आते हुए स्प्रे गॉड बैकएंड से कवर प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और फाल्कन्स के आखिरी $5000 भाई स्प्रे गॉड चल। के हाथों फर्स्ट टीम एलिमिनेशन का जो रिवॉर्ड था वो भी टीम 7Cs अपने बैक रात के प्लेयर इस सारे मंजर को देखते हुए, सारी भसड़ को देखते हुए वो अपने आप को किनारा कर वही 7C वो नहीं 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 किल और 5 किल ले लो भाई। ज्यादा बीच के अंदर फंस चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं, इस मैच से एलिमिनेट भी किया जा सकता है, लेकिन 7Cs के प्लेयर के ऊपर अपने क्रॉसेस जमाए हुए के प्लेयर अभी भी इंतजार में है और वो फाइट लेना चाहते हैं। टीम 7Cs भी अच्छे पॉइंट्स अपने लिए इस मैच से निकालना चाहते हैं, लेकिन जंप एंड पंच किया जा रहा है, अपने आप को लो रखा जा रहा है, कोई साउंड जनरेट नहीं करना चाह रहे। डी के प्लेयर्स भी प्रोन डाउन है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लूट की जा रही है। अलादीन की तरफ से क्या अलादीन को अंदाजा है, वहां पर उनका प्लेयर कोई एक प्लेयर उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई गुस्से में आ गए अपने बंदे, एक गोली चलते ही दे दापा। अरे वो मारेगा, मार दिया। टीम रात के प्लेयर थोड़ा घबरा चुके हैं, उनकी वही हालत है जो मेरी हालत है इस टाइम। भाई दो प्लेयर्स को गिराते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। अरे भाई लगाए हुए, ओह माय गॉड। डी वाले तो भाई डी वाले अच्छा खेले। 7 किल्स अभी कंफर्म कर चुके हैं, 4 ही मिनट हुए थे अभी हमें इस मैच में आए हुए को, लेकिन सारंग अकेले प्लेयर है। क्या 1v3 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। गन दिख गया उसका गन दिख गया ना। लेकिन डीई के प्लेयर्स कितने ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं इस वक्त के लिए। स्टिल 7 किल भाई डी सीधा वन फाइट है, बैक एंड पे स्टिक भी आ रही है, लेकिन दे डोंट केयर, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करना चाहते। रात के एक पे साउथ एशिया में डोमिनेट कर दिया भाई डी। कर रहे हैं सारंग 20 स्पॉट हो जाएंगे, टूडल अफसर फिर से उनको स्पॉट करते हैं इस मैच के अंदर। वाकई ही इनकी जो आंखें हैं वो जिसको भी उन आंखों से देखते हैं गोल घुमा रहा है भाई, गोल ही घुमाता रहेगा क्या सारंग। कहना चाहूंगा दिखाई जा रही है, और हर उस प्लेयर की जो उनके सामने आता है उसकी सोल को जो है वो ये सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, निकाल देते हैं, उसकी रूह को जो है वो निकाल देते हैं। लेकिन फिलहाल नाइस सारंग 1v3 अरे दे दिया अरे भाई सारा का रिएक्शन देख रहा है, चिल्लाया कैसा जैसे भाई जोड़ बे डेड आइज गाइस क्या मारा है भाई। बने हुए थे उनको सारंग की चुटकी। नाइस रे सारंग, नाइस। डॉक्टर स्ट्रेंज की याद मुझे आ गई कि प्रेगोड कोई मैच बहुत मारता है, लेकिन सारंग कंसिस्टेंट रहता है। आज के प्लेयर नहीं बच पाएंगे, हर मैच ही 2-3 किल मारता है सारंग। जरूर कैरी ऑन। बीइंग अ डाई हार्ड मार्वल फैन, मैं आपको खुदकुशी की दावत देता हूं। चुटकी थैनोस बजाता। क्या भाई क्या बोल रहे हैं ये? चुटकी थैनोस बजाता, चुटकी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बजाता। मैं आज से आपकी मतलब मैं उसको मैजिक से रिलेट करना चाह रहा था कि मैजिक से रिलेट करना चाह रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं लॉल वैम्पायर बिल्कुल। लेकिन खैर वैम्पायर वाले मर जाएंगे भाई। पैसे हो गए बे वैम्पायर तो है ना। पानी में क्यों चल गए ये लोग, वही तो और क्या करेंगे। क्या पता पानी में दोस्तों मेरा इस बंदे से कोई रोटेशन दे रहे हैं लोग। ठीक है ये भाई साहब ने जो गलत इन्फॉर्मेशन सारंग ने एक और नॉक फिनिश करा, नहीं नॉक करा था, मर गया सारंग मर गया इस मैप में। जी नाइस है सारंग। एनीवेज एक्वामैन बने हुए। अब ये ना कहना अबे क्या है बे प्लीज। नहीं आई नो दैट मैं जानता हूं ये सोन तो मर गया। वो एक्वामैन बने ना बने, आप आज आलिया भट्ट बने, आज आप आलिया भट्ट बने हुए आती। डोंट इवन ट्राई। चल भाई मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। क्या मैंने इसमें कुछ खाने जा रहा हूँ मैं, मंगा लेना। अरे ऊपर जा रहा हूँ, अरे वो वैसे भी जाना है। खैर वो पिज्जा मंगाया वर्कआउट।
नहीं वो लेकिन चलो फिलहाल बात करते हैं इवेंट की जो कि हमारे सामने कौन सा इवेंट बीजीएम है पता नहीं पर नहीं जो डोमिनेटर थे बीटीआर अब वो पता नहीं बिकॉज़ हाइट 7 पे बोल नहीं सकते और जोन बैकएंड से पुश करेगा लेकिन एक ही प्लेयर है ओके टेक्सचर पड़ेगा अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज तो कर चुके हैं लेकिन नॉक नहीं देना अगर उन्होंने यहां पे नॉक दे दिया उनके फिर प्लेयर्स भी नहीं बच पाएंगे बिल्कुल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स क्या के लिए थोड़ा कोई इवेंट है क्या बुट कैंप पे नहीं सेफ साइड पर रहने की कोशिश कर रहे हैं कोई ज्यादा नेसेसरी पीछे ये फिनिश करने जा रहा था अच्छा हुआ भाई दैट शॉटगन क्या ही भरपूर तरीके से इस्तेमाल की जाती है रीलोड पर जाती है शॉटगन और M4 की आखिरी 14 बुलेट्स के अंदर उस आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं ऑल थैंक्स टू प्री फायर की जद में आ जाते हैं डी के प्लेयर्स को शॉटगन जब एक प्लेयर आपका शॉटगन से नॉक होता है तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइज बाय 100 इसमें क्या बोला कौन जीतेगा ऑटोमेटिकली इन प्ले आ जाता है और वन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर है ये वाला इक्वेशन सो कहीं ना कहीं जैसे डी के प्लेयर्स ने फॉल बैक किया और शॉटगन के बाद वो बहुत डीप नहीं था लेकिन फाइट भी नहीं आया तो सेकंड में निकालेंगे आपको रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि दो ही प्लेयर्स रह चुके हैं इसी बात को हम लोग मैच से पहले प्री गेम सेगमेंट के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि अब वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के लिए आने वाले मैचेस में परफॉर्म करना काफी मुश्किल हो जाएगा जैसी स्टारलोड ई-स्पोर्ट्स है और मैप्स हैं जैसे मैदान है यहां पर खेलना काफी मुश्किल है सो 0 किल्स पर रहती हुई वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स ऑलरेडी अपने 2 प्लेयर्स को गवा चुकी है लेकिन टीम स्टारलोड ई-स्पोर्ट्स के टॉप हमें कुछ देर पहले किल फीड के अंदर कुछ नॉक्स एक्सचेंज करते हुए दिखाई दिए बिल्कुल फीड हमने कुछ नॉक्स देखा एक्सचेंज करते हुए इस टीम को लेकिन वहीं पर वैम्पायर स्पोर्ट्स के फ्लोकिट्स को देखिए वो जोन के बाहर गेट कीप करते हैं बीटीआर का बीटीआर टाइम से रियलाइज कर रही है कि उनको फॉल बैक करना पड़ेगा एंड इट्स अ गुड मूव वो सर्कल में चले जाएं बिकॉज़ वो अभी भी कंटेस्ट कर रहे हैं थर्ड मारा सारंग ने देखा 1v3 अगर इस मैच का सेकंड राउंड लेते हैं तो ऑब्वियसली वहां जरूर जाएंगे लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है थर्ड पायदान से वहीं पर R8 वर्सेस LSD की वे कौन सी टीम को मारा सारंग ने उनको डी फेंकनी है अगर ग्रेनेड्स दागे जाते हैं डी को मारा तो भी मौका नहीं बचेगा यहां से बचने का कि वो कुछ करना चाहते हैं दे आर नॉट यूजिंग देयर ग्रेनेड्स वहीं पे शॉटगन लेकर आगे पुश करते हुए टिका कर लेगा चल को डैमेज देते हुए सारंग ओपी ब्रो सारंग ओपी नॉक निकालते हुए प्लेट बैक एंड पीछे अलवर्ट भाई बीटीआर ने कितने किल ले लिए यहां पे दोनों टीम्स एलिमिनेट होती भी बीटीआर यहां पर सब 4 किल्स 3 किल्स यहां से इस फाइट में टोटल में नहीं मेसरी नहीं तो मारा उनके पास पहले से मौजूद थे बहुत शानदार खेला बीटीआर ने सारी फाइट में आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और दोनों ही टीम्स के ऊपर किल्स दागते हुए बुलेट्स दागते हुए किल्स टोटल में ले जाते हैं डाल दे डब्बा भाई एक अपने बिल्कुल और कहीं ना कहीं बीटीआर की तरफ से 6 किल करके मर गए अपन वापस आया जा रहा है 6 किल्स हाई किल्स इस मैच के अंदर अभी तक उनके पास है सर्वाइविंग टीम्स में से लेकिन डीई अपने लिए 7 पॉइंट्स देख हाईएस्ट बोल रहा है ये 7 करके कौन बैठा डी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो प्लेसमेंट के होंगे लेकिन बीटीआर इज लुकिंग प्रीटी गुड लेकिन A7 अलादीन हाउ दिस टीम सर्वाइव्स ये टीम जैसे सर्वाइव करती है वो चीज बहुत ज्यादा दीदी रहती है लेकिन जस्ट लुक एट दैट इन अ सेकंड उस एरिया को वाइप आउट कर दिया जाता है टोटली बीटीआर की स्क्वाड की तरफ से टीम वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं अपने दोनों के दोनों जाबाज खिलाड़ियों के साथ और दो ही टीम्स ऐसी हैं जो कि अभी 2-man सर्वाइवल निकालती हुई हमें दिखाई दे रही है दैट इज टीम S2G एंड टीम VP मत न करना छो भाई यस आउटसाइड द सर्कल भी थे कुछ और एक आधे प्लेयर को नॉक भी किया गया जिनका किल भी कंफर्म कर लिया जा चुका है जिक्स के लॉर्ड ए ड्रॉप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और वो जो रिवॉर्ड है इन मैच रिवॉर्ड वो भी अपने बैकपैक में लेकर जाने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी लॉर्ड की तरफ से थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है कहीं एयर ड्रॉप लूटते हुए उनका क्रेट ना लूट लिया जाए इस मैच में अभी के लिए लॉर्ड कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपना एरिया क्लियर करें जो सामने रिज है एक डेडली रिज है जहां पर टीम PMWI का पूरा स्क्वाड एक अच्छा स्प्लिट लेकर बैठा हुआ है एक अच्छी फॉर्मेशन के साथ मौजूद है एंड कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से अगर लॉर्ड थोड़ी सी भी गलती करते हैं थोड़ी बहुत बाहर आने की कवर से तो उनको उसका खुमियाजा भुगतना पड़े अभी के लिए बीटीआर वेस्टर्न एज के ऊपर मौजूद है सर्कल का शिफ्ट आएगा प्रोबेबली ये थोड़ा सा एज के ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं या प्रोबेबली शायद एक हार्ड शिफ्ट हमें वेस्टर्न साइड के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे अगर ऐसा होता है तो वही हुआ लेकिन अभी के लिए A7 को मुश्किलात के अंदर फंसाया जा सकता है बीटीआर कैन गेट कीप A7 ई-स्पोर्ट्स और A7 एक किल के साथ अभी तक मौजूद है और एहसन कॉन्स्टेंटली मेरे कान भरते हुए मुझे सुनाई दे रहे हैं पीछे से लेकिन अभी के लिए स्पॉट डाउन करने में कामयाब रहते हैं प्रोन डाउन होना पड़ता है बीटीआर का स्प्लिट बहुत बेहतरीन है बीटीआर के जेन फॉस बिल्कुल सामने मौजूद रहते हैं थोड़ी बहुत नेड्स स्पैम करती हुई टीम A7 ई-स्पोर्ट्स का स्क्वाड दिखाई दे रहा है स्टिकी बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन कोई भी आउटिंग जनरेट नहीं की जाएगी टीम A7 ई-स्पोर्ट्स को अपने लिए एरिया क्लियर करवाना पड़ेगा दिस इज द ओनली एंट्रेंस इनसाइड द सर्कल बीटीआर फॉर्म में लग रही है भाई
जहां पर बीटीआर गेट कीप कर रही है और भरपूर तरीके से चौकीदारी की जा रही है इस एरिया के बीटीआर की तरफ से। और जो स्प्लिट है जिससे हाई ग्राउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है बीटीआर की तरफ से, आई रियली बिलीव कि A7 Esports अगर थोड़ी बहुत भी गलती करती है, अगर ओवर एग्रेसिव होते हैं, तो बैक एंड के ऊपर बीटीआर के जक्सी और मिजरी जहां पर मौजूद है वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त नॉक से एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन वीपीई भी इस फाइट का हिस्सा बनने की कोशिश करते हुए शॉटगन के कुछ मजीद इस्तेमाल हमें दिखाई दिया जा रहा है टीम S2G के प्लेयर्स की तरफ से। ब्लैक जोन भी शुरू हो चुका है, सर्कल भी क्लोज इन करने जा रहा है और फोर्थ फेज ऑफ द सर्कल हमें कुछ ही देर के अंदर दिखाई देगा। वीपीई अभी के लिए दे आर जस्ट स्विगी में कूपन नहीं था, जोमेटो में मिला 100 रुपए। वेटिंग गेम खेली जा रही है उनकी तरफ से। कोशिश करेंगे कि जाते जाते दो प्लेयर्स कुछ ना कुछ इदाद इस मैच से हासिल कर जाएं। लाजिम है, फर्ज है उनके ऊपर कि उनको जाते जाते कुछ 3 से 4 पॉइंट्स अलादीन उनको लेकर जाने ही है। बिल्कुल 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 3 से 4 पॉइंट एटलीस्ट उनको लेने जरूर है। लेकिन आप देखें सालवाड़ी स्पोर्ट्स चौथे पायदान तक खदेड़े हुए वीपी तो सुमड़ी में बैठ गए भाई। इस वक्त एक अच्छा मैच उनके लिए ये भी बन सकता है। वहीं पर निगमा गैलेक्सी की बात करें, मेरे सामने मौजूद बीटीआर स्टिल सर्वाइविंग टीम S2G खेलती हुई नजर आएगी। टीम बीटीआर का स्प्लिट काफ़ी अच्छा है अभी के लिए और उनके अगर आप देखें तो बैक साइड पे कोई भी टीम मौजूद नहीं है। सर्कल उनके बैक साइड पे जरूर है जो कि उनको एक कहने के एक मैसेज दे रहा है कि आपका जो वो आपकी बैक कंप्लीटली क्लियर A7 गई एक नॉक निकालते हुए करियो को यहाँ पर जब डाउन किया जाएगा। E7 अपना मेन प्लेयर, अपना वाइटल प्लेयर इस मैच में लूज करते हुए एंड ST इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। मैं भावुक हो गया था। लेकिन बात करेंगे A7 की, फिलहाल रिवो जोन के बाहर मौजूद है। वो जानते हैं कि जैसे ही वो आगे आएंगे बीटीआर के प्लेयर्स उनके ऊपर बिकल्स उठाएंगे। A7 को अब कुछ नहीं बचा सकता। A7 की एलिमिनेशन इस मैच से पक्की हो चुकी है। अब A7 एक ही काम कर सकती है, या तो कोई बहुत बड़ा फ्लैंक देकर बीटीआर की नजरों से पानी से जा रहा है एक बंदा A7 का। बैटल करें, अच्छा डिसीजन है उसका वो। जब पुश करे तब ये टीम जब सर्कल में जाने की कोशिश करे। लेकिन हेडफोन पहनकर तो भाई गले पे दर्द हो जाता है। अभी भी सर्कल में और बीटीआर यहां से अच्छा खेल सकती है। साइलेंस बीटीआर यहां पर गेट कीप कर सकती है, इंतजार कर सकती है कि हील्स खत्म हो जाए टीम A7 की, उसके बाद A7 के ऊपर मजीद किल्स उठाए जाएं। लेकिन यहां बात करेंगे S2G की, जिनके साइलेंस की तरफ स्पेस आता है। साइलेंस 2 नॉक्स निकालते हैं, पंच करके आगे जा रहे हैं ताकि इनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। मॉलो स्पैम करते हुए फ्री के ऊपर नजर आएंगे इस वक्त के लिए टीम S2G के एक और प्लेयर। लेकिन टीम निगमा गैलेक्सी किस तरह से इसको कंटेन करती है, ये इनकी एलिमिनेशन या इनकी जिंदगी को जो है वो डिसाइड करने वाला है इस मैच। बिल्कुल, और वो जो $10,000 का इनाम है पर चिकन डिनर वो भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है टीम S2G के प्लेयर्स की तरफ से। 2 ही भाई साइलेंस तो बाप रे बाप, पाओगे शॉटगन से रिपीट नहीं बच पाओगे। बहुत एग्रो सामने रहते हो, दैट वाज सो डेड। साइलेंस बहुत एग्रो है भाई। निगमा गैलेक्सी कम बैक कर ही नहीं सकी। खाना खाओ भाई, कैमरा 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स पर हावी हो जाते हैं और निगमा गैलेक्सी इस मैच से हमें खैरबाद कह जाती है। टीम DWG के प्लेयर्स अभी भी सरवाइव करते हुए तीनों के तीनों खिलाड़ियों के साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन आउटसाइड द सर्कल हैं और साइलेंस की तरफ से 1v4 किया जाता है। ये खबर मुझे पहुंची है, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंची है कि उनकी तरफ से 1v4 किया गया है निगमा गैलेक्सी को इस मैच में। और जो एग्रेशन हमें आज के आखिरी मैचेस में देखने को मिल रहा है, दैट इज अमेजिंग, बहुत ही दीदनी है। जी हाँ, बहुत दीदनी है ये अग्रेशन। कहीं ना कहीं हम इसकी उम्मीद भी लगा रहे थे क्योंकि आखिरी मैच रेवा तो हील बैटल कर रहा है भाई, पानी वाला तो मर गया बंदा। और इस चक्कर में काफी टीम अग्रेसिव हो जाती है, जिस हमने डी को ये तो छोड़ेंगे ही नहीं, कैसे देख रही है अभी तक थे टीम 7 सीज के ऊपर। सॉरी पर वो बच तो जाएगा, ज्यादा डैमेज है नहीं। 4 किल्स उन्होंने अच्छा वो इस रेजी एरिया पर निकाले थे। आई बिलीव इट वाज नॉट के आखिरी पैर जहां से उनको एलिमिनेट किया, वो काफी शानदार 3 किलो निकाले थे। निकाल सकते हुई बीच में पता है 8 किलो रेडी थे। मेरे ख्याल से अगर इस मैच में जिंदा रहती थी 15 किलो तक डी शबल ले सकती थी, बट ओवर प्रेशर उनको जब कॉस्ट करता हुआ नजर आता है। और परफॉर्मेंस सारंग की तरफ से दी गई परफॉर्मेंस अपनी जो टीम है उनकी आन बान शान बनकर जाते हुए इस मैच के अंदर भाई। इसमें जितने हील्स है ना, इस मैच से ये आराम से 2 जोन सरवाइव करेगा। और सर्वाइवल टीम्स के अंदर बीटीआर मौजूद है, 4 प्लेयर्स जिंदा हैं। टामो गेमिंग के 3 पर्सन जिंदा हैं इस मैच के अंदर। S2G विद देयर 2 men, वैम्पायर्स विद देयर 2 men एंड E7 विद देयर लास्ट मैन स्टैंडिंग। चिकन डिनर की प्रोबेबिलिटी इस वक्त के लिए 1-3 बीटीआर के लिए, क्योंकि उनके पास हाइट एडवांटेज काफी अच्छा है। वहीं पर उनकी नजर चारों तरफ है और वो काफी किल्स पटोर रहे हैं। बट यहाँ पर बात करेंगे S2G के प्लेयर की, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि DWG के संग ओपन में आए, कवर छोड़कर बाहर आए और उनके ऊपर नॉक्स निकालकर किल कंफर्म किया जाए। वहीं पर बात करेंगे हम पर की 2 प्लेयर्स की बचे हुए 2 प्लेयर आए भी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फ्लुक इट का स्पेस आता है एंड साइलेंस ने जो काम निगमा गैलेक्सी के साथ किया था, फ्लुक इट वही चीज साइलेंस बेचारा साइलेंस कार्मा हिटिंग हिम
वेरी हार्ड, और इस मैच से उनको सीधा लॉबी भेजता हुआ ये कारनामा नजर आता है। अब S2G के आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, लास्ट मैन के ऊपर यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल, और टीम VPE वैम्पायर स्पोर्ट्स एक किल तो अपने बैकपैक में, एक पॉइंट अपने लिए लेकर जा चुके हैं। DWG जूनी और ओंगा एग्रेस करते हुए, और S2G के प्लेयर के पास बहुत ही डेडली वेपन मौजूद है, शॉटगन भी इनके पास रहने वाली है, सो कहीं ना कहीं सामना किया जा सकता है। DWG के एक प्लेयर बहुत ही पीछे मौजूद है, संघ की तरफ से एक बैक एंड से कवर फायर प्रोवाइड किया जा सकता है प्लेयर्स को। अगर तो आउटसाइड द ओपन टीम S2G के प्लेयर बाहर आते हैं, MC तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है टीम DWG की तरफ से, लेकिन शॉटगन वंस अगेन इन प्ले, क्या 1v2 निकलकर एक बार फिर से सामने आने वाला है। शॉटगन बहुत ही ओवरपावर्ड, शॉटगन के पास देने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्लेयर ने बहुत बेहतरीन सामना किया। ओंगा उनको रियलाइज हो चुका था कि अगर वो ज्यादा एग्रेस करते हैं तो शॉटगन से एलिमिनेट हो सकते हैं। बिगेट्रॉन चिकन भाई, बिगेट्रॉन चिकन किया उस ब्रोकन वॉल का, बिगेट्रॉन चिकन मारेगी। लेकिन A7 के रिवो को देखें आप, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी का मुजाहरा किया जा रहा है उनकी तरफ से। रिवो वहां पर होल्ड कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि BTR यहाँ से फॉल बैक कर जाए, और तब तक उनके पास स्प्लिट देख के समझ आ रहा है, और जैसे BTR के प्लेयर्स वो सिल्वर छोड़ेंगे उसके बाद लास्ट सर्कल में इतना बड़ा स्प्लिट करके रखा है की कोशिश की जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर सर्कल में इनको मिलने वाली है, बिकॉज़ उनका डैमेज काफी बढ़ रहा है, क्या अगला ज़ोन भी शुरू होने वाला है। लेकिन BTR अभी भी हिल के किंग्स बने हुए, 8 किल्स उनके पास मौजूद हैं। इस मैच के इख्तिताम तक 15 किल्स तो वो कर जाएंगे, लेकिन BTR के प्लेयर रिवो के हाथों जूझते हुए नजर आएंगे। काफी डैमेज पड़ता हुआ, इस वक्त लिक्विड को काफी लो हो जाएंगे, नॉक किया जाता है, किल कंफर्म नहीं करते, पहले किट लगाएंगे उसके बाद किल कंफर्म करेंगे। जाते जाते एक और किल सिक्योर करने की कोशिश में हो जाएंगे रिवो कामयाब, लेकिन वो खुद सर्कल में नहीं जा पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो जानते थे शायद कि उनको सर्कल में जगह दी ही नहीं जाएगी BTR की तरफ से, और इसीलिए उन्होंने पहले एग्रेसिव होकर किल कंफर्म करने की कोशिश की। BTR के प्लेयर काफी जल्दी यहाँ पर स्मोक डिप्लॉय करके आ जरूर रहे थे कवर देने, बट जक्सी को रिवाइवल देने नहीं दिया गया, जक्सी की तरफ से लिक्विड को रिवाइवल देने नहीं दिया गया, रिवो की तरफ से मौका ही नहीं फराहम किया जाता। नाउ ही हैज टू मूव इनसाइड द सर्कल, उनकी तरफ से अरे वो अपने पे सारा ये ले लिया इनसाइड द सर्कल, बिकॉज़ BTR हिल पे मौजूद है एंड दे आर वेटिंग के जैसे ही रिवो बाहर आए उनको यहाँ पर डैमेज देके एलिमिनेट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली रिवो के पास किट्स भी मौजूद नहीं है, दिस वाज द लास्ट किट ही हैड, और कोई क्रिएट और 2 मिल गए भाई से, था 2 किट्स उनको मिल जाती हैं। ही कैन एक्चुअली गेट इनसाइड द सर्कल, लेकिन 130 मीटर आप 2 किट्स के साथ प्रोबेबली नहीं जा पाएंगे क्योंकि सर्कल काफी डैमेज दे रहा है, एंड BTR इज आल्सो देयर। अगर आप जा भी पाते हैं तो BTR आपको रास्ते में रोक लेगी। इस जोन के बाद नहीं पहुंच पाएगा, डायमंड और VP की फाइट होगी, पड़ेगा जो मर्जी वो करे, चाहे इस मैच के अंदर अकेला प्लेयर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। अरे अपने 2 मैन प्लेयर्स के साथ टीम TWG के प्लेयर्स के आमने सामने आते हुए भारी भर दिया भाई, रिवो जाते जाते एक और अगर ये मिल जाएगा ना किल एक और कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं, और ऑडियंस की तरफ से अपलॉड भी किया गया उनको। अभी के लिए टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स मौजूद है, DWG के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं उनको गेट कीप करने की, और DWG के प्लेयर्स इनफैक्ट टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स गेट कीप कर रही है। क्या फ्लूक अपने को कुछ दिखाएगा कुछ? अरे नहीं इनको पता है, लेकिन सर्कल के अंदर जाना है, दोनों स्क्वाड पता है उन लोगों को, एक लूप के अंदर फंस चुके हैं, एक दूसरे के साथ बन चुका है, कोई भी अकेला यहाँ से सर्कल के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन बहुत खूबसूरत रेड डॉट का इस्तेमाल M416 एक प्लेयर को गिराने में कामयाब, लेकिन बैक एंड के ऊपर बैक रिज पर उसके पीछे BTR का स्क्वाड भी इंतजार करता है, लेकिन एग्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वैम्पायर स्पोर्ट्स अरे फ्लूक 1v3 करना चाहते हैं, लेकिन नहीं एक प्लेयर को एलिमिनेट करती हुई दूसरे प्लेयर वैम्पायर थर्ड आई, अनफॉर्चुनेटली थर्ड के 4 पॉइंट और कितने किल थे उनके। अपना नाम लिखने के लिए इस मैच के ऊपर चिकन डिनर करने के लिए 9 किल्स ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, एक किल तो मिल गया करना है DWG का। एग्जैक्टली एक किल उनको कंफर्म करना है इस वक्त। जरा भाई बोला था BTR ऐसे कर मारेगा, प्रोबेबिलिटी के साथ उनके पास ही मौजूद है, VP को 2 अपने किल्स मिल गए, जोन से भाई बोला था BTR ऐसे कर मारेगा, नहीं देते वो किल, एंड फाइनली चल निकाल साइड ऑफ विकेट ऑन बड़े एलियंस एंड दे आर डिस्काउंट निकाल, फाइनली चिकन डिनर्स निकाला BTR के फैंस, लेकिन अभी भाई क्योंकि अभी तक BTR को चिकन निकालता हुआ नहीं देख पाए, लेकिन फाइनली वो जो मौका था, वो जो लम्हा था वो आ चुका है, और इस लम्हे को एंजॉय कीजिए। आदि गाने बजाता हुआ नहीं आता अभी जिस तरह की BTR की परफॉर्मेंस उसके बाद तो बार नहीं आ पाया, लेकिन आखिरी मैच और 7 सीज का मैच, क्या रिवायत बरकरार रहेगी? क्या 7 सीज एक बार फिर से अच्छा कंटेनर लेकर ये बताएगी कि पूरा टूर्नामेंट कोई भी ले जाए, आखिरी मैच इंडिया का ही होगा। किया हाँ पता नहीं, एक और मैच होगा शायद से, लास्ट ही होगा, ठीक है।
हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो सॉरी कॉल हाँ बोलो चलते हैं बंदी करते हैं लास्ट मैच ही तो बचा है देख के जा लेना नहीं नहीं मैं जा रहा मेरा 2 बजे मैं भी जा रहा भाई बाय गाइस बाय गाइस बाय बाय लाला तो बाय बाय क्या स्ट्रीम बंद कर रहा होगा ना हाँ बाय सॉन्ग बाय प्रिंस बाय जो बाय 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 2 मैच देखने के एक सेकंड रुको भाई मैं पूछ कर आता हूँ पता है क्या सीन अगर अभी नहीं होगा तो ऑफ नहीं करूँगा मैं कितने बजे पूछ लेता हूँ Make that pussy poppin', do it how I want it. Often, often, girl, I do this often. Make that pussy do it how I want it. Often, I do this often. Make that pussy poppin', do it how I want it. Often, infatuated by the fame status. She wanna ride inside the G-Class Grey-Matic. I come around, she leave that nigga like he ain't matter. That girl been drinking all day, need a change bladder. She just happy that the crew back in town. She about to go downtown for a whole hour. If I had her, you can have her, man, it don't matter. I'm never sour, I'm just smoking something much louder. Ask me if I do this every day, I said often. That's how many times she rode the wave, not so often. Bitches down to do it either way, to do it either way. To do it either way, often. ये देखा जाएगा So Mao, which is cat. Mao means cat in Chinese. Mao Mao. Zizi, Suki, and Chun. Suki and Chun-Si. RG 排名分再进一步。出场这个位置很难受，只有一棵 Yeah, 树。 Mao used to be the 左边被打，右边也被打。 Mao isn't the IGL anymore. 哦，被队友补枪了，那这一波打倒好像也没有作用啊。虽然战先扶一手，舒展应该也爬不回去了。这个位置稍稍动一步，自己的屁股都会露在外面。就看这一波。Alright, we don't care about these teams except for maybe TT. TT. ये लोग चाइना भी आ गए क्या इतनी जल्दी उड़कर RSG वाले फटाफट अच्छा हाँ आ ही गए होंगे क्या ही करेंगे वहाँ पर I'm not sure how it works if whoever gets first, if they could play, if they don't qualify for the league prize pool. I'm not sure how it all works. 174 और 147 नोवा भाई भाई टॉप 4 में ही है कंपटीशन बाकी तो नीचे वाले लोग Thanks for sharing a lot of info, dude. बहुत नीचे No problem, man. My chat knows more than I do, honestly. If you have any questions regarding PEO or anything, my chat knows more than I do. I often have to ask the chat or read the chat for the correct answers. 要不阿杰咱把这个背包给卸下来呗。 Flowers 背包那就没办法。花痴手里物资上还是比较窘迫的，只有38。RSG could win this match. 3支队伍4打3打3，那唯一满边 RS 技能踩入山头，但是没有防区作为掩体的情况下，踩入一个边缘地带。 What about questions about love? I'm lonely, Zute help. Bro, isn't Japan one of the loneliest countries? Like people struggle to find like real connections. बंद कर दूं क्या? RSG 来说啊，他的山头就排走了，他能够去的位置只有可能是围墙。从篱笆庄慢慢的向天霸这个方向。但你去到围墙之后，你就是कौन सा कोई? 只能伏地。关键是弟弟和闪电，他这个高点虽然说在上一个圈里面。No, Justice is like tired of the same questions over and over and over and over. 好的。圈里的2支队伍在圈，完全不用急。
Dude, 6 points separating SMG, LGD, and TJB. 6 points, man. 收起来，已经集结，已经 It's 汇 so 合，也就 close. 意味着这一波绝对是要架枪撞北京 JD 一家的防区了。现在从烟雾弹上来讲，天霸有18颗烟雾弹， LGD 而 big RSG dick 没 this 有一 last 点点 game. 烟了 They， 来了， capped 已经启动了。 TJB in the blue zone 两边 so 互相 hard. 的捏了一颗接车 And then 雷， they 这个 somehow 接车 fought 雷 their 是一 way 个 in. 预判。 知道对方会在那个位置上落位，而且也成功了，炸倒了半天，花痴这个残血，格子也被放倒。小小阔这个老将的经验实在是太恐怖了，他打眼一看就知道 RSG 要在那里落位。龙仔被炸倒之后，这个时候天霸已经可以出手了。 What just happened? What is that? 1v1? YDD 直接驱车 Now 赶 it's 到 a 1v3. RSG 还是凭借着自己的人数优势将这个战斗解决，但是已经倒地3人的情况下，弟弟这一波 Too much stress, man. Too much stress. अरे RSG मर गई. What the fuck? Tianba. 也是配合自己的队友领域收下了弟弟。是的，让我们恭喜苏州天霸拿下今天最后一局比赛的胜利。这场比赛 RSG ने क्या किया इधर बाजी बाजी की वजह से देख भी Justice नहीं is पाया. like tired of the same questions. Dude, 6 points. 已经急了，现在从来了，这 Fought 雷 their 是 way 一个 in. Tianba अच्छा RSG ने इधर push किया. 而且也成功了，炸倒了半天，花痴这个残血，格子也被放倒。小小阔这个老将的经验实在是太恐怖了，他打眼一看就知道 RSG 要在那里落位。龙仔被炸倒之后，这个时候天霸已经可以出手了。 What just happened? What is that? 1v1? YDD 直接驱车 Now 赶 it's 到 a 1v3. 还是凭借着自己的人数优势将这个战斗解决，但是已经倒地3人的情况下，弟弟这一波只能去拿分。YDD 得先补，最后也是配合自己的队友领域。 नोआ तो I guess जीत चुकी है भाई. We'll see. We'll see who qualifies to PMGC. 两边打完之后，信息记得非常准确。 कितने स्लॉट्स है PMGC के? अच्छा एक ही स्लॉट है क्या? 3-4 का है. Percent of Japan's population is 65 plus. Oh damn. 成功如愿以偿拿到这击。 अच्छा RSG चाइना से ही खेली थी. LOL. 失去了最后争夺冠军的机会，但不得不说，我们还是非常尊敬这支战队，毕竟在这个赛季失去了自己的 Alright, I'll see you guys. Everyone take 队 care. 友选手之后呢， I'll see you all tomorrow. I'll leave the stream on for a little bit so you guys can see the scores and everything. But final day tomorrow. Take care, everyone. नोआ भाई नोआ क्वालिफाई कर गई. एक स्लॉट है तो. PMGC. GC. नोआ आएगी भाई. 所以说，我觉得天霸就是从经验上来讲啊，包括说从运营上来讲，可能并不是那么的。 4 slots, 1 in direct finals. Oh, okay. 4 slot है. Damn. तब तो ऑलरेडी आई गेस हो चुका है 4 स्लॉट का, मतलब उतना भारी कमबैक तो कोई दिख नहीं रहा है किसी का. टोंगजाबाओ, LGD और SMG. नोवा, टोंगजाबाओ, LGD, SMG. 或者说昨天比较低迷的一个状态啊，而再一次的被拉近，反倒是说呢继续保持住了昨天这个。 GG सन. को एक भारी सरप्राइज दे सकती है नेशनल्स में आती है। S2G और R8 जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं फिलहाल एक सरप्राइज देने के लिए टीम R8 या फिर अपने एक बंदे का ड्रॉप फाइट हुआ है किसी के साथ. बीटीआर के ज़क्सी कहीं ना कहीं फंस चुके हैं टीम फाल्कन्स के बीच में. नोआ इन PMGC फाइनल्स. नोआ का फिर भी ठीक है भाई, पता है PMGC फाइनल में देने का. काफी ज्यादा लो कर दिया जा चुका है उनको, लेकिन फाल्कन्स के कुछ प्लेयर्स नोआ इज नोआ मैन चेज करने के लिए जा रहे हैं एंड दे रियली डोंट वांट टू लूज दिस स्किल, जो कि उनके बिल्कुल फाइनल पे बैक एंड से बीटीआर के एक डिफरेंट प्लेयर बहुत अच्छे तरीके से लो एचपी करते नहीं देना चाहिए किसी को. फाइनल पे देने में बहुत बीटी होती है पता है, क्योंकि वो टीम किसी पहली बार ही खेलती है एक तो अपने बैकपैक में लेकर जाते हुए एकदम फुल रैंडम. $1000 भी अपनी किल टैली के अंदर ऐड किया जाएगा यहाँ पर. चल भाई अपने लौंडे 30 के, मैं वॉलेट की बात करूंगा, अपने लौंडे 30 के लेकर बैठे हैं और किल जो है वो अपनी किल टैली के अंदर ऐड किया जाएगा. लेकिन फाल्कन्स थोड़ा वो अग्रेसिव हुए नेशनल्स के अंदर, दे रियलाइज कि विद इन 2 मिनट्स इतनी जल्दी एब्सोल्यूट डोमिनेशन बाय नोआ. हां भाई इस बार गुस्सा तो है नोआ वाले भाई, दैट पुश बट लिक्विड की तरफ से शट डाउन भारी किया जाता है उस पुश को, डिफरेंस बना के रखा है इन लोगों ने. वापस से पुश बैक कर दिया जाता है टीम फाल्कन ई स्पोर्ट्स को. लेकिन सर्कल
अभी के लिए इस मैप के हिस्से के अंदर मौजूद नहीं है। और जिस तरह सर्कल बना है, अगेन मैं अपनी बात जो है उसकी तरफ जाऊंगा वापस। अल्फा 7 के लिए आप चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही हैं। आई थॉट कि अल्फा 7 अपन नॉर्दर्न साइड मोंगनाई की तरफ ड्रॉप लेगी, लेकिन अल्फा 7 बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट साइड के ऊपर ड्रॉप लेती है, जो अगेन मुश्किलात खड़ी करेगी यहाँ पर। लेकिन अलादीन अपने लिए $2000 जाते हुए नहीं देखना चाहते थे हाथ से, एंड ही मेड श्योर कि वो ये $2000 जो है वो कंफर्म करें और अपनी टीम के लिए एक किल भी कंफर्म करें। सो 7 सीज looking really promising in the start of the match। अभी तक के लिए उनकी कोई 4v4 फाइट उस तरह से नहीं बनी, बट आई बिलीव हातिन के अंदर जब तक ये टीम रहेगी, they will have a fair chance कि वो इस मैच को जीत कर जाएं। बिल्कुल एहसन, और कहीं ना कहीं ये मैच बहुत ही अहमियत का हामिल रहने वाला। टीम Oh my रात के God! प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली क्रॉसेस के अंदर आते हुए टीम R8 के प्लेयर्स 2 किल्स अपने कंफर्म करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि रिवाइवल का तो कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। किल कंफर्म किया जाएगा, एक अच्छा किल अपने बैकपैक में लेकर जाते हुए टीम R8 के प्लेयर्स। बैक एंड से DWG से थोड़ा बहुत बचना पड़ेगा। DWG के प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली स्काउट कर रहे हैं इस एरिया को। टीम S2G भी बैक एंड के ऊपर मौजूद है। R8 के प्लेयर्स व्हीकल की आवाज़ सुन चुके हैं और ट्रेस किया जा रहा है उस साउंड को, लेकिन फॉरेस्ट गलती नहीं करना चाह रहे। एक हार्ड कवर के पीछे, एक स्लाइड से रिज के कवर के पीछे अपने व्हीकल को पार्क किया गया है। चाबियां निकाल कर जेब में डाल ली गई हैं। जस्ट लुक एट हिम हाउ फोकस्ड ही इज राइट नाउ। और स्काउट कर रहे हैं भरपूर तरीके से, लेकिन जो करीब प्लेयर हैं टीम R8 के, उनसे ज्यादा बचना पड़ेगा। और कॉन्स्टेंटली क्रॉसेस सेट किए जा रहे हैं, आंखें जमाई जा रही हैं प्लेस पर। R8 के प्लेयर को भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना हार्मनी है क्या इस पे? लोअर ग्राउंड पर है टीम DWG के प्लेयर, उनको टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फॉरेस्ट वहां से रवानगी इख्तियार करेंगे। गाइस आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी स्ट्रीम पर जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, लाजमी लाइक कर दें, क्योंकि आज के आखिरी दिन के 2 मैचेस हैं। उसके बाद ना जाने कब आपको हमारी आवाज़ सुनने को मिले। खासकर मैं इंडियन ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा है, जाते जाते दिल खुश कर दो शहजादों। लेकिन अभी के लिए टीम R8 के प्लेयर्स अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा किल स्कोरिंग करने का। लेकिन DWG के प्लेयर्स कुछ जज्बात पर पानी फेरते हुए टीम R8 के प्लेयर्स की एक सरप्राइजिंग एलिमिनेशन निकलकर सामने आती हुई। बिल्कुल फॉरेस्ट इस पोजीशन पे आए और वो किल ना लेके जाएं, कैसे हो सकता है? आपने कल भी देखा कि एक और R8 का एरिया S2G से एक और नॉक भी हो गया। बट दिस टाइम अराउंड S2G पैराडाइज से फाइट बाहर ला चुकी है। दिस टाइम अराउंड उन्होंने प्रेस्टीज भी नॉक कर दिया। CR7 इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। S2G को इस चीज का आइडिया नहीं है, क्योंकि R8 के एक प्लेयर जो एलिमिनेट हुए वो सो पॉसिबली 2v4 सिचुएशन समझकर यहाँ पर पुश किया जाएगा टीम S2G की तरफ से। बट यहाँ पर R8 दे आर स्ट्रगलिंग और स्मोक के अंदर ही शॉटगन का पटका पड़ जाता है। यहाँ पर 7C चिकन सानॉक R8 CR7 के ऊपर। लेट्स सी, देखा जाए जोन तो है उन पे। $5000 जो है वो ले जाते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट देखा जाए किधर है। फॉरेस्ट इज स्टिल आउट देयर, जो इस सारी सिचुएशन को देख रहा है और सारी इंफॉर्मेशन जरूर रिले की जा रही होगी। भाई मेरे को तो देखना है भाई कौन जीतेगा। काफी करीब मौजूद है। संघ को इंफॉर्मेशन बहुत भारी सीन चल रहा है, 10 पॉइंट का डिफरेंस है और किल्स भी उठाने की कोशिश उन में आपको पोजीशन करेगी यहाँ पर आदि। अल्फा 7 और बिल्कुल और S2G इज लुकिंग प्रीटी गुड राइट नाउ। सर्कल को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो बिल्कुल वेस्टर्न साइड पर सर्कल गया, जैसा सर्कल S2G बहुत आग्रो है, बहुत आग्रो मतलब सर्कल के अंदर आने के लिए। और फिलहाल वाटर से रोटेशन उनकी तरफ से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्की मूव हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो वाटर से रोटेट करेंगे सीधा उनको कैंप अल्फा आइलैंड पर आना है, और वहां तक आने के लिए उनको 7 सीज के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जो कि कोस्टल एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से संभालती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन फर्स्ट एयर ड्रॉप कलेक्ट कर लिया जाएगा। टीम 7 सीज थोड़े नॉटी होते हुए इस मैच के अंदर सारे के सारे इन मैच रिवॉर्ड्स और जितने भी डॉलर्स यहाँ पर रखे गए हैं वो अपने लिए लेकर जाना चाहते हैं। मयंक सोनी शाउट आउट टू यू मेरे भाई। ऑब्वियसली दैट्स अ गुड थिंग। हाउ मेनी मैचेस लेफ्ट? इसके बाद एक और है। DWG का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेट थ्रो किया जाता है और प्रोजेक्टाइल नजर आ गया होगा। दोनों ही प्लेयर्स को थोड़ा बहुत डैमेज करेगा ये नेट। डैमेज जरूर पड़ता है DWG के संग अपने आप को रिपोजिशन करने में कामयाब हो चुके हैं। इसके बाद एक और ये सेकंड लास्ट मैच है। उनके सामने 2 प्लेयर्स मौजूद हैं, अदरवाइज DWG चाइना ST के प्लेयर्स का नाम बताओ लाला। लेट्स सी, नहीं पता भाई मुझे। नॉक निकलेगा, चीजें थोड़ी सी चेंज होती हुई हमें नजर आएगी यहाँ पर। एंड DWG पॉसिबली यस ब्रो एग्रेसिव तुझे बैठने क्या इधर?
जी बिल्कुल ऐसे और कहीं ना कहीं सर्कल एक बहुत सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट लेकर जाता है। पहले सर्कल को मद्देनजर रखते हुए जहां पर 50% एरिया वाटर का वीपी था, नॉन वीपी प्लेएबल भाई था, तो कहीं मेरे को ना लग रहा कहीं है इधर का ही सेकंड जोन फटेगा सर्कल कहीं वीपी के साइड, सेंट्रलाइज्ड ही होता या है। तो जबकि फिर पानी का एरिया जाएगा थोड़ा इधर शुमार होता है 50% होता है 40% आते होता हैं है, तो वापस से। सर्कल नेक्स्ट शिफ्ट सेंट्रलाइज लेता है। लेकिन यहाँ पर बेचारा एक भाई मुकाबला रात बनता का हुआ बंदा 1v1 सनसनी दूर से खेज पड़ रही है उसे, बैक कॉल ओह करने फंस की गया कोशिश वो, की जाएगी और मजबूर कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं इतना इजाजत दी दुख जाती होगा की तरफ से नॉक किया दूर जाता है से टीम पड़ रही है रात भाई, के पता प्लेयर्स को है फॉरेस्ट को स्टॉलवर्ट डिटैच मार करते रही है हुए, वहां से। और प्रोन डाउन होने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है। हार्ड कवर के अंदर चले तो गए हैं, लेकिन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ये दोनों टीम्स, क्योंकि स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स के क्रॉसेस जम चुके हैं और एक लॉन्ग और रेंज नीचे से स्टेबलाइज्ड S2G प्रोन डाउन ये तो होकर मरा स्प्रे देने की रात स्क्राई द्वारा। की तरफ से कोशिश की गई इनको, इन सारी टीम्स को और क्राई करवाने की, और क्राई करवाने में थोड़ा सा कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन देशा बच जाते हैं, किस्मत साथ दे देती मरा है। मरा राइट ऑन मरा टाइम प्रोन ओह डाउन होकर बुलेट्स को डॉज करने में कामयाब रह जाते हैं। एक और अरे और भाई पूरा का पूरा टीम, पूरी की पूरी टीम इतना इस मैच से स्ट्रगल एलिमिनेट हो देशा के सकती है। जिंदगी में। बिल्कुल लेट्स सी किल कंफर्मेशन जो है आई बिलीव डीडब्ल्यूजी के बैकपैक में जाती है। S2G जो पहले ही 3 किल्स ले चुकी है R8 के ऊपर, दे आर लुकिंग फॉर मोर। सर्कल जो है वो जिस साइड पे शिफ्ट ले रहा है, आधी पॉसिबली हमें जो है वो वापस से कैंप अल्फा की तरफ जाना पड़े, और टीम्स जो है उस चीज़ के लिए रेडी हैं। क्रॉसिंग का टाइम आ चुका है, लेकिन क्रॉसिंग से पहले जो रास्ते में अटकाए गए रोड़े जो हैं उनको क्लियर आउट करना है S2G को, और S2G यहाँ पर वो करती हुई नजर भी आ सकती है। लेकिन DWG आई बिलीव अपना एक प्लेयर उन्होंने निशल्स के अंदर लूज किया 7 सीज के हाथों। इन 7 सीज के हाथों ये प्लेयर लूज करना DWG को थोड़ा बैक फुट पे ला चुका है। DWG उस तरह से एग्रेस नहीं कर रही जिस तरह हम उनको देखते हैं, लेकिन S2G के हेमसी अब वो काफी करीब जा चुके हैं DW के प्लेयर्स के ऊपर। DWG के प्लेयर आखिरी प्लेयर को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, बट दे हैव नो आइडिया कि एमसी यहाँ पर मौजूद है। ओम्बा को यहाँ पर डाउन किया जाता है एमसी की तरफ से, फॉरेस्ट को भी काफी ज्यादा डैमेज दिया जाता है, लेकिन ओम्बा कवर में जाने में कामयाब हो चुके हैं। फॉरेस्ट को पोजीशन छोड़ने में कामयाब, लेकिन बैक एंड से कैल्सी फॉरेस्ट को पिक ऑफ करते हैं। DWG इज डाउन टू लास्ट मैन स्टैंडिंग। S2G इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी टीम को भी रिवाइव करना है और साथ ही साथ इस पुश को भी थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है। संग He has no realization की साइड के ऊपर प्लेयर मौजूद है। नाउ पोजीशन रिवील्स हो चुकी हैं, 2 प्लेयर्स की पोजीशन उनके पास होगी, लेकिन एक प्लेयर जो है 2 प्लेयर्स के साथ एट अ टाइम फाइट नहीं ले पाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट भी आई बिलीव यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन हेमसी की तरफ से दरवाजा तोड़ा जाता है, एक प्लेयर को डाउन करते हैं, अपनी शॉटगन के ऊपर स्विच करते हैं। DBS अगेन एक प्लेयर को डाउन, और थर्ड पार्टी फायर्स यहाँ पर S2G को भी संग क्लच करेगा, संग क्लच करेगा। रात के प्लेयर कैल्सी को एक सरप्राइज दे सकते हैं ऑन द गो, लेकिन ससंग जो है वो यहाँ पर फाइट बैक करते हुए नजर आएंगे। एक किल उनकी तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है, लेकिन स्टिल ही हैव टू फेस STE's क्रॉसहेयर्स जो कि लॉन्ग रेंज से यहाँ पर डैमेज देते हुए भाई नजर आ रहे हैं। ST जो पीछे से थर्ड पार्टी कह रही है ना, पिक्सल गैलेक्सी के फ्री को टेक डाउन करते हैं। सॉन्ग पिक्सेल्स देखकर अगेन 1v1 फाइट बनती हुई रेज और संग की। कैल्सी यहाँ पर ज्वाइन इन नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बट संग स्मोक्स डिप्लॉय करते हुए उस एंगल को ही स्मोक कर देंगे जहां से उनको फायर पड़ता हुआ, एंड साइलेंस की तरफ जाया जाएगा यहाँ पर रेज की तरफ से कि उनको रिवाइव दे दिया जाए और एक बार फिर से सिचुएशन थोड़ी फेवरेबल बनाई जाए DWG के अगेंस्ट इस फाइट के अंदर। बिल्कुल, और DWG के संग को कोशिश करनी है इन दोनों ही प्लेयर्स को एलिमिनेट करें। इससे पहले टीम स्टारवर्ट ई-स्पोर्ट्स भी यहाँ पर अपना डेरा जमाने के लिए आ जाए, लेकिन अभी के लिए संग UMP45 का अच्छा इस्तेमाल करने में कामयाब रहे, एक किल लेकर जाने में अपने लिए कामयाब रहे, और ओवरऑल टीम DWG के पास 3 किल्स मौजूद है। लेकिन मॉलो स्पैम किया जाता है, नेट स्पैम किया जाता है, पैर दिख रहा है, कोई भी रंग जनरेट ये नेट नहीं पैर दिख करता, रहा है, और QBZ का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए माइकल जैक्सन की मुझे याद जरूर आ गई। ओके बार बार वही करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका एक फायदा ये है कि एक वाइड एंगल आपको मिल जाता है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा एंगल आपको मिल जरूर जाता है। लेकिन DWG के संग के अगेंस्ट टीम S2G भी काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थीनेस का मुजाहिरा कर रही है। बहुत ध्यान से ओवर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा, अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा उस स्क्वाड को, उस प्लेयर को। लेकिन अब संग के लिए मुश्किलात बन चुकी हैं, दोनों के दोनों प्लेयर्स करीब आ चुके हैं। संग कोशिश करें प्री फायर करने की, DBS का इस्तेमाल किया जाता है और फाइनली एलिमिनेट किया जाता है, लेकिन बैक एंड से वो देखो ना दूर से भाई काफी देर से क्रॉसेस अपने तो जमा कर बैठे थे और उनकी तरफ से नॉक भी एक्सचेंज किया गया, लेकिन फाइनली टीम थर्ड पार्टी कर रही है, दोबारा से रीसेट करने में कामयाब समझ नहीं रहा पता है उनको कि कहां से थर्ड पार्टी हो रहा है, गोली चल कहां से रही है, मार क्यों रहे हो भाई। के लिए रात के दिशा बिल्कुल कैल्सी और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं उनके दरमियान है, लेकिन अभी तक के लिए जो मुश्किल है S2G के लिए वो रात के दिशा नहीं बल्कि अल्फा 7 और ST के प्लेयर्स हैं। अब यहाँ से निकलना है, और इस सारी सिचुएशन के अंदर टीम जो है वो ST के प्लेयर्स जो कि अक्रॉस द रिवर क्रॉसेस उन्होंने बनाए हुए थे वो भी यहाँ पर डैमेज देंगे, और अल्फा 7 के प्लेयर्स जो कि करीब पहुँच चुके हैं अभी तक के लिए ब्रिज के, वो भी डैमेज देंगे। और अगर कहीं ना कहीं S2G बचकर निकल भी जाती है, स्टिल
there is a fair chance के वो दोबारा से यहाँ पर डैमेज खाते हुए नजर आए from the side of 7 Sports। ST भाई मौजूद है। here we go, S2G क्लियर आउट करने के लिए आती है, पॉसिबली कल यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आ सकते हैं। साइलस डैमेज देते हैं दिशा को, दिशा जोन एचपी, दिशा अपनी डीपीएस के साथ डैमेज जरूर देते हैं लेकिन साइलस को कंफर्म नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ टीम रात यहाँ पर 10वें स्पॉट के ऊपर इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगी। आदि रात के लिए कुछ अच्छी सिचुएशंस नहीं बना पाते वो अपने लिए। सारे इवेंट के अंदर कोई भी ऐसा मैच नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट एक ऐसा मैच ज़रूर आया था रात की तरफ से जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन लेटली वो जो कंसिस्टेंसी का फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग दिखाई दिया है। जोन को देखेंगे, दोबारा से याद करवाता चलूं, ये मैच बहुत ही बहुत दूर था ना। ST तो बस थर्ड पार्टी कर रही थी, गेम खराब किया ST ने बस, और कुछ नहीं। टीम A7 जो कि पहले पायदान पर है फिलहाल, वो किल तो नहीं मिलते। बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ऐसा होता कि 4v4 चल रहा, उसमें एक नॉक दे दिया, 2 नॉक दे दिया, स्क्वाड वाइप हो गई, तो अलग बात है। अगला सर्कल शिफ्ट बहुत ही अहमियत का हामिल रहेगा। वो डिसाइड कर देगा कहीं ना कहीं कि जोन का एडवांटेज किस टीम पर जाना चाहिए। अगर तो वेस्टर्न साइड पर आता है तो A7 के लिए क्रॉस करना मेन आइलैंड से अल्फा आइलैंड पर हातिन साइड पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एसन और 7 सीज का अभी भी स्क्वाड पूरा का पूरा हातिन एरिया को होल्ड कर रहा है। सो बहुत ज़बरदस्त स्किल्स पिक ऑफ किए जा सकते हैं A7 स्पोर्ट्स के, और अगर ऐसा होता है तो वो फर्स्ट स्पॉट कहीं ना कहीं टीम VPE इस मैच में लेकर जाती हुई दिखाई देगी। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स अभी जो हिली एरिया है कैंप अल्फा, चलो गाइस बंद करता हूँ मैं अभी स्ट्रीम, क्योंकि अपना आपको हातिन पूरी तरह से नजर आता है। जॉनी के चैनल पे आ जाओ भाई, जो है वो फ्लैंक नहीं दिया अभी हम लोग यूपीएस तो सही काम कर रहा है। दोनों राउटर वाला अलग यूपीएस है और पीसी वाला अलग यूपीएस है, दोनों एपीसी है। राउटर के साथ तो हर रोज हो रहा है, तभी मेरी स्ट्रीम भी राउटर के साथ तो हर रोज हो रहा है, तभी मेरी स्ट्रीम भी बंद हो जा रही है। लोगों की इंटरप्टेड स्ट्रीम्स हो रही हैं, 4-4 बार हो रही हैं स्टार्ट। पीसी में तो एपीसी लगा हुआ है फिर भी रीस्टार्ट ले रहा है वो। मतलब हाँ, कि मतलब वो इन्वर्टर से मैंने यूपीएस में सप्लाई दी है और अच्छा, मतलब मैंने एपीसी का 1100 वाट का वो लगवा रखा है, तो मतलब क्या ज्यादा लोड ले रहा है क्या वो? अबे कल भी यार 4-4 बार स्ट्रीम रिस्टार्ट हुई। अभी 3,500 की वॉचिंग चल रही थी वॉच पार्टी पे, रिस्टार्ट हो गया। 3 बार ऑलरेडी स्टार्ट हो गया यार, पूरा मूड फक हो गया है यार। ऊपर ऊपर से ब्लॉग का भी अलग 14 हो गया और पूरा प्राइवेट करना पड़ गया वो बेंच। चलो मैं वही आऊँगा, मैं लास्ट ऑफ अगस्त में आऊँगा। तो मलेशिया सिंगापुर कितने दिन के लिए जा रहे हो? हाँ, जहाँ भी जा रहे हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। कब कब कितने दिन के लिए जा रहे हो वहाँ पे अभी? 6 दिन के लिए। चलो ठीक है, फिर मुंबई आओगे वहाँ से? ओह अच्छा, चलो ठीक है, ओके। है जी, स्ट्रीम रिस्टार्ट भी हो गई। बहुत बढ़िया बेटे, खुद ब खुद सारे काम चल रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा स्ट्रीम रीस्टार्ट करनी है मुझे अभी। बहुत बढ़िया, खुद ब खुद सारे काम हो रहे हैं, मेरी ज़रूरत ही नहीं है स्ट्रीम को। स्ट्रीम बंद अपनी तरफ से होती है, स्ट्रीम चालू अपनी तरफ से होती है। मैं एक गांडू हूँ जो यहाँ पे बस एग्जिस्ट कर रहा हूँ। हेलो भाई कर दिया काम, कर दिया काम। क्या नेड मार रहा है भाई, ग्रेनेडियर ओपी भाई,
लॉर्ड ओपी बे। हेलो हाय। वाह रे, क्या सीन मामा? कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं आईएट पता। छोड़ दिया, पता है अरे मेरे आपकी को। आवाज नहीं आ रही, बढ़ा यूनिकॉर्न्स लो ऑफ थोड़ा। लव में खेलता है भाई। कोई यूनिकॉर्न्स ऑफ लव है शायद कोई इसका नाम। एलियन टेक्नोलॉजी ही संभाल रही है मेरे घर को, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई मामा मेरे पीसी के साथ भी सेम एग्जैक्ट चीज हो रही है। पता चल रहा है यूएफओ आ रहा है मामा भाई तुम्हारे घर के बाहर। अब सब कुछ लगा रखा है सही, इन्वर्टर से यूपीएस, यूपीएस से पीसी, इन्वर्टर से यूपीएस, यूपीएस से राउटर, दो अलग अलग जगह। फिर भी हर चीज़ जो है रीस्टार्ट हो रही है, लाइट आ रही है जा रही है तो। और हर बार जब भी स्ट्रीम बंद हो रही है और लाइट आ रही है, राउटर स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे नया स्ट्रीम की से स्टार्ट करनी पड़ रही थी स्ट्रीम लोगों की। इस बार मैं परेशान होकर मैंने थक को कॉल तीन किया, मार दिया उसने नेट से। थक को कॉल किया, बोला कि जो है भाई बता यार इसका कुछ सोल्यूशन। वापस आया, देखा ये सारी बातें स्ट्रीम पे चल रही हैं, स्ट्रीम खुद ही रीस्टार्ट हो चुकी है। कुछ अलग ही एलियन टेक्नोलॉजी चल रही है भाई। मैं एक गांडू बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, पीसी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। माँ कसम दिल नहीं था स्ट्रीम स्टार्ट करने का, थक बोला कर लूं। कोई नहीं मामा भाई, कोई नहीं। कब वरना- अभी? हाँ, वरना झाट नहीं आता मैं। एक आधे घंटे के अंदर 4 बार रीस्टार्ट होगा, कौन स्ट्रीम करने का दिल करेगा। कोई नहीं, अब नहीं होगा, अब पक्का नहीं होगा। हम सबकी प्रेस तुम्हारे साथ। ठीक है ठीक है। पार्ट 5 और 5 मत करो बे आराम जादू। क्या क्या बोले? पार्ट 5 और 5 मतलब 5वीं स्ट्रीम है And ये। he hits it. I think it was 3 for 3 on Lord's nades in that engagement. That is absolutely incredible. I mean, normally you throw maybe व्लॉग क्यों प्राइवेट किया? चैट कोई बता दो, right? मैं 5 बार बता चुका हूँ। Perfect. He read them like a book. He's not seeing numbers anymore. No, absolutely not. क्या चल रहा है भाई, अब बताओ। यही चल रहा है कि अभी एक बंदे ने 1v3 कर दिया नेड। ऐसे ऐसे गलत नेड मारे ना कि बस ओ भाई मजा सा आ गया। कुछ हो रहा है मतलब। टेंशन नहीं मामू, जितनी बार वो हम आ भाई जाएंगे। ऊपर चला जाए यार, सर्कल मजा आ जाएगा। S2G और इसके ऊपर 7C पे उनका बैक क्लियर रहेगा फिर पूरा। चला जा। अबे मेरे को बस ये जानना है क्या लाइट वालों का मेन गोल क्या होता है? लाइट काटा, लाइट दिया 2 मिनट के अंदर, 10 मिनट बाद फिर लाइट काटा और फिर लाइट दिया 1 मिनट के अंदर। आधे घंटे के लिए काट लो, खुश रहो, फिर दे दो, फिर खुश रहो। ये टीज क्या करता है समझ नहीं आता। Does take a knee on the warpath as well towards Hamodi, who isn't down just. सुबह 11 बजे से उठा हुआ हूँ, एक बार लाइट नहीं गई है। कल भी स्ट्रीम करने बैठा 4 बजे से, 4 बार लाइट कटी। आज भी 4 बजे से स्ट्रीम करने बैठा, 4 बार लाइट कटी। क्यों? लौड़े का बाल। सीधा गाड़ी उठाई। Are they going to save him? I think he's on the res. Hopefully looking to try and stick that one. उनका गोल है आप रात को चैन सुकून से स्ट्रीम करो, दोपहर में नहीं करने देंगे लाइट वाले। ठीक है भाई, यही कर ले वो। कैसे सपोर्टर है बे वो? Galaxy at the top with 4 eliminations. The teams that still are in the game. Alpha 7 obviously leaving this match with 3 elims, which will give them the 3-pointer. Now it's time for Vampire Esports to start making their way up the ladder. Obviously they won't know that लाइट वाला Alpha 7 is जानता out है of the लगता game है। as of yet, and I imagine they're going to continue to play this one out very, very slowly. I think they've done it most games waiting to strike. नहीं नहीं, अलाइव टीम्स नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही भाई? Although RA are है तो suffering, दिख रही है, so दिख has रही है gone ना। down in this engagement. मेरे इसमें नहीं दिख रही है, मैंने वो कॉल किया था 2x दबाने के लिए। Difference between Vampire Esports and Alpha 7, 13. That will have stretched out to 16 with the 3 limbs that Alpha 7 have earned themselves so far. But from this point on, it's all gravy for Vampire Esports. चलो ठीक है, जितने लोग गए थे भाई वापस आ जाओ प्लीज। इस बार तो बोलते में भी डर लग रहा है। That's right. कभी इस बार फिर से जाना पड़ जाए उन्हें।
That's fair. We're an esports tournament, so it's okay. कंप्लेन करो लाइट की। अबे उनके पास एक बहुत ही खतरनाक एक बहाना है, गो टू। भाई साहब ऊपर से कट रही है, हम क्या करें? मार दे स्प्रे कोड, मार दे मार दे। अरे Rod jumping out the vehicle. This could be a really good moment for him, but looks like there's more eyes on this. चलो and deliver on the spray there. The blue zone pushing them in. 7-6. Scout ने volley करना Nice cheeky ball, not quite making the Short distance. gun. Scout still out of the blue. Spot taking too hard. स्काउट को उठ जाना चाहिए, पीछे से वो बंदा पीछे चला। ओ भाई क्या मारा, करते 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 स्काउट कर दे। ओ भाई नाइस वे। Scout gets across behind that smoke. पुश पुश पुश, अबे मारो बे, इजी मारोगे तो। They're low and maybe we're going to try and finish this one off and अरे मारो भाई। अरे नहीं, अच्छे से कर सकते हैं, छोटा कंपाउंड है, ग्रेनेड ही ग्रेनेड से फोड़ सकते हैं, सही से ग्रेनेड करे तो। ने भी रखी है। Kaito has a need cooking, potentially popping it right. अरे कर लोगे भाई, तुम कर लोगे, इजी बे। एक और फोड़ दे इसको। बहुत बढ़िया बे, इसको मारो, बहुत बढ़िया, इसको मारो सब लोग मिलके। बहुत जॉर्ड बे, जॉर्ड। जीरो कैजुअलिटी वाइब भाई, जीरो कैजुअलिटी वाइब। ऐसे ही खेलना है, जाओ और मारो। मैं बोला ना, मारेंगे ना, मारेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पोजीशन के लिए खेलोगे तो मैटर खराब हो जाता है। और ये अपना इंडिया वालों को एंड वाले दिन पे ही समझ आता है। उम्दा खेले हैं, ये बात तो है वे ओमेगा, मुझे भी लगता है ये चीज कि अपनी जो भी इंडिया की टीम खेलने जाती है ना, शुरुआत में बहुत अच्छा करने के लिए बहुत ही पैसिव अप्रोच रखते हैं। ऐसा होता है। मैंने डे 1 नहीं, मैच 1 से ही कोई सारी चीज बोली थी। They do go down nonetheless. Two auto shot. बहुत वो सर्कल बन गया ना, डिले हो गया। कोई ना, ये चीज आगे बहुत काम आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये मोमेंटम अगले मैच में कैरी फॉरवर्ड रहा ना, बहुत मारेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे ही एक्सपीरियंस मैटर करता है मामा भाई। मैं इनको डे 1 से बोल रहा था, तब इन्होंने वो नहीं दिया ध्यान। क्या चीज? कि अपने को रुक के नहीं खेलना, अपने को सिर्फ मारना है। तभी तो मैं डे 1 से मारने लग रहा था, इनका पता नहीं क्या फटी में खेल रहे थे। पर भाई ये जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक सामने वाला चाहे कुछ भी बोलता रहे, समझ आएगी नहीं। इसलिए लेट हो गया। तो जो फर्स्ट दिन जो करना चाहिए वो लास्ट दिन करते हैं कि अब बचा ही क्या है, चलो मार के खेलते हैं। हाँ वही। इनके साथ भी सेम हुआ है कि एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ा सा टाइम लगा इनको, बट एंड में समझ आ गया, तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। That's going to slow R8 down, but S2G going at it with Stalwart right now. It's going every which way, but S2G bearing massive amounts of damage right now. Can't quite find what they're looking for, and they might just go out here. Eliminated Stalwart, only Scry falls down. That's going to be a real quick revive, but down one Kia. Light wala lockdown kid hai. Huge amount of casualties there for S2G in a very short amount of time, and top action Pika don't take any kind of damage in that fight. Thank you so much for gifting another 50 memberships. Let's like go. A meat shield, but with this circle centering right up towards the middle, everybody has to push in. So it's anybody's game. But Vampire Esports still in this one. 4 teams alive, still remaining, and 12 in the lobby. Vampire Esports have the freedom of already being outside. They have this high ground position over these two compounds. I feel it's looking quite good. Could it be the back-to-back, back-to-back? Back to back. See, John, it will be one hell of a moment if they're able to make it happen. Enigma Galaxy, you can see them off in the distance just with their 2. Damwon Kia extremely close to Stalwart, but there are shots being taken down towards Pika. Smoke trains sent out. But now favorite creator Rena or Dhoni? Korean cricketer. अच्छा. Seems to have been adapted by. अरे वो ऊपर था, उसमें एफपीपी कर रहा हुआ था ना स्मोक के अंदर, उसको देख नहीं रहा हूँ। वैम्पायर ये वाला भी चिकन निकालेगा क्या? This is looking so good for Vampire Esports now. Just
Scry pushing out for Stalwart up towards the Vampire Esports position. Hamodi finds ये येलो वाली sidelines कौन where सी he टीम है? becomes a NGX ना? pivotal player for Vampire Esports on those off angles is curtailed. 3 players on the hillside and they have to move towards Enigma Galaxy. NGX को ले जाना चाहिए वे बेशक टू मैन के पास अच्छा होल्ड भी है और मोमेंटम भी है They're really lacking of cover, and should they need to move ये एक नॉक निकाल देना ST वाला मजा आ still जाए Stalwart with 2 players getting one back up on their feet. Another भाई चांस है भाई बहुत हेवी चांस है NGX पे चिकन का Oh, is it gonna NGX पे not quite getting the damage. हाँ Stalwart back up to 2 players. ST दोनों रिवाइव होके बाहर आ गए ना तो एम एम्पायर को बहुत बीटी देंगे Around the side, Scry still और alive NGX as पे well. दो वो हैं The name potentially there, but Ralph wants to slow. अरे NGX ही ST को बीटी देगी Close, right up and in their grill. Ralph नहीं wants to लग pop तो that नहीं name. रहा लग तो नहीं रहा वो ऊपर चढ़ेंगे अरे ये रऊफ ही बीटी देगा इसको अभी By Schweppes, Vampire Esports sweep down अबे इधर towards क्यों आ Stalwart. रहे Ralph हैं now on the rock. They'll हो see गया this position and Enigma Galaxy मार देगा are राउफ ही मार Hamodi देगा दोनों takes the shots over the top अरे of the उनको hill. जोन के अंदर भी तो आना है NGX वालों को They swing it out NGX wide. उसको मत मार इनको मार अबे यार And not quite finding the knocks, not quite getting it done. There's one from Oh, Hamodi. bhai. Looks to shut down the push from Vampire Esports around the side of the rock. M1014 in hand, but a sliver of HP to play Oh, bhai. with. Stops, pushes around the side. There's the spray. Oh, and it is Tenu. back to back, 4 in a row. Nice one. The Vampires dominate. भाई 4 in a row भाई 4 in a row But we've got to change that right around because it is back to back. Call this team Alec. भाई थोड़ा सा पैनिक नहीं करते ना भाई निकाल देती है NGX का गेम बन सकता था ये बट वैम्पायर भाई लेजेंडरी वे चाइनीज कहाँ की टीम है ये? The Impaler, Dracula. फिलिपिनो है शायद थाईलैंड 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 है शायद थाईलैंड की हाँ क्योंकि जो इनका VP का जो स्टोर है ना वो बहुत पुराना प्लेयर पहले वो मिथ में था मेड इन थाईलैंड वाली टीम में पहले मेगा में था And with that performance, Alpha 7 knocked off the top spot. Could it be the 2-time? The back-to-back. ऊपर वाला फ्लोर कब खाली हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली मैं कल शिफ्टिंग करूंगा खाली हो चुका है भाई इन लोगों ने तो लीड बहुत क्लोज इन कर ली होगी अब तो मतलब जो ट्रेल जो था थाईलैंड की टीम है अच्छा I mean, even if they're not playing center circle here, they just have the 2-2 split, they just keep pushing, just leapfrogging the edge of the circle, and once they have access to that high ground position, we were pretty much saying in agreement, right, Kalaris, it's game over, it's GG, it's going to go the way of Vampire, and you just can't escape it. The only way... 9th पे मरी थी क्या 7 What Cs won that game is if, as you talked about it earlier, if the two other teams work together... तभी 0 पॉइंट है शायद Yeah, sort of wild. नहीं 8th पे 0 है Weird stalemate for Enigma Galaxy as well as Stalwart. It's like, yeah, okay, we kind of want as many points as possible, but realistically speaking, there's not a whole hope for us to even win this game and get the अभी भी प्रोसेस हो रहा है If we start eliminating one another in those moments, I sometimes मामा आपने वो किया था जो मैंने आपको बोला था कल नहीं तो मैं खुद नहीं याद था मुझे क्यों याद होगा PL देखो हाँ लाइव पे तो खत्म हो गया PL ये मैच कंप्लीट कर लेते हैं ये तो मरने वाली जगह जा रहे हैं बे दोनों साइड से पिटेंगे ये तो 18 पॉइंट एक बात बताओ मेरे को डिले हटाना है कितना था डिफरेंस क्या चीज फर्स्ट और सेकंड के बीच में इससे पहले कितना था ना नहीं पता मैं तो बार-बार वही स्टार्ट हो जा रहा था मामा इतने डिमोटिवेटेड क्या हो तुम्हारा स्ट्रीम 4-5 बार स्टार्ट होगा काशवी 1 घंटे के अंदर मोटिवेटेड रहोगी क्या तो मेरा भी हुआ कितना एक बार 2 बार कितनी बार 3 बार मेरे को मर्सी का कॉल आ रहा है बात करके आता हूँ भाई कोई बंदा बोल रहा है
हाँ हेलो। मेरा फोटो वाला भेजो। मर्सी को अब खबर पहुंची, यार हम नोवा का बताया। पुश सही था, बस क्या इन्होंने हो गया? एग्जीक्यूट नहीं किया ढंग से। मर्सी को अब खबर पहुंची। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोला कि क्या कुछ आया है क्या उसमें। मैंने फिर बताया तो बोला अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। भाई यार मेरे रिकमेंडेशन की तो एमसी बीजे हो गई है यार, पता ना क्या क्या आता है बे। कोई इससे ढंग अच्छा का रीअपलोड ना कर दो। है। नहीं, इससे अच्छा रीअपलोड ना नहीं कर नहीं दो नहीं फिर। नहीं 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 नहीं। वो नहीं, नोटिफिकेशन जो चला गया सो चला गया, उस पे वो वर्क कर लेगा प्राइवेट करके पब्लिक होने पे। लेकिन हाँ, री अपलोड पे थोड़ा सा चक्कर हो जाता है। मैंने फील ओ, की देखा है मैंने। ओके। मतलब मेरे मुझे तो री हाँ, जो अपलोडिंग लोग सही देख नहीं चुके लगती। हैं वो लोग अब वो लोग दोबारा तो दोबारा नहीं क्यों ही देखेंगे। देखेंगे। मुझे पता भी नहीं कि उस पे कितने व्यूज थे, एक बार देख लेने दो। कंटेंट। ओ भाई 10 मिनट 15 मिनट में 25,000 व्यूज तो थे। टू 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 ये टू टू 10:35 ने नजर लगा ली। टू। पता नहीं क्या नजर लगी है। टू 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 टू। भाई लिटरली मेरे For 50 more cashless memberships, Kenzo, let's go. क्या Thank you आते so हैं much, bro. केंजो। मेंबरशिप आना का हमारी भी मेंबरशिप। स्ट्रीम में। हाँ तो मैं कह रहा था कि टाइफून अकाउंट वाले ले। ओ माय गॉड, तो सारे नए मेंबर्स आज। मुझे भी दो यार मेंबरशिप। मैं क्यों अपने 29 रुपीज वेस्ट करूं फिर? अरे हाँ, आप हो ना, ले 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 में हो गया। रुको, पता नहीं शायद खत्म हो गई। हाँ, ठीक। नहीं हूँ। फेक सपोर्टर। एक गाइस कल से अपने हमारा ये रिकमेंडेशन को कैसे अच्छा करते हैं। मेरे को बताती सबको। ये नहीं पता मुझे। एनीवे गाइस, कल कृतिका और मैं खेलने वाले हैं अ वे आउट। कल ही खेल रहे हैं? हाँ तो कल है कितने ना एक दिन का दिन। गेम है। 2। 2। 4 दिन तो चलेगा गाइस कम से कम। नहीं नहीं चलेगा। नहीं नहीं, 2 दिन चलाएंगे हम। सेकंड डे लंबा खिंचा तो उसके बाद अगर नहीं खेलना तो हम लोगों पे कंप्लीट कर देख सकते हैं क्या करना है। ऐसा नहीं है 10:35 में नजर नहीं लगाई है, वो तो प्लेजर है। हैं? अरे क्या बोलते हो आप मामा? क्या चैट पढ़ते हो? पर। मैं समझना चाहता हूँ चैट बोलती क्या है। चैट कहना क्या चाहती है। युवराज ओपी। केटीन व्लॉग देखो गाइस, मेरा ऐसा सीन है, मैं केतन के व्लॉग जो इतनी मेहनत से मेरे लिए डालता है, मैं उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं फुल समा बांध के कि यहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तब मैं देखता हूँ, समझ रहे हो। भाई आपके लिए नहीं डालता यार वो। वो पूरी मेहनत मेरे लिए युवराज करता ओपी है। कह रहा है, युवराज ओपी करने से मेंबरशिप मिलेगा। मजाक कर रहा है यार वो गाइस, कुछ भी मान छी, लिया आप लोगों ने। बोले है कि एकदम ही। अच्छी हाँ, वीडियोस सब देख अभी के। युवराज ओपी अच्छा कर रहे। गाइस कृतिका ओपी करने से 100% मिलेगा। अच्छी फिर मैं वीडियोस देख के। 100 मेंबरशिप भी गिफ्ट करूंगी काशवी को। यार हाँ मेरा चलो। पूरा रिकमेंडेशन आरपी से भरा हुआ है यार, क्या कर लिया मैंने अपने रिकमेंडेशन का। क्या लगता है गाइस, कल कौन ज्यादा पहुंची करेगा गेम में कृतिका और मेरे बीच? पहुंची पहुंची भाई स्वराज को क्यों तोड़ा भाई। नॉट पहुंची पहुंची यार। मतलब स्वराज को क्यों ही तोड़ा भाई। चैट ये वाले पार्ट को थोड़ा सा कट करके जरा इंस्टाग्राम पे स्वराज को टैग कर दो प्लीज, और मेरा भी बोलते हुए कि स्वराज को क्यों तोड़ा। स्वराज ने कुछ दोनों भेजा था, नहीं, स्वराज ने अपना कोई पेज बनाया क्या, एक सेकंड देख लेने दो। जल्दी स्टार्ट कर दी। ओ स्वराज चौहान न्यू अकाउंट 8bit_पोची और व्हाट। कहाँ पे? Can you हाँ transfer momentum from the यूट्यूब पे, final game कृतिका of the इंस्टाग्राम पे। last day into the next अबे day? भाई पागल है क्या? Really, really well done. 8bit_पोची। who's so कोई far कर for भी रहा है Alpha 7 कृतिका has ओपी been का। Co-founder madclap.in, chief talent manager 8bit creatives, creative head, creative head। very, very good. इस पे तो ट्रोल मारूंगा इसको। SATL esports SATL store.in।
for these teams. Coal mine गाइस 8bit_ पोची पे जरा जाके प्यार दिखा के आओ। finding their spot. काशी अपनी भी 4,500 के, हाँ काशी जरा अपने 4,500 लोगों को भेज के आना जरा 8bit_ पोची पे इस मैच के बाद। मामा क्या स्ट्रीम देख रहे हो उसके स्क्रीन पे? नहीं अभी वो आया देखा YouTube देख रहा था ना तो उसका स्ट्रीम आया था सामने। पोची भाई के चले गए भाई 20,000 फॉलोअर वाला चला गया इंस्टाग्राम। चला क्या? हाँ क्या? आप पोची क्या सिर्फ अपनी वो डालेगा पोची अपनी पिक्चर। क्या चला गया पोची का इंस्टाग्राम? भाई लोगों के इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट हो रहे हैं ना गाइस। चलो जीजी इंडिया के नहीं पता था क्या? मुझे नहीं पता था। तो फिर क्यों भेज रहे हो 8bit पोची पे? However, Vampire Esports once again as well as Alpha 7. अभी कुछ रीजन के बनाया। मुझे लगा प्रोफेशनल एक अकाउंट बना रहा है। क्लैश ऑफ फैल्कन भाई खत्म ही नहीं हो रहा है। Not so heavy on the console side though. There's not really all the opportunity to control. भाई ये धरने वाले बंदे नहीं है, मुक्के मारते मारते भाग जाते हैं भाई। साउंड को इसी का साउंड पेलो बे फैल्कन को पेलो इनकी वैन की। अच्छी अच्छी गने हैं बे इन लोगों के पास, 2 AK, 1 UMP, 1 G63 पेलो। मारो मारो भाई, पहला $2,000 उठाओ भाई, $1.5 लाख उठाओ। लेट्स गो। मार 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 यूसुफ को पकड़ ले भाई, ये तो फ्री किल है। Well, you never know, but I'll tell you बैकअप आ गया इसके इस अकेले के चक्कर में। ये लो फ्री किल। With 1, with 2, Bro. beautiful sprays coming through. भाई ये बीच में ओ भाई पीछे से नेवर अलोन आ रहा है। It didn't go so well in their engagement that they had. They went अरे down सकाउट pretty भाई। early, but this time around it's working out. ओ तेनू बहुत बढ़िया बे। नाइस वन। Over the top. Could hear that. Turkish Charlotte next door. एक को बचा लो wow, बे for spray at god. I've got pretty wild for him too. अलादीन जाओ 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 फिनिश कर सकते हो, जाओ फिनिश करो बे। 2 plays down for them. Yusuf also on bended knee. Taking a nap in the snow at the moment, can't be too comfortable for him. But नहीं 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 ये गलत जगह है, ये जगह गलत पकड़ ली नेवर अलोन ने। पेलो बे पेलो। हटाओ हटाओ ये हटाओ। अभी भी 48 रिमेनिंग 47 हैं? अरे यार नाइस Getting that flush and that knock. 7C on forward. More eliminations, special eliminations coming through for 7C, earning that money. Can they put that fight? ओ भाई 7C के पास $2,000 आ गए। $4,000 accumulated just there, right then. Spray god who's मार 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 स्प्रे गॉड मार 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 चीते मार इसकी बहन की। बहुत हार्ड नाइस वन। Left in the body. Last player alive yet again. मार कमर को। अरे अलादीन तेरे ऊपर है चीते। From the AKM. भाई ये कैसे आ रहा था यार लेकिन। Aladdin as well. यही बोल रहा था मैं। बहुत बढ़िया। These players and Aladdin, the last player in a 1 versus 1. नहीं नहीं क्या किया? Will fly, staying alive with the क्या किया अलादीन? $5 grand for the home team. You'll take that one to Mark. Blows away the 7C team with that चलो smile of his. चलो ठीक है 1,70,000 तो है। 7C's unfortunately washed away वैसे by the पैसे वाला Falcons, इवेंट and है now ये। we're heading back over to Damwon Kia. Currently in this engagement with R8. नहीं यार ये अलादीन तो मार सकता था यार, वो जंप कर रहा था। उसने अरे वो किया ना उसने क्या बोलते हैं फायर यूज ही नहीं किया उसने, पूरा एडीएस पे एडीएस कर दिया। एडीएस पे मार दे और उसने मूवमेंट के साथ फायर और एडीएस दोनों में यही फर्क है 3 और 4 में। Already in a cheeky position, but I think SK Ton, he has a similar idea of where this player is hiding. You need to be so ये सबसे ज्यादा कैंपिंग वाली जगह है भाई। Meanwhile बैठ के भी मार सकते हैं। बच्चे खिला रही हैं। जंप फिस्ट करके आ रहा था। They can do anything. Trying to get out onto the roof side. R8 want those high ground positions as well. Forrest, nice spot SK10 on that little window there, right by the door. $5 गए यार एक। The nade in hand. Forrest trying to thread the needle. Not quite getting it in just yet. I'm getting cuteness overload juxtaposed by the fight going on between Damwon and Kia with the R8 fans. It's really, really nice to see the turnout here at the PMWI. Even moving कितना % प्रोसेस हुआ? वो परसेंटेज नहीं आता है, लिख के आता है वीडियो इज बीइंग प्रोसेस्ड। देखो ये
bounces off several different जब objects. 2v1 था तब Trigonometry थोड़ा is not good from ऐसा आता है। आराम से ले सकते थे ये लोग। वही जाना था, वही फिर ऊपर आराम से से जा जाना रहे चाहिए था। Prestige जो very close to पहले Umber. नॉक आया लेफ्ट पे वो 2v1 में इसी कौन चीज कौन पे रहेगा? कैपिटलाइज करना चाहिए था इनको, आराम से एक साइड से जाना चाहिए था। देखो ऐसा। Nade over the top. Fabian traded off maybe. हाँ वो दोनों अलग अलग साइड से जा रहे थे, सबसे Okay, there's backup, and they गलत did get चीज that था। res. As we tune back in with the fight live, and Damwon Kia still trying to get something done. Unfortunately, R8 take that knock in response. Omba won out that DBS trade. Yeah, felt bad for his teammate Fabian, who got a bunch of shells right to the back there. Sent them flying forwards. ओडी बम के जे जी, एक बात बताइए, आपके घर में बहन है? अगर आपकी बहन है, आप अपनी बहनों के साथ फ्लर्ट करते हैं क्या? South side, early doors, so the zone won't tick. And these maneuvers have to be made fast. The thing about the Candy Blank is that there's quite a lot of buildings, right? There's quite a lot of closely packed compounds, so a lot of teams can exist very centrally in these circles. What that also means is that rotations. भाई एनजीएक्स दुनिया का कोई भी मैप हो, सोती रहती है भाई जोन के बाहर, मारती रहती है भाई ये, और किसी को मतलब नहीं लेट एंटर करते हैं ना। ये दूसरी टीम भी है उनके साथ। हैं ये क्या? दूसरी नहीं 3 टीमें हैं वहाँ पे एनजीएक्स के साथ। अरे उनकी फाइट हो रही है डांगवन और आरएट की, और एनजीएक्स तो जहाँ पे भी गोलियां चलती दिखती है ना, एनजीएक्स घुस जाती है भाई। Kind of 18. क्या देखोगे बे? Considering, there is one team that has a great position, but it does feel like when you start to get these central spots where there's so many compounds still involved, it's very difficult to determine where the best spot to be is. Stalwart passing by the Vampires at the moment. No shots taken as of yet. And Carrillo as well as Alpha 7. Ball डाल दिया है भाई, मैंने बता देना। Over towards the center. Vampire Esports still hedging their bets over towards that western side. This play for late game has been really working out for the Vampires. इस बार बीजीएमआई में इंटरनेशनल सर्वर आना चाहिए यार, देखो बात तो है। Continue to do this. So honestly, I think the team might be just it might just not be their style. पीसी आल्सो आज यूपीएस तो सही काम कर रहा है दोनों। All the commotion was there between Enigma Galaxy and Dam 1. ऑफ नहीं, बढ़िया चल रहा है भाई तो। ऑफ नहीं, बढ़िया चल रहा है भाई तो। Try to do a rotation a little bit towards the west, but they're gonna have to be careful because there is 2 teams there. As we can see, Omba, I think, getting some fall damage on himself. Team Falcons defense trying to make the push. Even though they might not be able to get that first. भाई वो बस मेरी एक बात सुन लो भाई, ई पकड़ लो और बस किल उठा लो। ना ना ई नहीं के पास है, बस सबको आना है। अलादीन के पास ई था। वो बैक क्लियर करने गए थे। Alpha 7 position themselves now where they're going to be able BTR to रख दिया भाई, BTR के पास इतना सेक्सी क्यूब था, वहां से खेलना बहुत आसान था। It is going to be a huge engagement. Meanwhile, Vampire Esports trying to relocate themselves a little bit more towards the center of the circle. गाइस जितने भी लोग हो, सब लोग एक बार जो है स्टिकर्स भेज दो, गोल्ड भेज दो, ताकि तुम्हारा भाई लीडर बोर्ड में आ जाए। जितने भी लोग हैं सब लोग अगर 100 200 गोल्ड भेज दोगे, I'll absolutely love it. एक बार स्टिकर भेज दो, जितना गोल्ड है सब पटक दो। वॉच देखने से गोल्ड मिलता है लोगों पे, स्टिकर भेज दो एक बार। बहुत बढ़िया, बिगेट्रॉन गया। Yeah, that's huge because अरे पहला elimination नहीं मिला ना। ना वो तो few points from them. Enigma Galaxy falling down super far with that. Enigma If we see S2G, Star-Lord, Damwon Kia, Enigma Galaxy even have a big game, then they could take. हाँ वो पहला थोड़ी मिला था, वो उन लोगों ने पहले ही मार दिया था। Shot from Vampire might have an idea that this could be Alpha 7, so they're focused on that. Alpha 7 fighting with S2G now for this terrain. It's important. किधर है, मुझे देखना है 7 सीज का पोजीशन। 7 सीज का पूरा बैक क्लियर। अच्छा उनके सामने हाँ बस उनको सामने खेलना है, सामने से खेलना है, और वो लोग ऊपर हाइट एडवांटेज पे है पूरे मैच पे। मेनली 7 सीज के आगे ही जाके जोन खत्म होता है। अगर एक और ओपन फील्ड में हार्ड शिफ्ट लग गया ना, Alpha 7 सेक्सी चिकन आएगा। careful here, getting some shots. Rebel almost getting knocked,
S2G is going to have a bit of an advantage, and the grenades are going to start raining down. Rebel getting knocked by S2G. थोड़ी सी जगह की तंगी तो है अब साथ आ गया ना। Ray C, can he connect with this? यार देखो मैंने बोला था ई पे आ जाओ, पता ना कहाँ गांड मरा रहे, ई पकड़ लेते यार। Getting knocked from now them one Kia. देखो वही है, finding themselves in a horrible spot. बस हाँ वो घर पकड़ ले जो उनके सामने। मेरे को सही में लगने लग गया है मामा भाई, सही में Vampire Esports. ठीक है हम समझ सकते हैं। कोई नॉक हुआ 7 सीज का, समझ भगवान तो नहीं। They are lurking. फीलिंग है ना इतना चैट वाले भी। Ready with the wooden stick to pump it straight into the heart of Vampire. They're saying no. गलती होगी गलती। They want to finish this off and try to go for the win. Shrebs gets a Revo knock or the finish. चलो ठीक है और स्पेशल एलिमिनेशन वैम्पायर का। Can they finish this ये तो one next level तुम क्या क्यों? It's about to go away. 2 players now alive. सबको मेरी हंसियों के साथ प्रॉब्लम क्यों है यार? Vampire Esports. शेयर ड्रॉप पे लगता है। मतलब मैं पहला इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मेरे को लगा कभी awkward ना हो जाए यार, मैंने बोला तो, but ठीक है। इस वाले मैच 7 सीज ने कोई पैसा नहीं कमाया ना? Back up a little bit is gonna force Zam1 Kia to also go down from that mountain that they were on. This might be the opening that Alpha 7 is looking to have. You can see Carrillo trying to get some shots, and S2G just waiting patiently. Alpha 7 making a push on a buggy. Mythic. भाई वो लोग कहाँ है यार? किल फीड में 7 सीज क्यों नहीं दिख रही है मुझे? ये बच गया क्या? भी बच गया भाई वो। नहीं मार गया भाई 7 सीज। भाई मारो ये इसको कैल्सी का। बहुत बढ़िया 7 सीज, बहुत बढ़िया अलादीन। As well. Oh, Stone gets knocked, and this is exactly what you're talking about here. This delay could mean that Vampire does not have the time to do so. Hams is trying to do everything he can to do this off. Let's see what happens. बहुत बढ़िया मैडमैन। Vampire are like Fluke trying to defend this angle here. In this case here, let's see what happens. Vampire A7 मर गई इसकी भेड़ की। वैम्पायर के पास अब चांस है। 3 eliminations and they need 13 points. So that's something that we're going to be looking at very, very closely. Can they confirm on that? Can they somehow be able to make 13 points? I mean, क्या बसूड़ी चल रही है यहाँ पे? Might be able to see some of the other fights going on. Them one Kia, Enigma Galaxy. This is going to be huge for Vampire Esports. बहुत बढ़िया। 8 टीमें बची हैं। अलादीन नहीं रे। Looking to third party anything here, then able to actually collect another. बहुत बढ़िया सारंग। Esports continues on, and now they're gonna have to make another push towards the circle. They've been blessed with the zone many times. ओपी वे पीका को निकाल इसकी बैंड की। नेड मार। सब लोग घोड़े रोको अपने। They're trying to continue on that hot streak. They're trying to. बहुत बढ़िया 2 नेड। इसकी माँ का एक वो मारना जरा। अबे सब लोग एक जगह क्यों हो बे? MC बीजे हो जाएगा। बहुत बढ़िया बे। पेड़ा दे दिया भाई, पेड़ा दे दिया भाई। भाई और पैसा चाहिए। कितना है चिकन का पैसा? इसकी माँ का चिकन ही चाहिए। इंडियन फ्लैग साम कर दो गाइस। लास्ट मैच तो चाहिए चिकन। $10,000 चाहिए इसकी भेड़ की भाई। पे लो। 3 man strong. ये बोलते हैं This could be the game that Vampire is able to close out and win the PMWI after party showdown. 3 players alive, 5 eliminations, and there's only 4 teams left. That means they have 9 points total so far. Vampire Esports trying to get those 13 points that they need. Can they? Vampire के कितने kills है कोई दिखाएगा बताएगा? That player that was knocked. And take advantage of the fight that was going on Team Falcons there using that pickup ability. 10, 8, 6, 5 5 points तो वैम्पायर के पक्के हैं। 10, 8, 6, 5 फोर्थ का 5 होता है मिनिमम। किल कितना है? 5 किल है। 10 पॉइंट तो उठा लिए वैम्पायर ने। Yep. 2 players inside the new circle here. This could be insane for them. While all the other teams trying to fight for that Vampire को चाहिए 9 पॉइंट जीतने के लिए। अबे they already नहीं अच्छा। ये तो करंट दिखा रहे हैं ना, करंट स्टैंडिंग।
इस मैच में चलते हुए का निकाल लेगी भाई भाई वैम्पायर के पास अंधा This is पैसा going to benefit in a big way for Vampire Esports. I'm pretty sure they're looking to see what's going to happen with the fight. And if they can somehow possibly third party this, and that's exactly what they're going to be doing here with Shrev. Looking to third party this. He's able to spot the mark. Can he get the knock on the mark? That's going to be an extra point. तेरी बहन की फैल्कन मारू मर हाँ मरा इधर आ सारंग इधर आ जल्दी आ सारंग इधर आ तू इधर आ Vampire Esports getting closer and Revive हो जा closer to that first place, ladies and gentlemen. Vampire Esports getting even more chickens now in third place, at least third place guaranteed. हमें 7C का चाहिए इसकी भेड़ की वैम्पायर मारू नहीं चाहिए प्रेस्टीज तेरी भेड़ की away from Alpha 7. Can it happen here? Can नहीं 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 सुन ले सुन ले सुन ले week 2 नहीं 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 second place. Can Vampire Esports win this game? For them to win the whole thing. Nice. बहुत बढ़िया अब इजी 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 It's second place. It's 12. मैडमैन हील क्यों नहीं कर रहा है Two more eliminations all the way. नहीं बे Ravenclaw finds Spray God here with a huge knock and a headshot. Ravenclaw being able to get a knock. भाई एपिक हो जाएगा यार वैम्पायर ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया नहीं getting a knock on 7Cs. Now they're going to make a full push here to 7Cs. Can Vampire Esports close it out with the win? You can see they're trying to actually confirm them. हील कर बहुत बढ़िया लेट जा स्प्रे गॉड लेट जा लाइफ में कोई जल्दी नहीं है Connect this is going to come down to a 2v2. Here comes the utility from 7Cs. Oh, connecting barely there with Shrop. You can hear the crowd going. सारंग से जाएगा ना हाँ सारंग से जोन जाएगा 7Cs is going to end up getting pushed by the circle here. Vampire Esports is going to have a bit of an advantage. please 2v2 है Utility right now by एक नीड 7Cs. चाहिए वे दोनों नीड कर रहे हैं Utilities coming out here. Fluke and Strip both on भाई एपिक भाई ओ भाई but if they can confirm बहुत बढ़िया लेट्स गो चल चल लेट्स गो अरे Gentlemen, being able to get the win, the final match of PMWI after party showdown. They clutch it up. They show why they are the champions of week 1 and now the champions of week 2. Vampire Esports absolutely. हाँ अच्छा खेले क्या कमबैक है बे आज का और कल का. I cannot believe they're able to make this dream run happen on the very last situation. Vampire Esports. अच्छा खेले PMWI. एंटी में अच्छा खेली 7C अच्छा खेली यार. Let's go. I can't wait to see what the desk is gonna have to say. It's been a pleasure to hear you cast in this last game. Jason, take it away. Let's go. अब वो हो रहा है क्या duo? थाईलैंड FTW हो गया होगा ना नहीं होगा I don't think क्योंकि अभी celebration होगा ना. अरे हाँ तो मैंने बोल ही रहा था मैं मानता ही नहीं है भाई मेरी बात. आप ही हो मेगा आपको सब पता है. सब पता है मैं बोल रहा हूँ ना अंतर्यामी हूँ. आफ्टर पार्टी शोडाउन चैंपियंस आफ्टर पार्टी तो बहुत महंगी थी भाई इन लोगों की फिर तो बहुत ज्यादा भाई इतना पैसा है इतना अंधा पैसा मामा भाई मैं बता रहा हूँ कि सच में इनको कुछ नहीं करना. अब ये कौन बोलता है गेम खेल के पैसा नहीं कमा सकते. भाई गेम खेलो तो ऐसा खेलो वरना मत खेलो. टॉप लेवल गेम में हाँ दोनों बहुत अच्छा फाइट दिए थे. इतना पैसा आदिल उसको अभी अवार्ड मिलेगा ना उसका. Ladies and gentlemen, Vampire Esports have won the main event with $500,000 and they've won the after party showdown. They are your all-star PMWI champions. Actually unbelievable what we saw here in this final game, as well as they raised the trophy. This was a performance of a lifetime from weekend to weekend. अनकैचेबल थे भाई लेकिन इन लोगों ने ना सोचो 8 मैच में वैम्पायर ने 5 चिकन निकाले लास्ट 8 मैचेस में. Last flush. Even if they didn't get the win, but still they went for all the marbles. Absolutely amazing. I have never felt this much pressure in आएगा match of Pokemon about esports. ऐसे समझो क्रिकेट में आज इंडिया कहाँ पे है.
लेकिन क्रिकेट में इंडिया को अपनी पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने में कितने साल लग गए थे, कितने वर्ल्ड कप होने के बाद। तो आएगा तो Congratulations, you are the PMWI After Party Showdown champions here at Gamers 8. 5 करोड़ के अराउंड जीत चुके हैं वैम्पायर। An incredible story to come back from 27 points down at the beginning of the day to now the victory of the entire competition. शोडाउन में क्या? Have to ask you, what does this mean to you and your team? 5 उसमें जीत गए। มันมีความหมายกับเรายังไงก็สำหรับถ้วยนี้ถือว่ารายการเนี้ยมันรายการของผมครับผมคือพูดกับตัวเองเสมอครับ 5 चिकन मजाक नहीं है भाई। तो डे के शुरुआत में जब 2 चिकन जीते थे तब 4 बैक टू बैक जीते थे और अभी लास्ट में 1 जीते तो 5 हो गए। 8 मैच में 5 हो गए। الف الف مبروك الفريق فامباير اي سبورت. زي ما احنا عارفين هم كانوا الفائزين معنا في بطوله البي ام دبليو اي الاساسيه، والان مره ثانيه كانوا هم الفائزين معنا في الافتر بارتي شو داون. سالناهم السؤال الاول، قدرتوا ترجعون من 27 نقطه الى المركز الاول وقدرتوا تاخذون الكاس المره الثانيه. कुछ नहीं समझ आ रहा बे, अब समझ आएगा मामा, मैं वही बोलने वाली थी। कुछ नहीं समझ आ रहा बे। यही तो मैं बोल रहा था लोगों से कि ये मत समझना कि मुझे अरेबिक आती है, मुझे अरेबिक नहीं आती भाई, समझ में नहीं आती, पढ़ लेता हूँ। बहुत तेज बोलते हैं यही बोल रहे हैं मामा भाई कि अच्छा खेले और अब इतने सारे पैसों का। हाँ, आफ्टर पार्टी शोडाउन बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया खेली वैम्पायर, बहुत पैसा जीती, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि मैं तो जाते ही गाड़ी वाड़ी लूंगा, मस्टैंग। ส่วนหนึ่งเลยคือเงินครับผม टोटल का 5 करोड़ होंगे।ก็ส่วนที่2คือความมั่นใจครับแล้วความเชื่อใจความไว้ใจคนในทีม First thing is as he said is about the money because we have a lot of big prize pool and also it's about the team confidence and the last thing is the trustworthy of the team. They trust each other, they play with the confidence in the on the same chemicals, so that's why it's improved the team confidence and also the moral of the team, and we just play for fun, so that's all. سالنا فريق فامباير اي سبورت अच्छा ये टीम, हाँ تفوزون البي ام دبليو اي الاساسيه ये टीम 10 करोड़ जीते। पागल हो गई हो क्या? 10 करोड़ क्या होता है? बोला अभी? हाँ, ओवरऑल 10 करोड़ जीते भाई। حقهم انه احنا دائما نوثق ببعض وقت ما احنا نلعب 5 करोड़ पिछले इवेंट से, 5 करोड़ इस इवेंट से جدا جدا عاليه، وهذا هو سلمهم الاساسي وايضا الجائزه क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से? अरे हाँ, कितना $500,000 प्लस इसके 100 के, हाँ रफली हो गए 5 करोड़ इसके। And you've also cemented your names in और the history of Gamers 8. What an incredible मेरे हिसाब से शायद थाईलैंड में your इसका fans who टैक्स have नहीं supported you throughout this entire इसका क्या नहीं है, टैक्स नहीं है। जैसे अपना 30% कटता है ना, मेरे हिसाब सेก็ก่อนอื่นเลยครับผมขอบคุณอาราเบียครับผม मुझे थाईलैंड के टैक्सेशन का पता नहीं होता का जो आप ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมที่แบบว่าคอย क्या मुझे सब थोड़ी पता है, ओमेगा थोड़ी ना हूँ मैं।ครับผมครับ So first thing, thank you the crowd of the Saudi Arabia. A7 वाले आज 7 C's को सर्च करेंगे। वो क्यों सर्च करेंगे यार? And also the good food. Thank you so much for support us. अगर 5% and also जैसे लास्ट के 2 मैच गए वैसे सारे मैच क्यों नहीं कर सकते थे? We are the new लास्ट में नथिंग टू लूज एटीट्यूड से जब इंडियन टीम्स खेलती है ना तो बढ़िया खेलती है। for the champion of PMWI. समझ रहे हो? Thank you so much for पर ये support. प्लेयर्स को समझ क्यों नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता। حبينا نسالهم السؤال الاخير انه ايش يعني لكم الشيء هذا وايش الشيء اللي इस वाले में सिर्फ 1.2 करोड़ ही जीते क्या سواء هنا في المملكه العربيه السعوديه معنا في الرياض او حتى في हैं? मैंने कुछ नहीं बोला भाई। यार डॉक्टर ताहिर मुझे क्यों गाली दे रहे हो इस बात में? 8 करोड़ على الرياضه الرهيبه اللي احنا شفناها وايضا الاكل الرهيب اللي احنا اكلناه مع بعض. زياده على كذا يبغون يشكرون الكل الناس اللي اشتغلوا معنا في الايفنت डॉक्टर ताहिर اثبتنا انفسنا في तुम्हें गाली दे रहे हैं? للمره الثانيه على التوالي بعد ما فازوا البطوله الاولى فالف दे रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा इनको। Now, you know what we've said, congratulations so many times already, but you know what, it doesn't help. वाला हबीबी If you are at home watching or if you are in the Gamers 8 arena, everyone हम नहीं सुधरेगा कभी भी। your PMWI champions, Vampire Esports.
5% टैक्स है। अच्छा नहीं भाई, मैं तो ना समझ बिल्कुल नहीं। काश मेरे From all of 3 us here बंदे at मेरी Game बात State सुन and लेते, from the वो main भी ना stage, समझ from ना रहे। myself and Fancy, it has been an incredible 6 weeks of competition. We've had 5 esports titles that we've gone through, and अरे we've given आदित्य out भाई नहीं $15 चाहिए million एडिटर, तुम्हारा नाम worth of आदित्य prize तो money. चाहिए, मतलब So I चाहिए guess तो the only thing मिलेगी। that we can say is thank you so much for tuning in, and we'll see you next माम्बो year. को चाहिए, माम्बा की साइड شكرا में لكم जाके اعزائنا الحضور والمشاهدين. क्या चाहिए؟ زي ما احنا عارفين بطولة ببجي موبايل नहीं كانت هي चाहिए। البطولة الأخيرة اللي معنا في بطولة جيمرز 8. $15 مليون على 5 ألعاب قدرنا نوزعها خلال ال6 أسابيع الماضية، وكانت فعلا ما تراي करो أشياء कृतिका। كثيرة تحققت فيها البطولة هذه، وأيضا حلم الكثير من المعجبين في الإي سبورتس معنا في المنطقة. فشكرا لكم على وجودكم معنا، شكرا لكل الناس اللي اشتغلوا معنا في الإيفنت. وهذه الكلمة الأخيرة لنا أنا وبانكس على المسرح، فعلى طول نخليها الاستديو التحليلي. क्या हो सकता है ओ भाई थका नहीं बोलते हुए। क्यों थकेंगे भाई? वार्म अप है उसका, वो वार्म अप है। New team on the global stage, but they have made their mark. मुझे नहीं लगता कोई अवार्ड है, मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा पहुंच जाएगा। प्राइज हाँ। और कुछ नहीं होता, सिर्फ विनर्स की। पिछली बार भी सिर्फ विनर्स का वो था। MVP को नहीं देंगे? नहीं, पिछली बार भी कोई सेरेमनी में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ट्रॉफी बुला के दे दिया, उसके बाद भगा दिया। तो ये तो आफ्टर पार्टी है, जब उसमें नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा? मतलब 1-2 चीजें और हो सकती हैं इनकी, जैसे एक तो फोन सबमिट करवाएंगे अभी, उसमें टाइम लगेगा। इतनी लंबी लाइन भाई, कम से कम 1 घंटा लगेगा, इनको खड़ा रहना पड़ेगा। सोचो गाइस, जब वो हबीबी इतना तेज तेज बोल रहा था, मैं 2x कर देता तो एमिनम की फट जाती। इनसे साइन भी करवाएंगे वैसे, जर्सी वर्सेस सिग्नेचर विग्नेचर। अच्छा, फुल साइनिंग सेशन होगा। थक्का थंबनेल क्या है? थक्का थंबनेल It's amazing to watch them play here on a stage when they're going up against arguably some of the world's best. अनबैन कब होगा? कितने पैसे खर्चे ओमेगा खाने पे? थक भोसड़ी का। नहीं, हमने ज्यादा नहीं। थंबनेल से कर रहा तो टाइटल है। क्या कर रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा ऐसा तो। Well, considering they got the win when they only needed a second place as well as 1 point, it was definitely $107K total earning. 180 points, 6 being points able to take out Alpha 7 here towards the bottom. Even if they came second, they would still win. It's not just 107K, it's 107K. हाँ, और क्या? Obviously. 500,000 they got before. You can't forget about that 60K for first place. That's what I was Second, हाँ. You know what? I took it. I'm the number man here now. But yeah, okay. I would say it. क्या end में जीती है वे? They got it. Okay, they definitely got the money for it. The Vampire East training facility, brand new, brought to you by their PUBG Mobile division. देखें पैसे की रैंकिंग में हम लोग कहाँ हैं? यार काश हम लोग जीत जाते। वैम्पायर को तो झाड़ भी फर्क नहीं पड़ता, हम पे $10,000 आ जाते यार। Alpha 7 also, we got to say they had an amazing run. Right? They clearly came into this event fully prepared and exactly what their game plan was, and they played down to it. 4 से 8 का डिफरेंस देखो भाई, तो बे 3 पॉइंट में 5 टीम है। हाँ, 2 पॉइंट से जीतते और क्या, 2 और 5 नहीं 3 1 पॉइंट से, क्योंकि 7 सीज की 3 किल नहीं मिलती उन्हें और 2 प्लेसमेंट पॉइंट भी जाते हैं। मैडमैन नॉक था ना, फिनिश थोड़ी हुआ था। नहीं हुआ था, फिनिश हो गया। अच्छा हो गया था। अच्छा 2 पॉइंट्स। But Team Falcons, we're talking about teams here. Yeah, Team Falcons didn't fare too well. Oh, I mean, let's be honest, they fared extremely well here again. This is the first time playing on a global stage, out of land with an international event. भाई दिखा दे, सेकंड टेबल भी दिखा दे भाई। What a big prize pool. Fairly fantastically here in third place overall in terms of points. So this team is another team to watch out. Team Falcons, excellent team. I've said it all throughout this tournament. Ultimately, they didn't really even सोचो वे, नहीं मत सोचो, वो तो पता ही है। Watching their gameplay, it transcended having the home crowd advantage, transcended having those cheers available to 85 lakhs कहाँ से जीते, पागल हो गए। moving in against the rest. Yeah, I would say that 85 lakhs ये है, प्लस फर्स्ट आने का और भी प्राइज मनी था क्या $107K के अलावा? Obviously, yeah. कितना? $500,000 ना? $5 लाख और ऐड करो इसमें, और फिर बताओ। नॉट श्योर है, चलो ठीक है। हार जाते नहीं, हारते नहीं। हाँ अब देखो 7-0 होता है नो।
पैसे में कहाँ हैं हम? Yay! $51K। तो हम लोग इसका मतलब 42 लाख करीब जीते ना, 42.5 लाख करीब। Yeah. मेरे को भाई का वो दिखाई नहीं रहा है भाई, क्या चक्कर है? They know they got themselves second place in that game. Like they were stuck in what 12th for the longest time when it comes to overall points. So big step up at the end. Unfortunately, a little bit late, but at least they do take some extra money on top. 51K. मेरा Not ये bad at all for just the kind of बोखला गया from the मैं कोई overall तुम अपने फोन पे देख लो, in मैं the अपने फोन games पे देख themselves. I will say 9th through 12th. It's our teams that kind of got here via those invites. Funny, position 10 just got 6K. क्या? हाँ, position 10 को खाली $6,000 मिले and position 9 $51,000. हाँ तो उससे मतलब नहीं है ना, वो ओवरऑल है ना, उसमें कहीं कहीं इन लोगों ने फर्स्ट किल भी निकाला, एक चिकन डिनर का $10,000 भी है, समझ रहे हो? फर्स्ट ब्लड वाला वो सब बहुत सारे हैं। ऐसे तो 7K वाला नीचे थोड़ी होता है। 2 days back to back with 3 chicken dinners out of our 6 matches. They had a 50% win rate in the last 2 days. Who even does that? Especially, and we talked about it earlier, right? #5 and पैसे. हाँ वही तो भाई #5 है हम गाइस, ये बात जो है बदबू की तरह फैला दो। #5 आए हैं हम क्योंकि पैसे का टूर्नामेंट था ना। $5,000 लगे होंगे ये ट्रॉफी बनवाने में। All right, well, we actually want to take a look at the rewards rankings as well. Obviously, we saw how the points worked out for the teams, but how much नहीं मैंने देख लिया। where they ranked in terms of money. We obviously know Vampire Esports going to be first. Alpha #5 कर रहे हैं हम सब #5 बोलेंगे। हाँ और क्या, सही तो है। They should be pretty high, as you can see here, 5th overall. हाँ देखो #5 according to money. Yay! कहाँ दिख रहा है भाई? स्ट्रीम पे आया ना। Almost 3 lakh rupees to per 7 Cs player. Per 7 Cs player। चलो कोई से मैं अभी बताता हूँ तुमको। They're sat amongst giants here when you look at the names that they're sat with. I think this is going to be a really big learning experience for them, and we'll see what 5-man team थी ना? I mean, most teams that are playing for the नहीं तो फिर तो करीब 5 लाख रुपए जाएंगे, नहीं 4 लाख रुपए जाएंगे। as a whole, but yeah, S2G, I think I would love 3 लाख नहीं 4 लाख। How much of the money from S2G is from keep on getting those eliminations in Paradise as well? I think like maybe half of it is from Ori alone. अगर कंसिडर ये करा जाए कि पहले टैक्स कटेगा, फिर और का पैसा कटेगा, फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से 4 लाख पहुंचेगा शायद करीब। A good amount of experience to take back, more importantly, for the future events. I guess for me, R8 is probably the one main. लोन से अच्छा ये। I think I have a lot of reverence for these players, considering what we've seen from them in the past. If you think कुछ about नहीं। Global Esports Tour that you and I covered, क्या मिस किया मैंने? this is a strong team, and I don't think they quite got the opportunity to shine here on these figures. I think we wanted to see more from Prestige. #4 था बस चिकन मिस हो गया। अरे कोई ना यार। I think R8 knows just one event didn't quite work out for them, but there's still a lot of potential this team can achieve. So it's just a question of time. Well, gentlemen, we did have a lot of money to give away in this event, and if you guys remember back to अच्छा अभी इन लोगों को वो भी तो मिलेगा शायद। अगर फर्स्ट चिकन डिनर को $5 लाख मिल रहा है तो इनके पोजीशन वाले को भी तो कुछ मिलेगा। वो तो ओवरऑल पोजीशन को मिलेगा, पैसों वाले को नहीं। ओवरऑल पोजीशन अपनी कितनी है? हेलो The reason why I voted for them इनकी nobody uses the feature in game, so it's like they अच्छा get outside the game. अल्फा 7 That has my vote. किसी को कैरी करके ला रहे हैं क्या? कैरी हुआ है क्या वो? हाँ। ये ठीक है। ये तो बेइज्जती हो गई ऑन स्ट्रीम। सबने सेम शूज पहने हैं। Oh, they won 4,000 for this. I would imagine you actually would have put Blink out in the open to potentially get shot. Actually, that's a good idea. I should have done that. Oh well. I'll play some tonight. $20K है #9 को। ओह अच्छा, तो अभी मतलब $20K भी ऐड होगा ना 51K में। $71K हो गया टोटल। पैसा तो है। I mean, the heart was really well done. There was a. To be honest, we were skeptical. We were concerned here. अरे क्या है ये वाला ये वाला क्या है? Hearts as well at the bottom. 3 hearts in 1. That's great. Lovely. हालात तो बहुत खराब है। Glasses as well. Look at them, stylish.
do you mean the glass? They've been wearing those the whole time. Not when they're playing. They cute. Cute है. The little color. The little color. Golu golu. All right. So they get $6,000, but I think. मेरी मम्मी इस वाले हेयर कट को साधना कट बोलती थी. साधना कोई एक्ट्रेस थी शायद. कट बोलते हैं यहाँ पर. हाँ. क्या बोलते हैं? कटोरी कट. हाँ कटोरी. कटोरी कटोरा तो. ये देखो टॉप वाले बाल, टॉप के बाल देखो. रेड या पिंक जो भी है वो. Proper commitment, I think, to the whole thing. See, they had hearts as well, right? So they had the dance and the hearts. I think that's what won us all. But Stalwart Esports, they're going to take home some extra money for themselves. हमारे सेवेंसीज वाले क्या करते हुए आएंगे? माँ कसम कुछ होना चाहिए भाई. बिल्कुल एट में ना आए. बिल्कुल मूड खराब हो जाएगा. क्यों दिख रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वही वाला किया है. $10,000 just to figure out a way of how you Best want to walk out on team stage. presentation इनको मिला है. अच्छा. And you think you can get $10,000 for a chicken dinner? That's like a 25-minute game. They go in like 20 seconds. Let's be real. If all the talent crew from English Talent came out and we all had John Allen. स्काउट के फैन फेवरेट 10K अलग ही हैं. इसका नहीं पता मुझे. The real question is, who's the real John Allen? Who is the real John Allen? You'll do the voice like, I think that one. Find out next tournament. All right, so that is obviously who won. Congrats to SD for taking home an extra page towards their tally. But we still had more awards than that, right? We had like the Eagle Eye, we had a lot of individual awards. Why don't we take a look at who's won? अच्छा ईगल अब आ रहा है सारा उसका टाइटल विनर जो है. But it's actually great to see. The thing is, this is all about making money, and it's going to be our fan favorite player, Scout. It was really funny when I was looking at socials because he didn't even comment yet, and the comment of his fans got more likes than most of the other players. So. छी सुना तुमने? No Scout out there with the fans. कह रहे उसने फनी चीज ये थी कि उसने कमेंट भी नहीं किया था और उसके फैंस के कमेंट्स के लाइक बाकियों के से ज्यादा थे. The thing is, right, we've been told, and I don't remember if it applies to this one, that the teams actually get the money. रुतिकार मेरे घर के बाहर खड़ी हो जाना. सारे वो चोर और भाग जाएंगे रात में. अभी वो कर रही थी ना. एक वर्ड भी Cario would actually want an extra 10K for their team. Not bad, not bad. All right, so Scout clutches things out day one in that show match in duos, and he clutches out the fan. चलो 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 मैं जा रहा. मामा भाई बाय. Okay, bye bye. Bye bye. MVP. अब तो और कुछ MVP वगैरह देखते हैं हम. Before here, when it came to like Eagle Eye and things just like that, let's actually take a look at what our winners were. We know who our duo winners were, as we did see before with Stalwart Esports. Eagle Eye 397 मीटर. हेक्टर का कितना था? You know what's interesting? We didn't see these stats throughout the because normally we've been showing them, I guess. Like in terms, especially the Eagle Eye, we were watching it throughout the main. Most headshots, mythic, longest elimination spree, very far here. Raise S2G. Most special eliminations 12. Over to Revo, to be honest, like they threw at the start of the day 130, like so many nades. Like eventually you're gonna hit them. Right? So I'm not surprised we've seen an Alpha 7 player get it. But I think there was most headshots. Also impressive. I reckon they're probably above 200 nades thrown by the end of today. Because we saw 396 था. 396. एक ज़्यादा मीटर हो गया. Close to. एक मीटर ज़्यादा हो गया भाई इसका. We'll check it. We'll check it. Okay, Max, you know what time बहुत होता है यार ये. MVP. It is, but wow. Before seeing it, prediction. Okay. I don't know if MVP. I'm going to go with Revo. I'm going to go with Stoned. Good pick. I mean, it's going to be pick. It's Alpha 7 or it's Vampire. a Vampires player. So Yeah. Okay. Let's see. Revo's a good shout. Revo. No, Revo's a good shout. Yeah. I don't know, because he was the MVP at the start of the day, if I'm not mistaken. Yeah, we did. Yeah. Yeah, a bit stupid. It feels weird to see an MVP though with an average survival time of like 16 minutes. Yeah. Did you hear that? No, what is it? Stoned was actually 7. Ooh, oh really? That's actually 10 crore का tournament था I guess totally. शायद मेरे को पता नहीं. Second place was actually Schweppes from Vampire.
Oh yeah, Fierce lag raha Yeah, he halfway was through up the there. day. Yes, Okay, I've not been quite my observant self here today, Jason. It's I'm fine. sorry. It's been 2 weeks yaar, we've kuch been bhi here, mat not karo. as long as Mujhe obviously nahi ESL lagta. with over 6 weeks, but it's still great to see. And gentlemen, I mean, I think everyone should be extremely happy about this. I actually love the fact that we're able to give out so much money to these teams, help them A7 laser बेचारे पूरा focus in what's tournament coming up down the line in करने the के end of बाद the year, last because you year. have PMGC right around इन the लोगों corner. का A the lot of regions only have PMPL as sponsor well. for this It's gonna get tournament very was scary for Xperia. some teams. What's up? Yeah, we have PMPL in Xperia के अलावा और कोई स्पॉन्सर नहीं था क्या इस टूर्नामेंट में? It never ends. भाई Xperia ने क्या पैसा लुटाया है? मतलब obviously सारा पैसा Xperia ने तो नहीं दिया होगा. Obviously, we'll talk more about that when we do have it happen in a few days. But a big shout out here to MasterCard and to Saudi Investment Bank, because again, this would not be possible. This has been an extremely long event. Takes a lot of अच्छा MasterCard भी था. Saudi Investment Bank also. But it's been an extremely intense event. I think is one of the best things to say here. Not only for the players, not only for talent, but definitely for the production crew as well. We've had, what was it? 6 weeks of competition, 5 different games, $15 million in money awarded. We gotta check out how. Spotify, I don't know. We gotta check out a quick recap. Gamers 88 भी था. अच्छा. Gamers 8 अच्छा. वाह ये क्या जर्सी है? पेरिस सेंट जर्मेन ना वो स्पॉन्सर है शायद. हाँ. हाँ. वाओ. Gamers 8. Let's go. The best part about that is the fact that you can just copy paste that winning moment for Vampire Esports because they're able to win. Saves the editors a lot of time, which I'm sure they're extremely happy about. But gentlemen, I mean, we've been here for 2 weeks. We've had some really new up-and-coming teams. Everybody enjoying the tournament and the money. Meanwhile, India पकड़ के बैठा हुआ है कि बैन हो गया. खतरनाक मैटर है.